live on YouTube also. Those who cannot join through the Zoom, they can also watch our program live on YouTube. Okay, so you can share this with your colleagues and friends and you know relatives also. If they have some issue regarding login with the Zoom, yeah. Now let us start the program. Yeah, let us start the program. Uh, Let us start the program. Our most respected Shri O.P. Singh sir, who is the Director, Technical and Field Services, ONGC, is joining from Delhi. Uh, so good morning once again, everybody. I'm Jagesh Somkuar. I am General Manager Production in ONGC Mumbai, and also Chairman of All India ASC Employees Welfare Association, Mumbai branch. So, on behalf of, am I audible to everybody? Okay, thank you. Okay, yeah, fine. So, on behalf of Western Offshore Unit, ONGC Mumbai, and All India ASC Employees Welfare Association, and National ASC Hub, um, NSIC Ministry of MSME, Government of India, I welcome you to this very useful and very interacting, very informative, very enlightening, very illuminating program. And the today's topic is entrepreneurship and vendor development schemes. Okay, so we have invited our respected uh, Shri Om Prakash Singh, Director T&FS ONGC, and also with him Shri Kripa Shankar Pandey sir, he is ED Asset Manager, MH Asset Mumbai. Shri AP Tripathi sir, he ED Chief ONGC New Delhi, and Shri Sunil Singh Sahab, he is our GGM-HRO, Head of Regional Office Mumbai. With with them, we have also invited eminent guest speakers from NSIC Ministry of MSME, and Mr. A.R. Gokhe Saab is Director, MSME Development Institute Mumbai. Shri P. Ravi Kumar is Chief General Manager, Zonal General Manager West, NSIC. Shri Sunil Zode, he is member of High Powered Committee, NSSH, SST Hub, Delhi, and Shri R.Y. Kadam, AGM, Canara Bank, BKC. So we have organized this program to encourage and to make awareness about the various ONGC procurement schemes and policies, particularly for micro, small and medium industries. Yesterday I was watching a interview of Secretary MSME. He was saying that India's total 40 to 45% population is within this zone, MSMEs. So they are inherent part of our economy, and they are backbone of our economy. So to promote these industries, we have organized this program. Last year also we organized one program in Mumbai, and it was really very successful program. Over 550 participants, they attended this program throughout India, and it was very interactive and very very useful program for all the MSCs. So once again, uh, from our ONGC side, Mr. GVSS Rao, he's our Group General Manager, He will be joining. He will be delivering presentation on the procurement uh, schemes in ONGC policies, and also GEM.
Shri Ved Prakash ji, he is a General Manager, Material Management, is Offshore Engineering Department of ONGC. Mr. S. Mayappan, he is Chief General Manager, MHSH, Mumbai High Asset, Mumbai. And Mr. V.B. Sharma, he is General Manager, RO, Mumbai. With these distinguished speakers, we have also invited those who are very successful in this entrepreneurship and the business. They are excelled in this field, and they have set an example for others to, yes, you can do that. And we have invited very renowned Captain Amol Shivaji Yadav. He is the founder of India's first ever made in India aircraft, and our Prime Minister आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने उनका स्वागत किया और बहुत उनका फेलिसिटेशन हुआ। और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट इंडिया का पहला बनाने वाले मिस्टर अमोल यादव है। उसके साथ में मिस्टर पिंदर पॉल इज बिजनेसमैन इन न्यूयॉर्क, रेस्टोरेंट बिजनेस है उनका। देन मिस्टर प्रशांत गुडघाटे फ्रॉम टोक्यो जापान, मिस्टर संजय खंडागले बहरीन यूएई, मिस्टर शरद सोनोने दुबई, and Mr. Vishal Dhoke from United Kingdom, London. With them, we have also invited women entrepreneurs who are already in this field. They are very successful. Miss Padmaja Rajguru, Miss Namrata Shirke, Miss Kanchan Bhalekar, and Miss Sukeshna Devre. So, on behalf of our organizing team, I welcome you all this program, very, very interesting program. And without wasting further time, let us start the program. And I request Mr. M. Ganeshanji. He is our regional license officer here, GGM-HR, and who has been always there with Mr. Sunil Singh sir. Under their guidance and their cooperation, we are organizing such programs for the benefit of our society. तो सुनील सिंह साहब का और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट है, जो गेस्ट स्पीकर्स है, उन सब का हम यहाँ स्वागत करते हैं। और मैं नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर एम गणेशन, GMHR, to present his welcome address, please. Mr. Ganeshan, yeah, go ahead, please. Unmute yourself, then go ahead. Yeah. Good morning. Thank you, Mr. Jagesh Sonkwarji. Today is yet another auspicious day that our All India SCST Employees Welfare Association is organizing a unique program which is known as Entrepreneurship and Vendor Development Meet for the benefit of the new entrepreneurs, new people. And in fact, this is the second of its kind. Last year we had this program in our office auditorium. Association is taking up so many socio-cultural, economic, welfare-related issues for the benefit of society, students, and all the downtrodden people. And their services during this Corona period in distribution of household articles and all, it is praiseworthy. And in this direction, they are undertaking today's program. For this, ONGC, particularly Mumbai, is extending helping hand to them for their all reasonable activities. And on this occasion, I cordially welcome our chief guest, our beloved and respected OP Singh Saab, Director T&FS, Pandey Saab, ED Asset Manager, MHSH, Tripathi Saab, ED Chief from Delhi, Sunil Singh Saab, GGM-HRO, Mumbai, and my colleague Mr. V.B. Sharma, of course. Then there are certain guest speakers from MSME, NSSH, Canara Bank, and the SCST Hub. There are guest speakers within ONGC also, Mr. GVSS Rao, Mr. Prakash, and Mr. Mayappan. Apart from that, the association has invited some successful entrepreneurs and women entrepreneurs. This is a very good program. I think already there are more than 145 participants are there. People are yet to join, they may join. And I hope this program will yield its results.
And with this, I welcome one and all for the auspicious program. Thank you, one and all. Thank you very much, sir. Ganeshan Saab. Yeah, we are really grateful to our director T&FS Shri OP Singh sir कि he has kindly consented for this program and उन्होंने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे असेट मैनेजर पांडे सर ही इज ऑलवेज विथ अस। जब भी हम उनको बुलाते हैं, जब वो इनवाइट करते हैं तो हमेशा वो हमारा इंकरेजमेंट बढ़ाने के लिए रहते हैं। तो अभी जैसे गणेशन साहब ने कहा है कि वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑल द डिग्निटरीज, ऑल द स्पीकर्स, ऑल द गेस्ट, दोज हु हैव जॉइन दिस प्रोग्राम टू एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स, दोज हु आर रियली बडिंग और जिनको कुछ जिंदगी में कुछ इस फील्ड में कुछ करना है, वो इच्छा रखते हैं और उनका पैशन है। तो उन सभी को हम जितने भी हमारे डिग्निटरीज है उन सबका पुनः एक बार ये स्वागत करते हैं। और स्पेशल थैंक्स टू आवर डायरेक्टर, बिलो डायरेक्टर श्री ओपी सिंह सर। Okay, now it's time. Now it's time to invite our GGM-HRO, head of regional office Mumbai, Shri Sunil Singh sir. Sunil Singh sir to deliver his introductory address, please. Sunil Singh sir, just a minute. Sir, unmute कीजिए, please. Yes sir. Yeah. Thank you. Yes sir. Good morning, respected Director T&FS, Shri OP Singh ji, and all dear colleagues and distinguished participants. All India SC/ST Employee Welfare Association, ONGC Mumbai, is taking many good initiatives and conducting useful programs. Today's program is also one of the initiatives. As you all know, the Indian MSME sector is the backbone of the national economic structure and is providing its resilience to ward off global economic shocks and adversities. With around 63.4 million units throughout the geographical expanse of the country, MSME's contribution around 6.11% of the manufacturing GDP and 24.63% of the GDP from service activities, as well as 33.4% of India's manufacturing output. They have been able to provide employment to around 120 million persons and contribute around 45% of the overall exports from India. The sector has consistently maintained a growth rate of over 10%. About 20% of MSMEs are based out of rural areas, which indicates the deployment of significant rural workforce in the MSME sector, and is an exhibit of the importance of these enterprises in promoting sustainable and inclusive development, as well as generating large-scale employment, especially in the rural areas. It's a privilege for ONGC to interact with MSMEs, which are of great economic importance. I believe such initiatives of ONGC shall help in nurturing the networking for better business collaborations. ONGC has always been at the forefront to support MSMEs under the guidance of Ministry of PNNG and able leadership of Indian government. In the recent times of COVID-19, MSMEs did well to sustain, and their innovative ideas ensured Indian economy to come back to pre-COVID times. Without taking much time, I am eager to learn from the industry dynamic leadership and MSME stalwarts. Thank you. Jai Hind. Thank you very much sir. ये थे मिस्टर सुनील सिंह साहब, जो हमारे ग्रुप जनरल मैनेजर है और HRO है, हेड ऑफ रीजनल ऑफिस मुंबई। और उनके मार्गदर्शन में ही ये हम लोग सारे जितने प्रोग्राम्स है उनका पूरा उसमें साथ रहता है, सहयोग रहता है, मार्गदर्शन रहता है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग ये सारे प्रोग्राम करते हैं। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस इंट्रोडक्टरी एड्रेस। एंड इसके बाद हम त्रिपाठी सर जो है हमारे चीफ MM है AP त्रिपाठी सर, उनको मैं ये निवेदन करता हूँ। एक मिनट सर। Yes. Sir, please unmute yourself. Please unmute yourself, sir. Yeah, good morning, sir. Good morning. Good morning. Now, yeah. Now I am audible. Some echo is there, sir. I think echo आ रहा है। मोबाइल शायद ऑन होगा आपका, उसको बंद कर दीजिएगा।
अभी अभी को आ रहा है सर, थोड़ा उसको उस साइड से देखना पड़ेगा। ओके, अभी ठीक है? अभी ठीक है सर। यस सर, ओ यस सर, ओ यस सर। अभी ठीक आन तो है ये। या वेलकम सर, वेलकम दिस टू दिस प्रोग्राम। स्पीकर वो बंद कर दीजिए, अपना स्पीकर ऑन कर दीजिए। कहाँ से? हेलो। हाँ, you're audible sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Yeah. So, good morning to today's chief guest, Director T&FS, all our respected vendors and business partners, our SC/ST entrepreneurs, our member of All India SC/ST Employee Association, all my colleagues, ONGC colleagues. Good morning to all. First of all, I thank this SC/ST Association to bring out this today's meeting, vendor meeting for SC/ST entrepreneurs. This is a great thing they have done. I am really thankful to them. Sir, as far as ONGC is concerned, we all know it that ONGC's annual procurement is around 30,000 crore. And in addition, All India also procure about 5,000 crore per year. So total in office stream only, there is a business of about around 35,000 crore, including supply of material, services and works. But out of these, last year we could, with all efforts, we could procure only 2,300 crore from the MSMEs. Though whatever we all know it that there are various high technological items or high cost capital intensive items like hiring of these MSBs, OSBs, platform installation, as well as the this drilling services, hiring of offshore drilling rigs, etc. But still, there are great opportunity, and we feel that MSME sector can contribute to ONGC more than this 2,300 crore. So the second thing which I brought to you that even in these MSMEs, this our SC/ST entrepreneurs contribution was only 1%. Whereas our government directive itself is that we must make all efforts to do it at least 4%, and we should try to increase as much as possible. So what I want to bring it that there are a huge gap, and we need it our SC/ST entrepreneur to develop them, to bring them so that they can contribute to ONGC and upstream industry in India more and more. Sir, in this regard, I bring out that ONGC has already brought out all 5-year requirement on the ONGC website, which is in the public domain. And you can see anytime whatever the item ONGC need. And out of those, what are the item which you can provide to ONGC? At least those items which are not very capital intensive are very high tech. Those items at least you can work out, and we can try to supply to ONGC. In this regard, we also bring out that government is also giving a various opportunity to develop the Indian resources and support Atmanirbhar Bharat. We have also incorporated all those guidelines in our procedure, and now we are only doing the NCV tender for value less than 200 crore. So there, after examining of last 5-year tenders, we found it that there are at least 350 items and services for which there is no Indian vendor, and there is a need to develop these resources in India. Okay, this may take some time, but once we will start doing it, we will be able to meet out and subsequently this support Atmanirbhar Bharat. In order to support our Indian vendor,
we have now modified our development order procedure. Earlier, the development order procedure that you have to apply against the tender, and then you have to meet all conditions except experience, and then only you will consider for this development order. Now the ONGC has modified this development order procedure. Now you can anytime approach to the ONGC for any item, whatever you want to develop and you want to supply. ONGC will place the development order on you, and there will be no EMD requirement, there will be no security deposit requirement, there will be no LD. And even suppose due to the development process you fail, you are not able to deliver, there will be no penalty to you for that. So all these things are brought out to support you so that you can develop the items whatever you feel that you can do that and supply to ONGC. This this we have also called the UI on our website, which is due up to probably up to 30th or something, 30th of December. And we have called UI for the development of the items from any vendor. You can go through, even in those lists, the item may not be in your area. You, whatever the item in ONGC is is using, and if you are able to supply that, you can approach to our index division, and index division will consider and place the development order you. After placement of executing development order, there will be no experience requirement. You will be concerned, whatever be the experience requirement, you will be considered meeting that experience requirement. So that is an opportunity to you to develop the item and to provide the ONGC. ONGC is also following this, procuring the items through GEM and making all efforts, so which is in the very transparent manner to procure through GEM. So if you are already supplying some item to GEM, to ONGC, I request that kindly board yourself on the GEM, because henceforth ONGC will procure as much as possible the item through GEM only. So I request all of you to board on GEM immediately for the item which you are already supplying to ONGC or can supply to ONGC. I say that our Prime Minister always say we should be job giver, not job seeker. So this our All India Association, SC/ST Association has brought out this with this understanding only. They have brought out that this vendor meeting, and they want that more and more SC/ST entrepreneurs should be developed, and they should give the more and more job to the people. And with this idea, I think I shall thank very much. Thank you to this our SC/ST Employee Association, and I shall thank them to give me the opportunity to share my views with you. And I shall say thank for the success of this vendor meet. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thanks a lot for your very, very informative, very enlightening speech on the role of MSEs and what ONGC is doing for MSEs. तो और ये बहुत सही बात आपने कही कि yes, now we should focus ourselves on job givers, not job seekers. और this is our intention only कि अभी इस फील्ड में हमको लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और मैक्सिमम जो है डेवलपमेंट है हमारे कंट्री का इसके थ्रू हो और लोगों को इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। और ओएनजीसी में क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से हमको जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताया। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस प्रोग्राम सर। त्रिपाठी सर, थैंक यू सर। Thank you. या थैंक यू सर। ओके, now it's time to invite another distinguished guest. It's not guest नहीं बोलेंगे, वो तो हमारे हैं श्री के एस पांडे सर, श्री कृपा शंकर पांडे सर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और असेट मैनेजर है मुंबई हाई एसेट के। पांडे सर को मैं यहाँ मैं इनवाइट करता हूँ उनका जो आज का जो संबोधन के लिए। एक मिनट सर, मैं लेट मी सी।
सर आपका वीडियो ऑन कीजिए ना सर प्लीज, पांडे सर, एक मिनट। लेट मी, या इट्स ओके, ओके सर, अनम्यूट कीजिए सर, या ओके, या Yes, या Jagesh, very good morning. गुड मॉर्निंग सर। Once again, to very good morning to all of our colleagues, those who are on this, I can say, on the virtual meeting. And it is happening only because of the COVID situation, we all know. First, in the very high tone, very good morning to all of you. Our ONGCM, our senior colleagues, our all business partners on this platform. This message I want to convey, and big thanks to the coordinator for arranging such grand meet in this COVID situation. So big thumbs up to Mr. Jagesh Somkunwar, Chairman, All India SCST Employee Welfare Association, Mr. Ganesan, he is GGM-HRO and RLO for SCST ONGC Mumbai, and Mahendra Malviya, who is in charge of the NSSHO Mumbai. And theme of this event is global entrepreneurship and vendor development for SC/ST entrepreneurs. So, ladies and gentlemen, I think joining this meet by listening, we can learn something, and it is vice versa. If you listen us, then you will start thinking. So this vendor meet is really being held to expand the vendor base and spread the information on greater business opportunity, especially in ONGC, in ENP sector. And real objective of this meet is to encourage, to sensitize, and enable our SC/ST owned entrepreneurs to come forward and achieve their share. Once again, collection, collation, and dissemination of information about SC/ST enterprises and entrepreneurs, and also to facilitate you. So with this meet, exchanging of the ideas, you most people will be benefited. With this theme, I think this is very good time, and in very advance, I want to say good wishes and Happy New Year 2021. I am taking this opportunity to convey the big message. Let us hope, we pray to Almighty God also for our betterments, and we must overcome the situation of COVID-19. As already we all know, with the various sources, many steps had been taken by government for enhancement, for doing the business in easy way. And already our respected Chief MM Tripathi Sahab narrated, ONGC already initiated some measures to encourage our vendors to come and register themselves for supply of resources. Many entrepreneurs are also invited to come forward, speak, share your experiences on such occasion, to give their views, suggestion, so that we can enable the ST owned units
for participation in public procurement process. So this is my earnest request to all of you. Please come forward. Let us interact with each other to give some good insight about the various products and vendor approval process, and will help you. As a part of this event, I want to convey my message to the participants and all delegates through this video conferencing. And I want to exhort this industry fraternity to be a partner, become a partner in progress of ENP business, and strengthen the supply chain. Without support, ONGC as a PSU also cannot perform. Success of ONGC will go on hand in hand with success of the industry. So ONGC is always looking forward to streamline the complete cycle of the purchase, from vendor registration to e-procurement to product inspection to the payment. But here one thing I will also caution: we need quality product. Meaning, if any supplier is supplying the suppose poor quality, that will lead to the deregistration. So after deregistration, re-registration will be very difficult. So think for the quality work, quality product, and come forward. ONGC doors are open to each and one and all, and become our business partner. And it is only possible when we support each other. Without joining the hands together, we cannot progress. And by joining the hands together, then we can go a long way towards Make in India program of the government. Government effort must be appreciated. And our all SC/ST entrepreneurs should take the full advantage for mutual benefit of both. Once you will be associated with any company like ONGC and others, then you will realize one day your dream will come true. And again, not only I am boasting, ONGC had already set up a very efficient and effective monitoring system for addressing and solving the grievances and complaints from the vendors. And I am giving the words. I am promising to all participants from this forum, if you are fair, we shall be fair together, and then we can succeed. This is really very golden opportunity to understand, and please participate in ONGC's procurement process. First by involving in vendor registration, then further go for bidding, be a part of the tendering process, and this is the big opportunity for especially MSME and SC/ST entrepreneurs, especially in ONGC. You all are always most welcome. Please look forward and start doing business with us. Once again, I am reiterating. As we all know, Government of India has extended many facilities, especially to the micro and small enterprises, like purchase preference in the government procurement. And this purchase preference is applicable both for the material as well as services. And you might be knowing, just after 31st March 2001, even registration authority authorized to issue MSc certificate will be Udyan Registration Authority.
Again, for doing the business in very easy way, such authority has been set up. You should not go, you should not waste your time. Further, Government of India has introduced trade receivable discounting system through which MSC vendors can get immediate access to the liquid fund based on credit rating of buyers like ONGC by discounting their trade receivables through an auction mechanism where multiple financiers can participate and bid. Please, you may take note that all MSC bidders participating in a tender as a trader or a dealer of the manufacturer cannot avail MSC benefits. So Government of India has also introduced a portal called Government e-Marketplace. Generally, we say GEM. The MSC vendors are requested, please take advantage of the above portal, where you can upload the product and services, which will be useful for all buyers, including ONGC, for making our own purchases. In the GEM portal, there are provisions for purchase preference to MSC vendors. So MSC vendors are eligible for tender, fee exemption, EMD exemption. As already Tripathi Sahab narrated and he informed the House, such facilities, no security deposit, no LD, no PV. I don't think in the world there is such facility when matter comes for the contract. So please take this advantage. And this will be initially, you can come forward, you can join. Once you will join, then you will realize there will be hitch, there will be some constraint. But we are here to support you. We are here to resolve the issues, whatever you have. So don't hitch. Startup is the only problem, because people think more problem, but first you initiate it. And in spite of difficulties, one day when we will succeed, then it will be a new ways for you. And here preferences for MSC is available up to maximum of 15% of the L1 price of non-MSC units. So here again, just you think the provision is for ICB, whether domestic tender, everywhere for the MSC, 15% maximum it reserved for you. Government has mandated ONGC should meet 25% of its purchase spent from MSC vendors. And already Tripathi Sahab told out of 30,000 crore, only 2,000 crore is through the MSME. So still there is a scope. 25% of the 30,000 crore, just you imagine, more than 7,000 crore. So this great opportunity, please avail it. And you may also note that recently government has revised the classification of the MSC units based on the turnover criteria, etc. And I can say presently there are more than 350 items of material and services that are reserved for the purchase from the MSC vendors only. So eligible MSC bidders shall be awarded 25% of the tendered quality.
And there is a sub-target of 3 and 4% of the purchase preference, which is applicable to the women, SC/ST entrepreneurs also. Hence, again, I earnestly request all who have gathered here to make use of the policies of Government of India to maximum level possible and get benefited. Here again, I will emphasize, and I want to inform the House, ONGC has registered TRED platform for MSE vendors to avail trade receivables discounting services on TREDS platform. And without hesitation, you can learn from our ONGC.com site. There are, if you have any issue related to the procedures, you can go through our ONGC Material Management Manual. It is called ONGC Manual. And all these present policies and manual can be accessed by clicking on this ONGC Manual. And I want to inform again, ONGC already had a next 5-year procurement plan. Not I am talking for the today, even next 5 years. And it is available on the site from 2020 to 2024. So we have the program, future exploration activity, future requirement of the drilling rig and allied services. We have the all these on the site, dispute resolution mechanism in ONGC. We have the various services, offshore engineering services. Suppose there is a big contractor, big business partner, big vendor, you become sub-vendor, and it is possible. If big vendor is not making as a whole infrastructure on its own, they are taking the support of the 1,000 sub-vendors. So try to become the partner with them. So directly, indirectly, you are connected to our company ONGC. And we have the prospective plan. We have the future requirement of work over rates, engineering services, offshore future fleet, whether it is air, marine, and various projects are under tendering. Everything is available on the site. Our ONGC, that is why organizing regular vendor meet, not today, since 2002, to maintain the healthy business relationship with our business partners. That is our motto. And with such forum, by continuous interaction, it enabled us to initiate new area of the mutual interest. Even you have some product and it is not in my list, you come forward and show your product. We are making this. If it is required to us, we'll encourage you and we invite you. ONGC top management always expecting the fruitful takeaway from such meet. And as a ONGC business partner, if you have something in your mind, please convey to us related to the ONGC procurement policies and procedures. It can be, your concern can be deliberated even in your absence, and our ONGC top management and decision opinion would be conveyed immediately, subsequently after deliberation and after the decision. Gentlemen, all these are the opening. As of now, time is tough, but work is going on, life is going on. So keeping such spirit, such theme in your blood, in your stride, we can go ahead. Life can go on. And already Tripathi Sahab told, government has made many policies to promote Make in India initiative. ONGC is already placing development orders to the new vendors. Already Tripathi Sahab told the same thing.
ONGC has initiated many policies for localization and opportunity. In the coming forums, I think our executives will share. There is a PPLC policy, MSME policy, DMEP policy, GM policy, global tenders policy, DMINSP policy, under which even small steel product, domestically manufactured product, we are ready to buy. Again, I want to inform to the House, 80% of the purchase done by ONGC is from the indigenous vendors. We are the leader in localization. And ONGC is the first who implemented a purchase preference policy. So, gentlemen, I'll not take much time, but with such word, I can say, here I am in offshore, but for onshore, localization is very high. And in offshore, still significant quantity is imported. Even I am telling, there is around 500 crore rupee of the mud chemical ONGC is buying every year. 500 crore. So again, just think, if you take the opportunity and become a supplier of the chemical, even becoming the sub-vendors, become a partner, then you will realize the benefit. And our intention is imports should be reduced. If Indian vendors come up in any area, whether chemical or steel, manufacturing, or infrastructure, or services, for your information, again, I think our colleagues will agree, there are more than 125 items for which there is no Indian vendor in ONGC. And we are importing. So my request to the all Indian vendors, SC/ST entrepreneur, to come up in these fields. And this will be the very good step towards Atmanirbhar Bharat. Now I am requesting each one of you, please come forward, join the heads. And there is word, go vocal for local. So keeping such themes in mind, please come forward. You are always most welcome. Thank you. Thanks to all for listening me. And once again, I am congratulating the organizer, and this forum will be beneficial to our entrepreneurs. And if we'll come forward, we'll assist them. And many congratulations and thanks to the coordinator. And I wish great success for such program. Thank you very much. Thank you very much, sir, for this very elaborative speech address on this role of MSMEs and opportunities in ONGC. You talked about various different opportunities in ONGC, in procurement, in services. So your speech was really well taken by, let us hope that well taken by everybody, and they will participate in ONGC's procurement. As sir has rightly said, that ONGC is very open to all the MSMEs who can participate and contribute for the growth of our nation. Thank you very much once again, Pandey sir, for sparing your time and guiding all the participants, us, as far as role of MSMEs and role of ONGC is concerned to promote MSMEs. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Now, thank you, sir. Yeah. Now it's time to
to welcome our today's chief guest, our inaugurator of this meet, Shri Om Prakash Singh sir. He is director T&FS ONGC. He's our below director. He's always available for us, to guide us, to uh, uh, सबका बहुत cooperation मिलता है. When he was in Nava, we met him several times, and he's very positive person as far as I know. और let us hope कि उनके मार्गदर्शन में जो है हमारी जो देश की एक मुख्य जो कंपनी है ONGC, वो और फ्लरिश करे और उसमें और नाम हो और अच्छा हमारा ऑयल प्रोडक्शन और बाकी और भी अच्छी काम हम लोग करें. सो वेलकम सर. नमस्कार सर ओपी सिंह सर. और अभी अभी या अभी मैं सर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो इनॉग्रल एड्रेस जो है सर आज का, यू कैन स्टार्ट. Thank you, Mr. Kumar. Thank you, sir. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Yes. Thank you. So, namaskar. Namaskar. Our esteemed guests of today meet, Shri A.R. Gokhe, Director MSME, DI Mumbai, Shri P. Ravi Kumar, Chief General Manager, Zonal Manager, National Small Industries Corporation Limited, Shri Sunil, Zode, Member High Power Committee, NSSH, Shri R.K. Kadam, Assistant General Manager, Canara Bank, senior officials from ONGC, Shri Pandey, Shri A.P. Tripathi, Shri Ashok Kumar, Shri Sunil Singh, Shri Ganeshan, Shri Jagesh Kumar, who is also chairman of AISCST EWA Mumbai, who is organizing this meet. Participants who is going to share their success stories with us today, Shri Paul from New York, Shri Sanjay from Bahrain, Shri Prashant from Tokyo, Shri Sarath from Dubai, Captain Amol Shivaji Yadav from Mumbai, women entrepreneurs, Miss Padmaja, Miss Namrata, Miss Kanchan, and Miss Sukeshna, our business partners, colleagues, friends, ladies, gentlemen, and my dear ONGCians. A very good morning to all of you. Good morning, sir. At the outset, let me thank all our esteemed guests and participants for being part of today's vendor meet. The key objectives of this vendor meet has already been outlined by previous speaker, Shri Pandey, Shri Tripathi. So our thrust has always been on a win-win partnership for a sustained relationship and mutual trust with our business partners. We are here to listen and understand your point of view and suggestions for maximizing business propositions and value addition in ONGC procurement process. The key focus area for this meet shall be to encourage further participation of SC/ST and women MSC to achieve target of 4% and 3% of MSC procurement as mandated by government guidelines. Friends, ONGC procured goods and services worth around 1100 crore from MSCs till November this year. 4% MSC procurement from SC/ST MSCs works out to be around 44 crores. However, our procurement data till November is not showing this value. It's much less than 44 crore. Similarly, 3% procurement from women MSCs works out to be 33 crores, whereas figures till November are approximately 13 crores only. This shows that there is a need to further encourage SC/ST and women MSCs for participation in ONGC procurement process. This is the precise reason why a meet of this kind becomes
all the more important. I would like to reiterate that ONGC has always been front runner to encourage MSCs and has been vocal for local in line with vision of our Honorable Prime Minister. ONGC is always ready to facilitate and mentor to promote Make in India campaign. ONGC has a very robust vendor managed development program, and I request all participants to make full use of our vendor development program and come forward for developing products and services for ENP sector. Business partners having required manufacturing facilities for developing products but do not have requisite manufacturing supply credentials are encouraged to utilize these opportunities. It has been our endeavor to make our procurement process simple and hassle-free, while following all government directives on public procurement like Public Procurement Policy for MSH, PPLC, DMINSP, DMEP, and other relevant policies. Regarding government e-marketplace, as Mr. Pandey was also mentioning, I request all of you to register your products and services on GEM portal. ONGC has been a pioneer in supporting GEM procurement as they are very transparent, quick, and hassle-free. ONGC has always promoted transparency, fairness, and only fairness in our procurement processes. Our tenders are listed online in public domain. We follow e-procurement route for tenders above 5 lakhs, digital submission of IP and POA, total waiver of EMD, performance security has been reduced from 12.2% to 3% as per recent guidelines of Government of India. Invoices can be tracked online. Payments are through electronic mechanism. Friends, delays in procurement may hamper ONGC work program. As a responsible business partners of ONGC, we expect from you that vendors to submit clean bids, avoid extension in tender opening dates, follow integrity in all aspects, avoid last-minute submission hassles, ensure timely execution of work, show high degree of integrity and transparency during entire procurement cycle, maintain quality parameters, avoid unnecessary disputes. On behalf of ONGC, I assure you of total support from our dedicated team for any clarification, guidance, or support that you may need in this regard. I request all of you to come forward and take this forum as an opportunity to promote localization and Atmanirbhar Bharat initiatives. I also take this opportunity to thank All India SC and ST Employees Welfare Association, ONGC Mumbai, for their noble initiatives and to invite all of you to share your success stories with us. These shall set examples to motivate other budding participants or entrepreneurs as well. I am sure this vendor meet shall meet its objective and encourage all of you to come forward and contribute further towards nation building. In this pandemic time, please keep yourself and your team safe. That should be your top priority. With these words, I thanks again to all of you and organizing team for organizing such a decent and large vendor meet. Thanks to all of you. Jai Hind.
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट। आपने it was really very illuminating speech as far as role of MSMEs is concerned, and you have rightly pointed out sir कि जो 4% का जो टारगेट है हमारा वो फुलफिल नहीं हुआ है. We are really very sorry about it, but yes, we hope in future this MSCs from SCST, they will come forward and take part in our procurement process in ONGC, and they will help us fulfill 4% target. So it was very encouraging speech sir, and on behalf of organizing team, on behalf of everybody from WA Mumbai, our association, and uh, 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 National STST Hub, they are also coordinator in this program. So from everybody, I really thank you very much for sparing your valuable time, because we know you are very busy nowadays. No, there are so many programs and interviews going on in ONGC Mumbai, in Delhi, also in other. Thank you very much, sir, for this very enlightening speech. Yeah. Thank you. Okay. And now, to conclude this inaugural session, I request Mr. VB Sharma ji, who is GM MM. Sharma ji, unmute kijiye. Yeah. Hmm. And to deliver a vote of thanks. Sharma sir. Good afternoon, everybody. Respected Director, T&FS, Incharge MM, Shri OP Singh sir, ED Chief MM, Shri AP Tripathi sir, ED Asset Manager, MH Asset, Shri Pandey sir, GGM-HRO, Shri Sunil Singh sir, Shri AR Gokhe sir, Director, Development Institute, MSME, Shri Ravi Kumar sir, Zonal General Manager, NSSH, other distinguished panelists, and all the panelists of ONGC, senior executives of ONGC, women entrepreneurs, other entrepreneurs joining us across the globe. I thank you all this way, August Forum. I feel privileged to propose vote of thanks on such an excellent occasion where our director in charge MM is inaugurating this meet for vendor development, particularly for SCST entrepreneurs. It's a great occasion. We are thankful to you, sir, for kindly sparing your valuable time. I'm thankful to Shri K.S. Pandey, sir, Shri A.B. Tripathi, sir, Shri Sunil Singh, sir, for sparing their valuable time to join us on this occasion. I sincerely thank all the vendors, all the entrepreneurs, global entrepreneurs who are joining us in the afternoon session. And we can learn a lot from their success stories, and their presence will be quite beneficial to all the entrepreneurs joining us today in this meet. The women entrepreneurs who have made their mark in the industry, I heartily thank you that you could spare your time and you will be joining us in the afternoon. And I also thank all the panelists who are will be delivering their speeches and guiding us throughout the MSME policies and the ONGC procurement policies and procurement policies at other works, other organization, other PSUs. In the last but not the least, sincere thanks are due to the All India SC/ST Welfare Association for organizing this wonderful meet. I wish all the very best for this meet and hope that in future also they will be organizing such meets in more and more grand way. So I wish all the successes to this meet, and thank you. Thank you once again. Thanks to all who are joining us today, all the business partners, all the business associates, and we wish you that we will be in touch for more and more business in coming years. Thank you. Thank you very much, sir. VB Sharma ji. Sharma ji is General Manager MM in RO Mumbai, and he's also with us in such programs. No, like last year also he was with us. No, with the whole RO team under HRO, everybody, our RLO office, Mr. Ganesh, and everybody. So
So viewers, with this, we conclude this inaugural session. And I, on behalf of everybody from association, from ONGC Mumbai, I thank you, our beloved and respected Shri O.P. Singh sir, Director T&FS, ONGC Delhi, and Pandey sir, the Tripathi sir, Sunil Singh sir, for sparing their valuable time and joining this inaugural session. And after that, we'll invite our guest from MSMEs, from NSIC, and National STST Hub to present their views, their presentation on the different role and responsibilities of Ministry of MSME and role of NSIC, etc., etc. So thank you for this first inaugural session. Now we'll start second session with role and responsibilities of Ministry of MSME, and the speaker is Shri A.K. Gokhe Sahab. He is Director MSME Development Institute, Government of India, based in Mumbai. So I invite Mr. Gokhe. Gokhe sir? Yeah, he's there. Yeah. Please unmute yourself, sir. Unmute. Just a minute. Just a minute, sir. Just a minute. Yeah. Okay. On Yes, this sir. webinar on global entrepreneurship and vendor development made for SST entrepreneurs, organized by ONGC and NSIC, National SST Hub. I take this opportunity to thank all the dignitaries of ONGC of taking initiatives for promotion of SST entrepreneurs for participation in their procurement processes. I thank Mr. Sunil Singh ji, Ganeshan ji, Tripathi ji, Pandey ji, and Shri O.P. Singh ji for providing input on the initiatives Gokhe sir, you are not audible. I think there is some issue regarding the connectivity. Gokhe sir, can you hear me? Gokhe sir? Yeah, just please wait for some time. He will be rejoined. I think there is issue from Gokhe sir. We'll have to wait for some time. Let him join again. So साथियों, ये जो आज का जो कार्यक्रम है, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, पांडे सर ने कहा, और बाकी हमारे एचआरओ साहब ने कहा, त्रिपाठी सर ने कहा कि यस, आप लोग जो है यू शुड कम फॉरवर्ड नाउ, इट्स हाई टाइम, और इसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो ओएनजीसी प्रोवाइड करती है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और इसमें जितना भी हो सकता है
उसमें पार्ट जो हमारे जो प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, और जो अभी some I'm seeing that somebody is writing that what are the items and this and that. We'll come to that. There is no issue. We'll have to wait for some time. Our disciplines senior officers, they will be joining shortly, and they will guide all the participants regarding these various services, various products, list of materials, etc., which are required in ONGC. So we'll have to keep patience for that. It will be our honor that more than 200 participants across India and across the globe also they have joined the program, and this is a really very interesting program. Gokhe sir, I think some issue is there, from connectivity issues there. So okay, now let us move to next program, next speaker. Let him join later on, there is no problem. Malviya ji, are you there? He is not there. Yeah, Malviya ji, unmute yourself. Mr. Malviya? Yes, sir. Yes, sir. I am there, sir. Our CGM sir is on the line, sir. He's अच्छा. Yes, sir. Ravi, sir. या वो ठीक है ना, उनको दे दीजिए, उनका Yes, let him complete. Yes, sir. Mr. Ravi Kumar, no? Yes, sir. Okay. So जब तक गोखे सर ज्वाइन करते हैं, so we'll hear from Shri P. Ravi Kumar ji. He is Chief General Manager and Zonal Manager West of NSIC, and he will speak on role of NSIC and National SCST Hub. So I invite Mr. Ravi Kumar ji. Mr. Ravi Kumar, please. Yeah. Ravi Kumar Saab, you unmute yourself first. Ravi Kumar sir, am I audible to you? Just a minute. Yes, yeah. Now you can unmute yourself, then go ahead, sir. Good morning. Unmute yourself, please. Yes. Mr. Ravi Kumar, yeah. Ravi Kumar, sir. Yeah. Go ahead, sir. Can you hear me? Yes, you are all audible to me. Yes. Shall I start? Yeah, go ahead, sir. Yes. Oh, yes, you can start. Yeah, go ahead. Yeah. Respected Shri A.K. Gokhe sir. Respected. yourself, please. Yes. Mr. Ravi Kumar, yeah. Yeah. Go ahead, sir. आपका Respected. एक मिनट रवि just रवि कुमार साहब, just hold on. लगता है आपका मोबाइल भी ऑन है और आपका जो कंप्यूटर भी ऑन है, तो एक दूसरे में से एक को बंद कर दीजिए, इको आ रहा है. ओके जस्ट ये क्या नाम है, गोखे साहब है ज्वाइन, आई थिंक नो मालविया जी, अनम्यूट योरसेल्फ. मालविया जी. यस सर. ये साहब के साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत इको आ रहा है रवि कुमार साहब के साइड. सर एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए सर. ठीक है. एक मिनट. एक मिनट. रवि कुमार सर, अनम्यूट कीजिए सर. रवि कुमार सर अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट योरसेल्फ, देन स्टार्ट. Can I speak now? Can I start?
Is it clear now? Oh yes, yes, sir, yeah, yes, go sir. ahead, go ahead. Oh yes, it, Okay. Respected Shri A.K. Gokhe Sahab, Director MSME, and Shri Sunil Zode Sahab, Member of High Court, Monitoring unmute Committee. कीजिए sir, Ravi Kumar sir, unmute कीजिए. I have unmuted it. Hello? Can I speak now? Can I start? Is it clear now? Oh yes, yes, sir, yeah, yes, go sir. ahead, go ahead. Oh yes, it, Okay. Shri, respected Shri A.K. Gokhe Sahab, Director MSME, कुछ इको आ रहा है, वापस आ रहा है कुछ, समथिंग इज आपके साइड से कुछ है. unmute कीजिए sir, Ravi Kumar sir, unmute कीजिए. I have unmuted it. गोखे सर, some अपने रवि कुमार सर, there is some problem for your end, I think. Okay. Shri, respected Shri आप A.K. Gokhe Sahab, Director MSME, आपको YouTube में भी है क्या? You are also on YouTube? हाँ? YouTube वाला वॉल्यूम बंद कर दीजिए. If you are on YouTube. रवि कुमार जी, अपने रवि कुमार सर, there is some problem for your end, I think. आप आपको YouTube में भी है क्या? नहीं सर. YouTube? No. दो मशीन वहाँ चालू है, कुछ तो उसका इसलिए डिस्टरबेंस आ रहा है. Some issue is there, I think. क्या है पता नहीं. आवाज दो मशीन वहाँ चालू है, कुछ तो उसका इसलिए डिस्टरबेंस आ रहा है. Some issue is there, I think. Okay. नहीं, some problem is there. अच्छा, ये मालविया जी. Yes, sir. Yes, sir. मालविया साहब को अपने वहाँ बुला लीजिए, नहीं तो आपके वहाँ पर. नहीं सर, सिट्स इन बैंगलोर ऑफिस सर. ही इज इन बैंगलोर सर. अच्छा, बैंगलोर में है. हाँ, यस सर. आपको नहीं, आपका YouTube, किसी का YouTube ऑन है, मेरा तो मैंने बंद कर दिया हूँ आवाज ना. साहब को अपने वहाँ बुला लीजिए, नहीं तो आपके वहाँ पर. नहीं सर, सिट्स इन बैंगलोर ऑफिस सर. ही इज इन बैंगलोर सर. बैंगलोर में है. इको आ रहा है ना. आपको नहीं, आपका YouTube ऑन है, मेरा तो मैंने बंद कर दिया हूँ आवाज. सर रवि कुमार सर, एक काम करिए, यू कैन लॉग आउट देन रीजॉइन. Okay. या प्लीज. आपको अपने वहाँ बुला. मालविया जी, गोखे साहब आ गए क्या? हाँ सर, गोखे साहब इज देयर. ठीक है. व्हाट वी डू सर, रवि सर को एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको. हाँ ठीक है. नहीं, गोखे साहब कहाँ है अभी? गोखे सर इज देयर सर. क्या नाम? गोखे साहब नहीं, उनका नाम नहीं आ रहा. उनका नाम नहीं आ रहा. क्या नाम से ज्वाइन किया उन्होंने? MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सर. अच्छा, MSME. ओके, जस्ट MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सर. ठीक है. गोखे सर, अनम्यूट कीजिए तो. गोखे सर, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. हाँ, ओके. नाउ यू गो अहेड सर. या हाँ, yes, audible sir. Yeah. For the inconvenience because of the network issues, I could not continue my no problem. Speech. No problem. As you know, the Ministry of MSME is implementing various schemes for promotion of MSME sector, and you all are aware that under Public Procurement Policy 2012 and further amendments during the year 2018, provisions are enhanced for procurement by CPSEs. That is from 20 to, it was previously 20%, now it has made to 25%. And provision from women entrepreneurs 3%, from SC/ST entrepreneurs 4% of the total provision.
these figures as has been given on Sambandh portal, the status indicates for the period financial year 1920, that indicates out of total procurement of 1,24,000 crores reported by 136 CPSEs. The share from MSEs is around 38,386 crores, and including SC/ST entrepreneurs, wherein the 1,56,720 MSEs are benefited. Out of this, the participation of 6,312 SC/ST entrepreneurs with the procurement share of 685 crores is indicated, which is minimal, that is just 0.55%, and from women entrepreneurs it is 390.67 crores. From these figures, you all can interpret that there is a quite good scope for the MSMEs, specifically from SC/ST categories, that they can have a major share of this procurement process by participating in CPSE's tender. Many initiatives has been taken by ONGCs, and I hope the special programs, training, inputs are designed for SC/ST entrepreneurs so that they can have a better approach and facilities to participate in the tender process of ONGCs. Circulation of information for the items required, along with the design, drawing, and import substitution items. The opportunities can be given to SC/ST entrepreneurs to have their development of, for the specific requirements, and they can avail the facilities from technology centers for development of these products. Definitely, I am very much sure that the SC/ST entrepreneurs will come forward and they will avail the information provided by ONGC and other public sector undertakings to develop their products to the quality requirement by the CPSEs, utilizing the facilities of technology centers. As you are aware, there are 15 technology centers already have been established, and 18 have been established, and 15 more are being established. Some of these 15 technology centers are started functioning, and under hub and spoke method, another 20 technology centers and 100 extension centers are being planned for establishment throughout the country. And these technology centers will provide the quality support to the technology support, quality support, design development, prototype development to the MSME entrepreneurs in specific. And definitely the MSME entrepreneurs will improve their quality products, quality of the products and services, utilizing the facilities available in these technology centers. And as you are aware, that these technology centers are inviting MSMEs to have a better technology support, quality improvement support to the MSMEs, and
also they are being involved in training of staff, employees for quality improvement of their product. As you all are aware, the Ministry of MSME has launched many schemes. Presently, the this MSME criteria has been changed, and the available MSME who has got the Udyog Aadhaar memorandum has to re-register themselves on Udyam registration portal. Your UAM will be valid till 31st March 2021. By the time the new registration need to be taken by the MSMEs on Udyam registration portal, which is free of cost. And again, we have taken the initiatives to address the grievances faced by the MSMEs related to credit, technology, public procurement policy, and other issues which has been handled by at Mumbai with the state control room, and at Delhi MSME central control room is diverting all the grievances to the state control rooms, and we are trying to attend to the grievances of MSMEs. During these pandemic situations, we have been continuously taking up steps to address the grievances of MSMEs, and at Mumbai office, most of the grievances are being addressed and settled, and feedback is being received from MSMEs and other stakeholders related to these grievances. As you all aware, other initiatives are being taken by the ministry to provide the continuous support to the MSMEs. Definitely, the MSMEs will come up with their issues, grievances, and that we are continuously trying to address the things with the interventions of various stakeholders, financial institutions, at Import Committee, RBI, mostly during these pandemic situations, the credit related issues are being faced by MSMEs, and we are trying to resolve those issues and providing various supports to the MSMEs. As you know, the Ministry of MSMEs is taking various initiatives, but the MSMEs has to come forward and discuss their issues, which needs to be further interventions, and has to be addressed at the proper platform forums, and definitely the support will be provided. There are other schemes, Spurti, Aspire, CLCSS, CGTMSE, and support are being provided through state schemes also, and definitely this will contribute for the overall development of MSMEs in the sector. I hope the MSME will come forward to have a specific intervention, if any, required for attending to their grievances. And I congratulate all the entrepreneurs for participating in this program and taking part in the procurement process of ONGC by registering themselves as a vendor, and
other CPSEs may also be considered for registering with them as a vendor. And I specifically thank Mr. Sunil Zode for making SC/ST entrepreneurs to participate in this program for their benefits and future interventions for promoting themselves through these provisions made by the SC/ST hub. I thank Mr. Ravi Kumar ji and Mahendra Malviya ji for organizing this program, and specifically the moderator Shri Jagesh Sonkuwar ji for giving me this opportunity to address the MSMEs. I hope this program will benefit for the development of MSMEs and have a greater impact on the economic development of this sector. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. Gokhe sir. Gokhe sir is the Director, MSME Development Institute, Mumbai, Ministry of MSME, Government of India. Thank you very much, sir. Gokhe sahab. Last year also we listened from you on the topic that the role and responsibilities of Ministry of MSME. So I hope if there are some queries regarding the role of MSMEs or anything about the procurement through MSME. So all the participants, they are welcome to ask their questions in the chat box. And after this, speeches, we'll open the session for participants, and you can raise your hand. Okay, you can raise your hand, and you will be allowed to ask questions to our dignitaries from MSME and SIC. Yeah, thank you very much, sir. Once again, Gokhe sir. Yeah. Okay, now Mr. P. Ravi Kumar ji. Mr. P. Ravi Kumar is Chief General Manager, CGM, and Zonal Manager West of National Small Industries Corporation Limited. Yeah, go ahead. Ravi Kumar sahab, go ahead. Yes, sir. Namaskar. Namaskar. Now I am clear. Now it's okay. Now it's okay. Respected Shri Om Prakash Singh, Director Technical and Field Services, ONGC New Delhi. Respected Shri Kripa Shankar Pandey, ED Asset Manager at Mumbai ONGC. Shri AP Tripathi ji, ED Chief Metal Manager ONGC. And Shri Gokhe ji, Director MSME DI. Sunil Zode ji, Chairman ICA. And all the dignitaries, those who are participating in this program, and colleagues from MSME, DI, NSIC, and all the stakeholders, very warm good morning and good afternoon to all of you. First of all, I would like to compliment including our NSSHO and ICA, ONGC, and MSME, DI for mobilizing the maximum number of participants. This is the program wherein I can see more than 191 participants are attending this program. Nowadays, attendance for the virtual programs are not very encouraging, but really my compliments to the organizers for making their sincere efforts to mobilize such a good number of participants. From NSSH side, you are all aware that we are operating this national SC/ST hub, which is launched by the Honorable Prime Minister during 2016 October. This hub is providing professional support to the SC/ST entrepreneurs to fulfill the obligations under the central government store purchase program. Basically, the hub initially the objective was only to ensure that this public procurement order of 2012 is implemented, and the more and more number of SC/ST entrepreneurs are being built capacity
to supply to the government of India, departments, ministries, and state government departments and ministries by leveraging Stand Up India and various other schemes of the Ministry of MSME. This hub supports the existing SC/ST entrepreneurs in technology upgradation, capacity building, and thereby enabling them to effectively participate in this government procurement process. Actually, this would involve active participation by CPSE, central ministries, state governments, industry associations like ICA, DICKI, and Buddhist Entrepreneurs Association. There are several associations working for capacity building of SC/ST entrepreneurs by providing hand-holding support, mentoring through the industry experts, and also through the incubators. So NSIC is implementing this prestigious project of National SC/ST Hub for the last more than 5 years. This is 25%, as you are all aware, that mandated for procurement from micro small enterprises, in which already Gokhe Sab has mentioned that 4% is earmarked for SC/ST entrepreneurs. Still, many of the CPSEs have not been able to achieve this 4%. So in spite of efforts by NSSHO, NSIC, and by CPSEs and by ICA like associations, still we have a long way to go to achieve this 4%. But some of the organizations are doing pretty well and they are able to reach this 4%. The other CPSEs have to understand the best practices followed by these CPSEs, which are able to achieve the 4% and try to improve their procurement from the SC/ST entrepreneurs. And we have been organizing a lot of e-procurement training through our NSSHO in Mumbai, NSSHO in Pune. So we have engaged a professional trainer on full-time basis to help these MSMEs to undergo the training and to effectively participate in the tenders floated by the various government departments. So far, NSSHO has facilitated procurement of 823 crores and 17,537 entrepreneurs are assisted in getting this 4% procurement from the various government departments and central public sector enterprises. Now, ONGC has joined with us, and I'm sure definitely they'll be helping a maximum number of MSMEs to procure supply their items to ONGC and several divisions of ONGC. And apart from this public procurement policy, NSSHO is providing various other services to the SC/ST entrepreneurs existing, as well as we are doing a good number of skill training. We have so far trained 21,270 people under the skill training through 50 NIRF rated institutions. So we are actually for SC/ST entrepreneurs to be able to get this government procurement orders under the government procurement. They need to have a proper infrastructure, proper the machinery. So the SLCS, special credit linked capital subsidy, is a boom for MSMEs to upgrade their technology and to ensure that they are able to supply the goods at competitive price and with a good quality. So technology upgradation is very important. To address this technology upgradation issue, the 25% special CLCS is in vogue now. For general category, it is 15% with so many riders. Whereas for SC/ST entrepreneurs, 25% without any riders. Any manufacturer can purchase any machine and avail this 25% special credit-linked capital subsidy besides the state government incentives. Whatever state government incentives are given, they are separate, and this 25 CLCS for technology upgradation is separate. So I would urge upon the participants, those who are not aware of the scheme, please approach our NSSHO. And the awareness about this scheme is very poor. Even bankers are not aware. I request ICA
and of course my NSSHO to organize more and more awareness programs on this special CLCS program. Besides special CS program, we have various other incentives like special marketing assistance scheme and also subsidy, 100% subsidy for NSIC registration, wherein they have to pay only 100 rupees plus GST. So NSIC registration fee is fully taken care by National SC/ST Hub. Even to become a member of our B2B portal msmebot.com, wherein a lot of tender information is also available so that the MSME entrepreneurs can access this tender information on our MSME Mart also by becoming member. Even this fee for becoming membership is also taken care by the National AC under the National SC/ST scheme. So like we are doing various vendor development today, we are doing this special vendor development programs. We have been continuously doing. My colleague Malviya has been doing a lot of SVDPs with CPSEs and various other departments in Maharashtra and other places. So we also providing the reimbursement of bank loan fee and also testing fee and also membership fee for becoming the Export Promotion Council members. And we are also hand-holding and doing the preliminary scrutiny of the application, loan applications and submitting to the banks for the sanction. We have MOUs with several banks. So anybody looking for the loan for their expansion or starting the new unit, even for taking over from the existing facility with a new banker, we are helping through our SC/ST Hub. I request all the participants to avail these schemes and services offered through the National SC/ST Hub. There are so many schemes. Recently, our DC office has come out with an e-book on the several schemes of the Ministry of MSME. It's being circulated through all the associations and stakeholders. I am sure that this program is going to be very useful and will immensely benefit the participants in a big way. And we are there always with you. I can assure very transparent and professional services from my offices in Maharashtra. I thank organizers and also my colleague for giving me this an opportunity to interact with you and to give these remarks from my side. Once again, thank you one and all. Thank you very much. Thank you very much, sir. P. Ravi Kumar, sir. Ravi Kumar, sir, is Chief General Manager, and he is Zonal General Manager West of NSIC. Okay. You rightly pointed out that National SC/ST Hub and Mr. Sunil Zode and Mr. Malviya, they are really doing wonderful job to spread awareness about the schemes and roles of your department, particularly to promote MSMEs. Yeah. So so viewers, the participants, the entrepreneurs, they are requested to take benefit of it. No, there are so many good schemes undertaken by the government. So you should come forward and avail that opportunity, that facility, and promote your entrepreneurship and business also. So once again, thanks a lot, Ravi Kumar Sahab. Thank you. For sparing your valuable time, and let अब इसके बाद में हम लोग मिलेंगे. हमारे पार्टिसिपेंट्स है ना, दे आर सेइंग इन द राइटिंग इन द चैट बॉक्स, सर पूरा अंग्रेजी में मत थोड़ा करिए, हमको थोड़ा, क्योंकि देयर आर सम पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. Malviya will again deliberate in Hindi. तो थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा मिक्स अप, मतलब हिंदी इंग्लिश अगर रहेगा तो दैट वुड बी बेटर, आई थिंक. नो, Sure. Thank you. अच्छा, all participants kindly note, after this second session you will be allowed to ask questions to our all the faculties from the Ministry of MSME. Mr. Gokhe Sahab is director, he will be there. Mr. Ravi Kumar will be there. ओके. और गोखे, और उसके बाद में झोड़े साहब जो है, जो मेंबर है हाई पावर कमेटी के, मॉनिटरिंग कमेटी के, नेशनल SC/ST हब के, तो ये इन सबको, देन महेंद्र मालविया इज आल्सो देयर. So you can raise your queries, you can ask
anything you want. Would you like to know anything about the MSME? क्या schemes है, कैसे उसमें करना है ना? वो सारी बातें आपको पता है. See, our purpose is to guide the participants. This is not we are doing for the sake of doing something. Okay, and this is not a publicity stunt also. Let me very clear on this. We are very serious about our mission, our goal, that yes, in ONGC there are several opportunities which MSMEs, they must take benefit of it, and they can also participate in national growth. Our government of India, government of Maharashtra, different state government also, they are promoting MSMEs. So this program is very useful for all the participants. So my sincere request would be to be sincere, be focused on today's program. You should be attentive. Particularly, you should be attentive towards the speeches, the deliberations, the discussions in this program. Thank you very much. Now I request Mr. Sunil Zode sahab. Zode sahab, are you there? एक minute. Yes, he is always there. Unmute kara. Kela sir, unmute kela. Okay, so I'm really privileged to introduce Mr. Sunil Zode. He is the member of High Power Monitoring Committee of National SGST Hub. And Zode Sahab will be talking about initiatives of Government of India and public procurement policy. He was always with us. He is always with us, and he will be with us always. In last year's program, which we conducted in Bandra office, our auditorium, it was jam-packed, full house. Total more than capacity is 450, but more than 500 people, 550 people around, they attended that program. It was a great success. And after that program, we got so many queries regarding, procurement policy of ONGC, and we guided them. We provided them contact numbers of our discipline senior officers, Mr. GVSS Rao. He is always there, very supportive, very cooperative. Mr. Mayappan is there. He is also very helping. So there are a lot of avenues open for you guys. So come forward. Yeah. So Zode Sahab, go ahead, please. Yeah. Thank you, Somkyurji. Am I audible? Oh yes, you are audible. Yeah. Dear friends, good afternoon to each one of you, and I welcome all of you in today's program. I bow my head and pay my respect to Father of Indian Constitution, emancipator of all underprivileged in India, and motivating force to emancipation movements for depressed classes in entire world, Dr. Babasaheb Ambedkar. I personally congratulate Shri Somkuvarji and his colleagues to organize this webinar. I thank the management of ONGC, Shri Om Prakash Singh ji, Ganeshan ji, Shri Sunil Singh ji, Shri A.P. Tripathi ji, Shri K.S. Pandey ji, Shri V.B. Sharma ji for their valuable inputs. Friends, the significance of this program is that ONGC have invited overseas industry members, Mr. Pinder Paul, Mr. Prashant Godghate, Mr. Sanjay Khandagle, Mr. Sharath Sonone, Captain Amol Yadav, and my other sisters also, sister entrepreneurs, Padmaja, Namrata, Kanchan, Sukesha, and all others. My brothers and sisters, I welcome you all here in today's very important function. If you see the objective of today's webinar, it is very important, and that is to encourage SC/ST owned units to achieve their share of at least 4% of total procurement being made by CPSEs, and out of 20%, the applicable percentage for ONGC is 4%,
And if you see the figures of Sambanth portal, it shows the planned purchase for 2020-21, it comes to 5,500 crore and achieved target is 2,344 crore. The 20% MSME share comes to 1,100 crore and achieved target is 1,106 crore. But dear friends, if you consider SC/ST target achievement, it comes to 4% plan. It was 220 crore and achieved target is 6.0187 crore. Now see the difference. In general MSME, it has almost touched the target. But in case of SC/ST, it is much behind. From this, you can understand the importance of the program and ONGC's SC/ST Employees Welfare Association efforts. I always encourage and congratulate Somkorji for all the initiatives. Whenever we call him, he is available, whether he is there in office or not there in office. Whoever member from Indian Chamber of Commerce calls him, he always encourages us to do the business with ONGC. But the irony is, if you recollect the speeches by all dignitaries, everybody has emphasized the need of increasing the percentage of procurement by SC/ST entrepreneurs. Then why we are lagging behind? हम लोग कहाँ पीछे हट रहे हैं? अब जैसे सोमकोर जी ने कहा कि लास्ट ईयर फुल पैक हॉल था, सेम चीज, हाउ टू डू अ वेंडर डेवलपमेंट, what are the benefits, what are the benefits given by government of India, what are the relaxed policies introduced by ONGCs. अगर आप लास्ट ईयर के परसेंटेज को अगर कंपेयर करोगे तो फिर ये साल में उसमें डिफरेंस क्यों नहीं आया? Who is responsible? Is only ONGC? Is only government policy? Or only SC/ST entrepreneurs? Or any barriers that we need to understand? This is a webinar. We have very limited scope here. But my earnest request to Somkorji will be not to restrict this activity only up to this level, vendor development. ONGC is a giant in the country. Country's development is measured with the development of ONGC. अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि 220 करोड़ में से 6 करोड़ 0.0 कुछ परसेंट. त्रिपाठी साहब ने भी कहा कि 1% अचीवमेंट. तो डियर फ्रेंड्स, it is really for all of us to think over this point. जैसा मैंने पहले ही कहा कि ओवरसीज इंडस्ट्री मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन है आज. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात सोमकोर जी ने सोची. अभी एक बात आपके चीफ गेस्ट साहब ने कही कि 125 items there is no Indian vendor from whom these products can be procured. Now my earnest request is to our overseas industry brothers to study these items and find out your counterpart in India to manufacture these products in India. I request ONGC top management to create a platform under your leadership to see that our overseas brothers are facilitated to understand the procedure, encourage them to start their joint ventures, and see that by next year your 4% target is achieved. It has been mentioned that lot of changes are made to encourage Indian industry to manufacture in India and reduce the imports.
It's very good thing. What is Atmanirbhar? Atmanirbhar is also to reduce the imports. And ONGC is the largest organization in imports. Just understand how big opportunity it is for the Indian SCST MSMEs. Because now Somkorji and his team, ONGC management, has tried to connect you, all Indian SCST vendors, to the overseas vendors, so that you can do a business here and flourish yourself. One thing I again noted, there are up to 200 crore value product. The tenders are reserved for Indian industry under Atmanirbhar Bharat. This is very good thing, which can boost Indian industry and encourage you to identify the product and see that all these tenders are filled by you. Again, regarding the ONGC's new policy development is development order procedure is relaxed. This is again very important thing. I think first time I heard this. The same can be prepared as per the product which you want to supply to ONGC. Don't you think this is the very important opportunity for you? You manufacture the product. आप जो product बना रहे हो, उस product के अनुसार development procedure order बन रही है, ताकि अगर आप ये सोचते हो कि ONGC का टेंडर भरने में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो वो आपको एलिजिबल करने के लिए ये स्कीम लाई है. अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो सोमकर जी और उनकी टीम वहां अवेलेबल है, उनको मिलिए, आपकी दिक्कतें सॉल्व करिए, लेकिन अपनी जिम्मेवारी का एहसास खुद भी रखिए कि जब पूरी दुनिया कह रही है कि आपका परसेंटेज कम है, परसेंटेज कम है, क्या सिर्फ ओएनजीसी की जिम्मेवारी है? नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है नहीं. अगर मैं ये सोमकर जी को अगर पूछूं कि कितने SC/ST वेंडर्स ने आपको साल भर में मेल लिखे या लेटर्स लिखे कि हम ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे, आप हमको मदद करिए, उस पर से ये साबित होगा कि दिक्कतें आपकी तरफ पे है क्या ONGC की तरफ है. I request all my SC/ST vendors again to take the benefits of relaxed policies. You try to get the recording of this today's program, what Pandey ji has said, what Tripathi ji has said, and what other speakers have said. Take the benefit of Somkor ji. Create a bridge between you and ONGC. And use ONGC as a positive ecosystem to grow your business. एक दूसरी बात मेरे ध्यान में आ रही है कि SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ONGC ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे देश में आपके ऑफिस है. You are followed by other organizations also. Banks organizations SC/ST के, ऑयल इंडस्ट्री HPBP IOC की ऑर्गेनाइजेशन से. आप जो पहल करोगे ना सर, वो बाकी एसोसिएशंस फॉलो करेंगे. तो मैं चाहूंगा कि जब ONGC के यहाँ अगर ये परसेंटेज, इतना परसेंटेज कम है, सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू RCF, HPC, BPC, वहां भी परसेंटेज इतना ही कम होगा. सर क्या ये पॉसिबल है कि आप सब एसोसिएशंस एक प्लेटफॉर्म पे आके आप हमारे लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करके दे कि हम हक से आपके पास आए और आप हमारे आपके रिलैक्स प्रोसीजर्स, रिलैक्स परचेस ऑर्डर्स. अब ये आत्मनिर्भर का एक बेनिफिट और है कि जहां हम टेंडर भरते हैं तो वहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए नहीं होता है. जैसे ये पता लगता है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए नहीं है, हम वो क्रॉस करके आगे चले जाते हैं. लेकिन ये तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये डेवलपमेंट ऑर्डर प्रोसीजर चेंज की है ONGC ने. अब ONGC जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो HPBP IOC, ऑल बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्या वो भी अपनी प्रोसीजर डेवलपमेंट प्रोसीजर ऑर्डर कम कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम कर सकते हैं?
अगर आप एक जो टेंडर रिफॉर्म्स अगर नहीं लाओगे तो आप कहीं भी देखिए, अगर 2 करोड़ का टर्नओवर वाला अगर SC/ST वेंडर है और वो टेंडर भर रहा है, तो कोई भी, आई एम विथ वेरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी के साथ मैं सर कह रहा हूँ कि टर्नओवर का क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है। आप क्वेश्चन आंसर में आपको बहुत सारे मेरे SC/ST वेंडर्स ये सवाल पूछेंगे कि, और आपको फिगर्स भी देंगे। मेरा खुद का मैं खुद RTI के अंडर इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ JNPT से कि भाई आप ये टर्नओवर का क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया रिलैक्स क्यों नहीं कर रहे, नहीं किया जा रहा है। परसों मैंने मियान का एक टेंडर पूछा, वहां तो वो उनको तो MSME का रिजर्वेशन ही मालूम नहीं है। बहुत से टेंडर्स, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो 2016 में स्टेट गवर्नमेंट को अप्लीकेबल हुई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का GR इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। तो आप खाली SC/ST एसोसिएशन ही नहीं है, तो यू आर द path breaker, you are the leaders to show us the good way. अगर आप जो पहल कर रहे हो आज, आप अगर एक प्लेटफॉर्म पे, मैं तो यहाँ तक रिक्वेस्ट करूंगा सोमकोर जी कि आपकी तरफ से बैंक एसोसिएशंस, ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशंस और इंडस्ट्री एसोसिएशंस, जैसे कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर अफर्मेटिव एक्शन है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, बाकी और एसोसिएशंस है, वो एसोसिएशंस को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाइए। और जैसे ONGC ने ये पहल की, मैं तो तहे दिल से ONGC के मैनेजमेंट का, चेयरमैन का और आपके ऑल डायरेक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आपने पहल की है कि डेवलपमेंट प्रोसीजर ऑर्डर रिलैक्स किए। ये सेम थिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिलैक्स नहीं कर सकती। यहाँ पे गोखे साहब थे, आपने किसी ने तो अभी सेक्रेटरी साहब का भी उल्लेख किया उनके कोई भाषण का। आप रिप्रेजेंट करिए MSME सेक्रेटरी को कि पब्लिक सेक्टर में टर्नओवर का रिलैक्सेशन और एक्सपीरियंस का रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। अगर ये आप दोगे तो छोटा वेंडर जो है वो डेफिनेटली इस स्कीम्स का बेनिफिट लेगा। नहीं तो गोखे साहब जी ने जो रिलैक्सेशन बताए, जो बेनिफिट्स बताए, पॉलिसीज बताई, रवि कुमार जी ने जो पॉलिसीज बताई, ये SC/ST हब की जो पॉलिसी, वो सिर्फ कागज पे रह जाएगी ना सर। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट अगर बनाती है वो अगर सही तरीके से, अगर आप ग्रास रूट लेवल से इनपुट लेके उसमें चेंजेस करके, वो इंडस्ट्री के हिसाब से अगर उसमें चेंजेस नहीं लाओगे, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो परसेंटेज 4% नहीं होगा ना सर। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि हमने 4% रिजर्वेशन दिया है, दूसरी तरफ आप हर्डल डाल रहे हो कि कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसको फॉलो ही नहीं करे, तो परसेंटेज बढ़ेगा नहीं सर। तो फिर से मैंने काफी समय इस प्लेटफॉर्म पे लिया और मैं अपनी इसी बात को फिर से एक बार दोहराता हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम है, आपने खुद कहा कि गए साल में अच्छा रिस्पांस था, 100 लोग अलाउड किया है गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। आपके हॉल में 100 के लिए डिस्टेंस मेंटेन करके भी एक प्रोग्राम हो सकता है। आपने बहुत अच्छा किया कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इतने लोग, अभी देखिए 190, किसी ने तो भी रेफर किया कि 190 पार्टिसिपेंट थे। आप सभी बुलाइए, आप उसको प्रॉपर छाननी करिए कि भाई जो सीरियस वेंडर्स है उनको बुलाइए, आपके ऑफिसर्स को बुलाइए, और इस तरह का फिर एक प्रोग्राम जनवरी, फरवरी, मार्च में आप 1-to-1 बेसिस पे वर्चुअल पे न लेते हुए आप आपके ONGC के बहुत अच्छे हॉल में लीजिए। इस गुजारिश के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनश्च मैं मेरे जो ओवरसीज इंडस्ट्री ब्रदर्स इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े और वो अपने इनपुट्स देंगे ही। फिर से एक बार मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिया के SC/ST वेंडर्स को आप अपने साथ जोड़िए और आत्मनिर्भर योजना जो भारत में लागू की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका बेनिफिट लेते हुए हमारा जो परसेंटेज है वो बढ़ाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जोड़े साहब। आपने जो अपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं उससे हम इत्तेफाक रखते हैं कि जो पॉलिसी है
4% वाली, उसमें से 1% का टारगेट जैसे अभी साहब ने बोला है, त्रिपाठी सर ने। तो इसमें क्या है कि इट इज एक्चुअली द ट्रैफिक शुड बी बोथ वेज, नो वन वे होने से प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, जब लास्ट ईयर का हमने वेंडर डेवलपमेंट मीट किया था, उसके बाद से मुझे याद है कम से कम 15 शायद लोग होंगे जो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद में जो हमसे होता है, जो उनको गाइड करना है, हमने टेलीफोनिकली किया। कई वेंडर्स जो है वो हमारे ऑफिस में आए, हमने उनको अलाउ किया। वी हैव वेरी स्ट्रिंजेंट दैट सिक्योरिटी सिस्टम, फिर भी हमने वो उनको ऑफिस में अलाउ करके हमने हमारे ईडी असेट मैनेजर पांडे साहब है, उनके साथ में हमने मुलाकात करा दी। हमारे एमएम फ्रेटर्निटी किसी राव साहब है, उनके ऑफिस में मीटिंग हुई है, और जो भी उनके डाउट्स थे, जो भी उनकी क्वेरीज थी, उनका हमारे राव साहब ने, मयप्पन जी ने आल्सो उनका उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वी आर रियली वेरी प्रोएक्टिव इन दिस, आवर अप्रोच इज वेरी प्रोएक्टिव, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग, नो, इसका कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, ये हमारा पर्पज है, ये उद्देश्य है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स है, जिनको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो दे शुड कम फॉरवर्ड वॉलंटरीली। मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, ईमेल आईडी दिया हुआ है। दूसरा, अपने हमारे जो एमएम डिसिप्लिन के लोग हैं, उनका भी हम कॉन्टैक्ट नंबर उनको शेयर करते हैं कि आप आइए, उनको डायरेक्ट पूछिए। और मैंने राव साहब से कई बार रिक्वेस्ट किया, राव साहब इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो मिस्टर मयप्पन जी, तो उनका इंटरेक्शन हुआ है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ कुछ ओएनजीसी का यहाँ पे सिस्टम ऐसा है ना कि यहाँ पे जैसे ऑफशोर, वी आर वर्किंग इन ऑफशोर, नो, यहाँ बट ऑफिस तो यहाँ हमारा इधर है बांद्रा में और कहीं धारावी में, बाकी हमारा मेन जो जॉब है ऑफशोर में। अभी ऑफशोर में जो प्रोडक्ट और जो टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें बड़े बड़े लीडर्स है, वर्ल्ड लीडर्स है, जो एमएसएमई के परव्यू में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ का ओएनजीसी का ईएनपी बिजनेस ऐसा है। बाकी फिर भी जो मटेरियल सप्लाई है या जो सर्विसेज है, उसमें एमएसएमई जो है वो इसमें दे कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दैट। सो माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट वुड बी टू ऑल पार्टिसिपेंट्स to come forward and take benefit of this very good opportunity. This is very golden opportunity. और जैसे जोड़े साहब ने कहा कि लास्ट ईयर का जो प्रोग्राम हुआ और आज ये प्रोग्राम हो रहा, दिस इज वर्चुअल प्रोग्राम बिकॉज असेंबलिंग इज नॉट अलाउड। और हम लोग अभी जब ये सारा शिथिल हो जाएगा, ये असेंबलिंग वगैरह, उसके बाद में हम लोग जो जैसे उन्होंने कहा कि जो सीरियस जो वेंडर्स है उनको एक बार बुलाइए, और वी आर वेरी पॉजिटिव टू दैट सजेशन। और हम लोग मार्च में जब ये सारा मतलब जो रेस्ट्रिक्शन है वो जब हटाए जाएंगे, तो विल ऑर्गेनाइज अनदर मीट फॉर रियली दोज हु आर रियली सीरियस अबाउट दिस। मतलब उनको कुछ जो भी इनपुट्स हमारे साइड से चाहिए, विल हैव वन टू वन डिस्कशन आल्सो। ओके, एंड जोड़े साहब, आपने जो बहुत सारे सजेशन दिए मैंने नोट कर लिए हैं, और लेट अस होप कि हम लोग इस पे काम करेंगे। और जैसे आपने कहा कि एचपी है, देन बीपी है, बीपीसीएल है, बाकी और भी है जो इंडस्ट्रीज, बैंक्स है, उनको साथ में लेके भी उनमें है जो अब बहुत सारे, जैसे ओएनजीसी ने तो अभी बहुत सारा जो शिथिल कर दिया है, तो रिलैक्सेशन बहुत सारा दे दिया है, तो ये भी पता नहीं था, आपके बात सही है। तो जब तक ये हमारे वेंडर्स है या जो जब तक हम सबसे अप्रोच नहीं करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा? तो हमारे जो वेंडर्स है उन्होंने भी आगे आना चाहिए, उन्होंने पूछना चाहिए हमको, तो विल प्रोवाइड देम ऑल दी इनपुट्स एंड ऑल दी गाइडेंस। या Thank you, sir. so thank you very much, Jode sahab, for your very I really appreciate your initiatives also, because आप जिस फील्ड में काम करते हैं वो बहुत बहुत अच्छा फील्ड है, और इससे बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है। या थैंक यू। Okay, now it's time to welcome Mr. R.Y. Kadam Sahab. He is AGM Canara Bank, and he will be speaking on various credit support schemes. अभी देखिए, आपने एमएसएमई को सोचा है, उसके बारे में खड़ा करने का सोचा है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी छोटा बिजनेस है, उसमें आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं,
तो उसमें आपको फंड की जरूरत पड़ेगी ना, इनिशियल फंड की। तो उसमें कैनरा बैंक की क्या क्या स्कीम्स है, आपको कैसा लोन मिल सकता है, और भी वो रिलैक्सेशन क्या है उसमें फॉर SC/ST पर्टिकुलरली, फॉर MSME। तो वो जो है हमारे कदम साहब जो है, RY कदम साहब, वो आप हमारे साथ में सबके साथ शेयर करने वाले हैं। कदम साहब, आर यू देयर? हाँ, अनम्यूट कीजिए प्लीज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Can you hear me? Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay. So welcome Kadam साहब once again. Last time बहुत अच्छा था या, और इस बार भी अभी हमारे जो भी जो पार्टिसिपेंट्स है, दे आर रियली वेरी कंसर्न अबाउट दिस क्रेडिट फैसिलिटी या लोन और बाकी जो चीजें हैं उसके बारे में जो है आप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गाइड कीजिए। ठीक है। या वेलकम। या So I introduce myself. I am Mr. RY Kadam, GGM, Canara Bank, SME Mumbai. I represent Canara. Okay. So as you are aware, that Canara Bank is a very old organization. Almost we have completed. सर आपकी आवाज उतने क्लैरिटी नहीं है आपकी आवाज में। आपके पास माइक्रोफोन होगा ना? माइक्रोफोन थोड़ा यूज कर सकते हैं, ईयरफोन या वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा आपका वॉल्यूम। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है आपके इसमें। एक मिनट। व्यूअर्स, ये जो हमारे कदम साहब है, उसके बाद में महेंद्र मालविया जी है जो इंचार्ज है नेशनल SC/ST हब ऑफिस मुंबई के, उनका प्रेजेंटेशन होगा स्कीम्स ऑफ नेशनल SC/ST हब, और उसके बाद में हम फिर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा, और उसके वो आपके जो भी क्वेरीज है उसका आंसर देने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ उपलब्ध है। या गो अहेड कदम साहब, या गो अहेड। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी ना, कुछ भी नहीं आ रही है। वो सेटिंग में थोड़ा जाइए, सेटिंग में थोड़ा करना पड़ेगा। हेलो। हाँ, नाउ इट्स ओके सर, या गो अहेड। अब आ रही है? ओ या यस यस आ रही है, हम बोलिए। जैसे बता रहा था मैं कि आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू, इन्फॉर्मिंग द पार्टिसिपेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू rather convey my greetings to all the dignitaries as well as the participants who have joined in this webinar. Good afternoon to all. So I represent Canara Bank, and Canara Bank has already completed 114 years of successful. And इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पोस्ट दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि 1 अप्रैल 2020 जो सिंडिकेट बैंक था वो कैनरा बैंक में अमालगमेट हुआ है, एंड एज सच नाउ द ब्रांच नेटवर्क ऑफ कैनरा बैंक हैज गॉन अप टू 10,391 ब्रांचेस, मतलब लगभग 10,400 तक हमारी ब्रांचेस हो गई है। ओके, एंड सेकेंडली द बिजनेस which matters is around 15.97 lakh crore, 15.97 lakh crore total business जो global business है कैनरा बैंक का वो है। दिस इज अबाउट माय बैंक ओनली, बट यहाँ जो आज का जो डेटा है अकॉर्डिंगली आई वुड लाइक टू फोकस ऑन सर्टेनली इम्पोर्टेंट स्कीम, मतलब जो पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है, एंड even the bank is also giving a lot of importance to all these schemes. वो schemes मैं highlight करना चाहूँगा सर वापस, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, टू बिगिन विथ, इज इट नाउ? हाँ, थोड़ा अभी ठीक है या बेटर? हाँ, ये जो पहली जो स्कीम मैं बताना चाहूँगा वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो लगभग सभी जानते हैं जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है और जो प्रोस्पेक्टिव बिजनेसमैन है या जो मेरे हिसाब से जो बोरोज मेरे लिए बैंक के लिए, तो उनके लिए ये योजना है मुद्रा योजना, जहाँ देयर विल बी 3 वेरिएंट्स, शिशु, किशोर, तरुण, and the maximum finance in under this scheme is 10 lakhs,
There will not be any processing charges up to 5 lakh. It can be either in the form of working capital or term loan. And there will not be any collateral security. Third party guarantee भी नहीं चाहिए इसमें. And it will be covered under specific government guarantee scheme. तो ये मुद्रा योजना है जहाँ जिसकी जरूरतें लिमिटेड टू 10 lakhs है जिन्हें चाहिए. They can avail this business loan under Mudra. One more scheme which is again to the benefit of all the participants is Stand Up India scheme, जहाँ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा emphasis दे रही है. Recent past में भी हमारे पास जितने भी जो गवर्नमेंट से जो एक ये रहता है फॉलो अप रहता है, तो emphasis is on also on this scheme, Stand Up India scheme. This is particularly for the new greenfield project into manufacturing, trading and service sector for SC, ST and women entrepreneurs. यहाँ जो लोन दिया जाता है वो लगभग 10 लाख के अबव होना चाहिए. बिकॉज मुद्रा में हम 10 लाख तक थे, स्टैंड अप इंडिया में आगे तो 10 लाख से ऊपर है एंड मैक्सिमम अमाउंट इज 100 लाख. यहाँ जो आपको यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द ब्रांचेस, अप्लाई देयर, और यू कैन गो इनटू द स्टैंड अप मित्रा पोर्टल www.standupmitra.in. ये पोर्टल में जाके आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ भी कोई कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है. नो थर्ड पार्टी गारंटी इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड इट विल बी कवर्ड अंडर CGSSI, दैट इज द इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ जो कंपोजिट लोन का जरूरी होना जरूरी है. द लोन शुड बी इन द कंपोजिट फॉर्म. इट कैन बी आइदर put together. It should be both term loan and working capital. Similarly, एक गवर्नमेंट पोर्टल सबके लिए अभी आसान पोर्टल जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रही है. दे वांट एवरीथिंग टू बी मेड डिजिटल, ट्रांसपेरेंट एंड विदाउट एनी ह्यूमन टच. ये जो है वो PSB लोन है 59. दिस इज अगेन अ मार्केट प्लेस which enables entrepreneurs to get in principle sanction for MSME loan from 1 CR to 5 crore. 1 लाख से लेके 5 करोड़ तक लोन इन 59 मिनट. दिस वी हैव बीन डूइंग, हम लोग भी कर रहे हैं. जो कदम सर वो पता नहीं आपका आवाज कुछ उतना क्लियर नहीं क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली. हमारे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट वो वहाँ कंसर्न रेज कर रहे हैं. ओके, तो वो आपके पास ईयरफोन या वो होगा, हेडफोन कुछ होगा? मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर दीजिए ना मोबाइल से. तो एक काम करिएगा, इसको ना यहाँ से लॉग ऑफ करके या बंद करके मोबाइल से करिए तो दैट वुड बी बेटर आई थिंक, क्योंकि आवाज नहीं आ रही तो फायदा नहीं हो रहा है. लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हमारे. वो जो मुद्रा से आपने शुरू किया था ना, वहां से थोड़ा सा एक बार बता दीजिए. सो पार्टिसिपेंट जस्ट वेट फॉर सम टाइम, बने रहिएगा. इसके बाद में हमारा प्रेजेंटेशन है वो ONGC साइड से होगा. हमारे सीनियर जो ऑफिशियल्स है ONGC के, those who are into this MM field, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, वो गाइड करेंगे. और इसमें उनको एक्सपर्टीज है, उनका बहुत इसमें उनका नॉलेज है. तो हम लोग चाहते हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक पहुंचे. या सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप इसमें बने रहिए और साथ में कुछ पूछिए. अगर आपको कोई डाउट है कुछ पूछिए. तो एक मिनट, राजेंद्र साहब भी हैं, जस्ट अ मिनट प्लीज. या just a minute please.
मालविया जी अनम्यूट कीजिए खुद को। क्या नाम से ज्वाइन कर रहे हैं साहब? सर मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ, थोड़ा बात करिए ना साहब से, क्या नाम से, तो मैं उनको फिर जी मैं करता हूँ। या Gokhe ji, you will get your answer. Just wait for some time. Mr. GVSS Rao is there. He will answer all the queries regarding, or already he's guiding the participants. Rao साहब, उन्होंने बहुत सारे जो आपके सवाल थे उनका जवाब दिया है। हाँ, इसमें और भी आप you can write in the chat box your queries in the meantime. And Mr. GVSS Rao, Mr. Ved Prakash ji, Mr. Mayappan ji, even Mr. Sharma ji, they will provide you that much needed support and guidance for your queries. Just a minute. मालविया जी? हाँ सर मैं लाइन पे हूँ, उन्हीं से बात कर रहा हूँ सर, कैनरा बैंक से। एक सेकंड सर प्लीज। ओके ठीक। So just wait for some time, let him join again, क्योंकि ये this is very important subject, no, कि क्रेडिट फैसिलिटी क्या है बैंक की। हाँ, उसमें और भी जो क्या उसमें जो हमारे जो SC/ST के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए क्या कंसेशंस है ना, वो भी इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए, अच्छा रहेगा। तो he will be joining shortly. Where can we access no LD to women entrepreneurs policy? ठीक है, इसका भी जवाब मिलेगा आपको। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। राव साहब, कैन यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेरी? वेयर मिस सविता काले, शी इज आस्किंग। या No, Jageshji, basically what Mr. Tripathi told regarding that no LD, no EMD, no SD, that was pertaining to development order policy what ONGC has come out with. जी। So जो development order का जो policy है उसके हिसाब से जो भी हमारा he told ना EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए ऑलरेडी टेंडर पब्लिश हुआ है। अगर ये लोग कोई भी उस पे सप्लाई करना चाहते हैं तो दे कैन डायरेक्टली अप्रोच थ्रू द नेट। एंड उसमें जो भी अगर उनका फैसिलिटीज वो सब देखने के बाद क्वालिफाई होते हैं तो डेवलपमेंट ऑर्डर ओएनजीसी देती है। और उसके बाद अगर वो उस डेवलप करने में फेल भी होते हैं तो कोई ऐसा उनके लिए एडवर्स नहीं होगी। दिस इज व्हाट इज द पॉलिसी सेज। ओके या, थैंक यू। I hope Savita ji, you got your answer. Yeah, if further question is there, you can ask later on, na? Just wait for some time. Kadam sahab, yeah. सर ये गैलेक्सी A6 प्लस करके है सर, प्लीज। गैलेक्सी, एक मिनट। A6 प्लस, एक, हाँ करेक्ट है, ठीक है। अनम्यूट कीजिए सर। यस, अनम्यूट योरसेल्फ सर, कदम सर। Yeah, okay. Is it okay now? Yeah, it's okay now, sir. Yeah, go ahead. So shall I mean first two schemes which I narrated or एक बार और बता दीजिए सर। या और एक बार बता देता हूँ। तो ये बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एम्फेसिस है, जो स्कीम्स हम यहाँ बताने जाने वाले हैं जी। एक तो मुद्रा, जो सब लोग अब जानते हैं, वैसे यहाँ 3 वेरिएंट है, शिशु, किशोर एंड तरुण। The maximum finance will be restricted to 10 lakhs in the form of either term loan or working capital. यहाँ 5 लाख तक कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है एंड नॉर्मल प्रोसेसिंग चार्जेस अबव 5 lakhs. No collateral security, no personal guarantee, and all loans will be covered under CGFMU, that is the insurance CA. Okay.
सिमिलरली जो दूसरी स्कीम है वो स्टैंड अप इंडिया है। यहाँ अभी जो पहले बताया हमने कि मुद्रा में 10 लाख तक जो एक कवर मिलता है, लोन दिया जाता है, तो 10 लाख के ऊपर से ये शुरू होता है और 100 लाख 100 lakhs, that is 1 crore, 10 lakhs to 1 crore, and this loan is given for any new greenfield project। जो कोई नया बिजनेस चालू करना चाहता है which is considered as a new project, new venture, इसके लिए in manufacturing, trading and services sector, specially for SC, ST and women entrepreneur, stand up India। तो ये एक लोन है जहां आप ब्रांच में जाके, किसी भी ब्रांच में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। भी का एक पोर्टल है www.standupmitra.in, ये पोर्टल में जाके भी इस लोन को आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी 1 करोड़ की लोन के लिए कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, थर्ड पार्टी गारंटी नहीं चाहिए, और ये लोन भी इट इज कवर्ड अंडर CGSSI, ये जो इंश्योरेंस का है। बट एक ही है इसमें कि इसमें 2 तरीके के लोन होने चाहिए। एट अ टाइम व्हेन यू अप्लाई फॉर द लोन, there should be some component in term loan and some component in working capital, because since you are starting a new project or new business, new venture। Similarly जो जहाँ पे मैं था कि PSB loan in 59 minutes, this is basically online marketplace which enables entrepreneur to get in principle approval for MSME loan from 1 lakh to 5 crore in 59 minutes from public sector bank। ये the government of India wants everything to make go digital, everything to be very transparent, no human intervention। इस हिसाब से ये लोन में जो 1 लाख से लेके 5 करोड़ तक दिया जाता है, जहां आपको पोर्टल में जा और 9 मिनट, दैट इज द बेसिक। इस स्कीम का जो बेसिक है कि इट शुड बी डन वेरी फास्ट। नॉर्मल कोर्स में आप एप्लीकेशन देते हैं हमारे पास, उसमें I mean we take a lot of time, or normally any banker for that matter takes a lot of time। तो ये the only idea is to avoid such delay। इसमें the basic idea as I said कि without human intervention till sanction and disbursement stage, MSME borrower is not required to submit any physical document for in principle approval। Physical document आपको कोई submit करना नहीं है, and this particular solution uses advanced algorithms to analyze data point from various sources such as IT return, GST data, bank statement। मतलब ये आप जब ये information IT return, GST data and bank statement की information आप लेके बैठोगे, and based on that the entire analysis of your proposal is being done। और आज की तारीख में this is over as far as PSB 59 minutes is concerned, and presently what is being emphasized by the government of India is एक स्कीम और है जहां छोटे वेंडर्स के लिए ये स्कीम है, PM स्ट्रीट, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट, दैट इज आत्मनिर्भर वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये जो स्कीम है, ये स्कीम जो वेंडर्स रजिस्टर्ड वेंडर्स थे 24/3/20 के पहले, इनके लिए ये स्कीम है to support street vendors engage in vending in urban areas on or before 24/3/20। मतलब this scheme is restricted। Yeah। Station 20 कोविड जब जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके पहले की डेट है 24/3, उस वक्त उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। They will be getting a WCDL loan। They will be getting a loan of rupees 10,000 with a tenure of 1 year to be repaid in monthly installment। अगेन इसमें सब्सिडी भी है 7% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, विद रीपेमेंट पीरियड फ्रॉम 7 to 1 year। बट ये क्या है, अच्छा ये रीपेमेंट आई विल नॉट टेल यू, नो कोलैटरल नथिंग, इट्स अ 10,000 रुपीज लोन है, ठीक है। अब और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा सबके लिए बेनिफिट के लिए, दोज हु आर पर्टिकुलरली दी एग्जिस्टिंग जो बोरोवर्स है, एग्जिस्टिंग जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, if they are aware they should take advantage of these schemes extended by government of India। this is particularly post pandemic जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे, उसमें एक स्कीम थी वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग।
because this scheme is available to all MSME loan of under standard category as at 1/3/2020. ये स्कीम पहले भी थी, 2019 में भी थी. अब ये स्कीम थोड़ी मॉडिफाई होके आई है. 1 मार्च 2023 ये स्टैंडर्ड एसेट होने चाहिए एंड एक्सपोजर अप टू 25 करोड़, 25 करोड़ तक आपका जिनका एक्सपोजर है MSME लोन है, और जो जिनका एसेट, जिनकी पर्टिकुलर बोरोइंग इज स्टैंडर्ड एज ऑन 1/3/2020, दे आर एलिजिबल फॉर दिस फैसिलिटी, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग. इसमें आपको जो एग्रीगेट जो 25 करोड़ का एक्सपोजर है वो एक बैंक का नहीं है, इट शुड बी विद ऑल द लेंडर्स. सपोज आप 2-3 बैंक के साथ डील कर रहे हैं या NBFC से कुछ लोन लिया है आपने, तो वही सबका एक्सपोजर मिला के 25 करोड़ के अंदर होना चाहिए. ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, जहाँ GST रजिस्ट्रेशन चाहिए वो होना जरूरी है. अदर देन जहाँ GST रजिस्ट्रेशन नहीं जरूरी है, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दैट ये रिक्वायरमेंट. तो ये स्कीम आप देख लीजिए, आप बैंक में जाके पूछ सकते हैं, बिकॉज इफ यू रियली वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम एंड इंश्योर दैट यू गेट सम, आपको थोड़ा बेनिफिट उससे मिल सकता है. यू गेट सम रीस्ट्रक्चरिंग और रीफेजिंग ऑफ योर लोन, थोड़ा interest concessions or something. I mean, the whole idea is that your business doesn't really get affected. आज की तारीख में ड्यू टू कोविड अगर कुछ अफेक्ट हुआ है तो उसके लिए गवर्नमेंट वांट्स यू टू कवर अंडर दिस स्कीम. बैंक्स वांट यू टू गिव एडवांटेज ऑफ दैट एंड देन यू कैन बी you will have the benefit of that. You can really take your business forward even from difficult situation. अब और एक स्कीम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. ये तो सब जानते रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है वो जानते रहेंगे. बट नाउ इसमें एक चेंज हुआ है कि ये स्कीम एक्सटेंड हुई है अभी 31/3/2020, मतलब मार्च 21 तक, 31/3/21 तक, 21/3/21 तक ये एक्सटेंड हुई है. इसमें भी 100% कवरेज है. इसमें एक जो रिक्वायरमेंट है वही है 20% ऑफ द फंड बेस्ड लायबिलिटी ऑफ बोरोअर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29/2/2020. आपका जो 29 फरवरी 2020 का जो आउटस्टैंडिंग है फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग, उसका 20% यू आर एलिजिबल. इसमें एक जो चेंजेस हुए हैं, एक स्कीम था GECL 1 कर, जो GECL पहले था उसको GECL 1 किया गया है, और GECL जो नया आया है जो GECL 2 करके किया गया है. तो इसमें बेनिफिट, वो पहले स्कीम में जो 250 करोड़ की कैप थी टर्नओवर की, उसको हटा दिया गया है. दैट इज रिमूव्ड. सो दोज हु आर हैविंग एलिजिबल, बट सिंस दे वर हैविंग अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 250 CR, तो उन्हें वो लोन नहीं मिल रहा था, ये GECL नहीं मिल रहा था. नाउ दे हैव बिकम एलिजिबल बिकॉज वो कैप हटा दी गई है. सेकंड, इसमें इट इज लिंक टू योर आउटस्टैंडिंग, मतलब और एक जो बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन है, उन्हें उनके लिए भी एलिजिबिलिटी दे दी गई है. 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक जिनकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, उन्हें भी वो एलिजिबल किया गया है. अनदर स्कीम है, ये छोटे बिजनेसमैन के लिए है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेटेड डेट. ये भी जस्ट अ स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज बिजनेसमैन हु आर अफेक्टेड बाय कोविड पैंडेमिक. ये स्कीम में आपका अकाउंट अगर स्ट्रेस में है, आपका बिजनेस स्ट्रेस में है, SMA 2 में है बैंकिंग पार्लेंस में, या NPA है, as on 30/4/2020, these schemes are eligible for restructuring. It is credit guarantee scheme for subordinated debt. तो इसमें आपका जो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसका 15% or 75 lakhs, whichever is lower, that will be given by way of a loan, which is at a concessional rate, and which will be again 90% will be guaranteed by, it is guaranteed by CGT-MSE, 90% of that loan. It can be either 75 lakhs maximum or 15% of your contribution of your equity. Itna hai. In addition to that, there are many schemes. These are the schemes which I highlighted, which are being really promoted or being given importance by the government of India. In addition to that, there are various schemes wherein these are the schemes floated by Canara Bank, like Canara Bank MSME cap, which is credit against the property for MSME entrepreneurs for their business needs. So these schemes you can very well,
inquire with any of the Canara Bank office, like Doctor Choice Scheme, Canara GST, then Canara Trade, and one of the another important scheme is recently come is that Canara MSME Gold Loan. Now this is Canara MSME Gold Loan. The salient feature of the scheme is that this is the quantum of loan is from 1 lakh, minimum 1 lakh, maximum 20 lakhs. Quantum of loan is 1 lakh and maximum 20 lakhs, and the rate of interest is 7.65% presently. So this is very simple loan. You can avail both borrowing and non-borrowing units of our bank who want to avail loan against gold ornament and jewelry. They can avail this facility. There is an overdraft which is tenable for 12 months, or demand loan which is for 12 months. So these are the schemes which briefly I highlighted. I tried to take it to you. So there are any time you can approach any of the branches, and your major working capital needs, if you have, suppose if you are into a bigger business like MSME, but you are into not micro and small, but you are into medium enterprises, and you have, say, export facilities, other facilities like CC, OC, bill discounting, LCs, guarantees, export facilities, import facilities. All these facilities are also there for MSME clients. Everything is available with Canara Bank. We are doing good in Canara Bank. We are doing, extending these various support to MSME clients all over India. But since this particular a scheme or particular program is covering the region of Maharashtra and Mumbai, I think we are there. We will be supporting you any point of time. You can get in touch with us. My numbers are with the organizers, and any support from our side is required. We will definitely help you. We can guide webinar from some other part of the country. Then definitely I can give you and briefing about the schemes of our scheme as well as the bank scheme. I profusely thank the organizers for giving me an opportunity to represent Canara Bank and come out describe you few of the scheme. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच कदम साहब। जो कैनरा बैंक की वेरियस स्कीम्स है उसके बारे में आपने बताया है। अभी जो कोलैटरल का आपने बताया है कि अभी समबडी इज राइटिंग हियर दैट जो कोलैटरल है वो अभी भी उसका वेवर नहीं होता है समथिंग, तो उसके बारे में ठीक है हम लोग बाद में बात करेंगे, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आफ्टर दिस सेशन ऑफ मिस्टर महेंद्र मालविया हम लोग ओपन करेंगे ये हाउस को। सो कुछ भी क्वेरी हमारे पार्टिसिपेंट्स का है दे विल आस्क। Okay. Yeah. Thank you very much once again, Kadam sir. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you. Okay, now it's time to hear from Mr. Mahendra Malviya, who is instrumental, is very helping. और जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं इवन लास्ट ईयर का और इस साल का भी, तो उनके सपोर्ट के बिना it was not possible. So I welcome Mr. Mahendra Malviya. He is in charge of National SC/ST Hub Office Mumbai, and he will be speaking on schemes of National SC/ST Hub. Yeah, Mr. Malviya, go ahead, please. Thank you, sir. Thank you. Sir, I am audible, sir? Yes, sir. You are audible, loud and clear. Okay. Thank you, sir. Thank you. First of all, very good afternoon to all the participants. Sarvana Jai Bhim. देखिए अभी हमारे सीजीएम साहब थे श्री रवि कुमार जी, उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ ब्रीफ किया कि नेशनल SC/ST हब कब सेटअप हुआ, गवर्नमेंट का क्या मैंडेट था SC/ST हब को सेटअप करने के लिए, कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन है वो SC/ST के एंटरप्रेन्योर्स का रहे। तो ये जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव था SC/ST हब को बनाने के लिए। देखिए साहब ने, हमारे जो सीनियर बॉस थे, उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया। मैं यहाँ पे 5 पॉइंट आपके सामने जो नए इंटरवेंशंस हैं, जब लास्ट ईयर प्रोग्राम हुआ था तो मैंने उसमें भी ये इंटरवेंशंस को इंक्लूड किया था। मैं आज का जो मेरा सेशन है नेशनल SC/ST हब का, मैं 5 इंटरवेंशंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने 5 इंटरवेंशंस को ज्यादा एम्फेसाइज किया है, जिसमें बैंक लोन प्रोसेसिंग
इसके चार्जेस जो है रिम्बर्समेंट किए जाते हैं। यदि आपने अभी हमारे कदम साहब बता रहे थे कि आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको वेरियस फैसिलिटीज है, उनके थ्रू आपको लोन मिल सकता है अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स के अंदर में। तो आपको जब बैंक लोन प्रोसेस करती है, लोन आपको डिस्बर्स करती है, तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट दे चार्ज एज प्रोसेसिंग फीस। तो नेशनल SC/ST हब जो है रिइंबर्समेंट करता है बैंक लोन प्रोसेसिंग चार्जेस का 50% अप टू द हायर सीलिंग ऑफ 1 लाख रुपीस, अप टू दी 1 लाख रुपीस। तो आप वो जो है बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में या बैंक गारंटी देते हैं, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। जब परफॉर्मेंस बैंक गारंटी बैंक इश्यू करती है तो दे चार्ज समथिंग, सम अमाउंट दे चार्ज एज ए प्रोसेसिंग फीस। तो जो बैंक गारंटी आप बैंक में जमा कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग फीस जो आप दे रहे हैं उसके रिइंबर्समेंट का क्लेम भी आप ले सकते हैं, वो भी 50% तक आपको मिलेगा एट हायर सीलिंग ऑफ 1 लाख रुपीस। इसके अलावा आप कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की जो है मेंबरशिप ले सकते हैं, उसका जो हायर सीलिंग है 20,000 रुपए है, वहां तक का आपको 50% रिइंबर्समेंट मिलेगा और यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल, आपने यदि किसी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप लिया, उस मेंबरशिप की कॉस्ट थी 10,000 रुपए, तो 50% में आपको 5,000 रुपए के लिए आपको रिइंबर्समेंट कर दूंगा और अभी बैलेंस जो है 15,000 है। तो यू कैन आप दूसरे किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप ले लीजिए, उसमें भी आपको रिइंबर्समेंट 10,000 रुपए का ये हायर सीलिंग है, तो आप ये फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा और मिनिस्ट्री का जो मेन एम्फेसिस है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, कि हम ऑलमोस्ट एज आई ऑब्जर्व्ड इन माय लास्ट टेनर कि जो मोस्ट ऑफ द SC/ST के एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसका एक बहुत रिक्वायरमेंट है, अपना जो स्किल्स है उनको एज करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने ऐसे 50 टॉप इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया। आप उसमें एक दिन से लेके मतलब 7 दिन से लेके 30 दिन का कोई भी शॉर्ट टर्म का कोर्स कर सकते हैं। लिस्ट जो है वो अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर में, और जो भी फीस होगी दैट विल रिइंबर्स बाय द नेशनल SC/ST हब। इसके अलावा आप आपके प्रोडक्ट को उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए आप किसी भी तरीके का कोई टेस्टिंग आप उसमें कराते हैं NABL एक्रेडिटेड लैब से और आइदर नॉन NABL एक्रेडिटेड लैब से। आप रॉ मटेरियल है, गुड्स है, आपका सेमी फिनिश्ड गुड्स है, आपका जो डेली की जो आपकी सप्लाईज है उसमें यूज होता है, और आप यदि इसकी भी कहीं पे टेस्टिंग कराते हैं तो इस टेस्टिंग का भी 50% का आपको फीस है जो रिइंबर्स कर दिया जाता है। इन ये जो 5 स्कीम्स मैंने आपको बताई है, ये दिस इज कॉल्ड द न्यू इंटरवेंशंस लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME अंडर द नेशनल SC/ST हब। इसमें आपको 50% का सभी में रिइंबर्समेंट मिलेगा। इन 5 स्कीम्स में एक चीज कॉमन है कि आप यदि कोई भी इन 5 में से कोई भी फैसिलिटी अवेल करते हैं तो आपको विद इन दी 45 डेज हमारे ऑफिस में जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का बिल्कुल एक सिंपल सा एक 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है और आपको कंसर्न डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ में जमा करना है। तो विद इन दी ड्यू प्रोसेस जो भी जितना हमारा एक बैक ऑफिस में टाइम लगता है उतने टाइम में हमारा हेड ऑफिस से प्रपोजल अप्रूव होता है और वी विल रिइंबर्स। एक्चुअली ये आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें से लास्ट ईयर कुछ पार्टिसिपेंट्स आए थे और उन्होंने शायद बैंक से लोन लिया था। हम लोगों ने ऑलमोस्ट मेरे साथ 13-14 पार्टिसिपेंट्स एक ग्रुप में आए थे, हम लोगों ने सभी का, और मेरे हिसाब से मुझे जहां तक याद है तकरीबन 2,80,000 रुपए के आसपास से कुछ प्रोसेसिंग फीस का अमाउंट था दैट वी हैव रिइंबर्स्ड टू द यूनिट। तो ये जो स्कीम्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आज पार्टिसिपेंट्स मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन्वॉल्व हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया तो मैं वहां पर भी ये स्कीम्स को पोस्ट करूंगा। आप प्लीज कम फॉरवर्ड। आप यदि किसी ने कोई लोन आप लेना चाहते हैं, इवन कदम साहब जो है कैनरा बैंक में, हमने लास्ट ईयर भी यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स जो है सैंक्शन के लिए दिए, हमें तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमें बस एक ही चीज का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, हमारे पास पार्टिसिपेंट्स जो है वो बहुत कम। जागेश जी ने बोला कि कुछ 450 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, बट उसके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास में कितना रिस्पांस होना चाहिए, तो वो रिस्पांस हमारे पास एक्चुअली बहुत ही कम था। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कुछ 20 से 25 लोगों ने ही हमारे ऑफिस में अप्रोच किया। ठीक है, एनी हाउ एवरी डे इज अ न्यू स्टार्ट। मैं चैट बॉक्स में मेरे ऑफिस का नंबर, मेरा डायरेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आपके साथ में शेयर करता हूँ, इंक्लूडिंग एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस हमारे वेबसाइट का। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कम फॉरवर्ड आइए, हमारे ऑफिस में आइए। क्या स्कीम से हम लोग आपको किस तरीके से बेटर सपोर्ट कर सकते
सकते हैं, बेटर गाइड कर सकते हैं, मैं आपको फर्दरली बताऊंगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं कंटिन्यूअसली पोस्ट आपको करता रहूंगा। देखिए ये जो है न्यू इंटरवेंशंस हैं। इसके अलावा भी आप यदि इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में या डोमेस्टिक एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इट इज 100% फ्री फॉर द SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। आप वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, बट इन द करंट सिनेरियो इन द पैंडेमिक सिचुएशन ये अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से कुछ हमारे पास में आए। जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने उस फैसिलिटी को अवेल किया है, तो दे नो द बेनिफिट कि 100% एक बड़े एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है ऑलमोस्ट 1.5 लाख 2 लाख रुपए की सब्सिडी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, तो आप वो फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे CGM साहब ने जिक्र किया था कि जो एक हमारा खुद का वेब पोर्टल है MSME-shoppingmart.com, तो आप उसका मेंबरशिप ले सकते हैं। दिस मेंबरशिप इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। आप सिर्फ अपना एक सिंगल पेज का एप्लीकेशन फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन नंबर, GST, कंपनी प्रोफाइल के साथ ऑफिस में दे दीजिए। आप हमारे को ईमेल कर दीजिए स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स, वी विल एनरोल यू अंडर दिस स्कीम। आपको ढूंढ सकते हैं, पोटेंशियल सेलर को आप देख सकते हैं कि जो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं वो आप किसे सेल कर सकते हैं। आपको कोई रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो आप एक पोटेंशियल बायर को ढूंढ सकते हैं जहां से जिससे आप रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हैं। आपको टेंडर्स की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलते हैं। इवन दो कुछ ग्लोबल सिनेरियो में कुछ ग्लोबल टेंडर्स निकले हुए हैं या कुछ एक्सपोर्ट की कुछ अपॉर्चुनिटी, तो आप वो भी वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आज का जो टाइम है इट इज टाइम। हमने कभी नहीं सोचा था आज से 2 साल पहले कि मैं अपने केबिन में बैठ के आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एड्रेस करूंगा और आप लोग अपने घरों में बैठ के ऑफिस में बैठ के मुझे सुन रहे होंगे। बट ये पेंडेमिक में हमें वो भी सिखा दिया कि किस तरीके से भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है और जो ई माध्यम है, जो वेब का माध्यम है, वो काम कर सकते हैं। तो मैं वही अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो टाइम है, हमारा B2B का पोर्टल है, आप उसमें आपका सब वेबसाइट भी आप बना सकते हैं। उस वेबसाइट को आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो गए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसके ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी वहां जाके क्लिक करेगा तो ही विल कम टू नो एवरीथिंग कि आप क्या काम करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं। तो जो मेंबर्स लेना चाहते हैं, वो बेनिफिट उठाना चाहते हैं, वो प्लीज B2B में रजिस्टर करिए। मैं चैट बॉक्स में अपना पूरा डिटेल्स अभी देता हूँ। इसके अलावा एक जो मेजर स्कीम है, जब जो वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, ONGC इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। कंटिन्यूअस बेसिस पे वो लोग मटेरियल परचेस करते हैं। आप यदि उनके टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो दे चार्ज समथिंग फ्रॉम यू। दे चार्ज, आप टेंडर पार्टिसिपेट करने के लिए गए तो दे विल चार्ज यू एज अ फॉर द टेंडर की कॉस्ट आपसे लेंगे, टेंडर की एप्लीकेशन की, टेंडर फॉर्म की कॉस्ट। फिर आप जब जमा करेंगे तो EMD की कॉस्ट लेंगे, फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट की कॉस्ट लेंगे। तो इन सब को बैरियर को खत्म करने के लिए NSIC का एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम है। आप उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको टेंडर के सेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। आपको जो EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट उसको 100% आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, इवन दो यू विल गेट 15% ऑफ प्राइस प्रेफरेंस। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। देखिए यदि कोई जनरल कैटेगरी की यूनिट जो है वो ये रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो द कॉस्ट इज समथिंग अराउंड 15 to 20,000 रुपीज। बट बिकॉज ये स्कीम नेशनल SC/ST हब के अंदर में है तो हम सिर्फ आपसे एक नॉमिनल चार्जेस 100 रुपीज प्लस GST चार्ज करते हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आइए, अपने आप को रजिस्टर करिए नेशनल SC/ST हब के साथ में। आपको किसी भी चीज के लिए, इवन आपको टेंडर पार्टिसिपेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वी विल हैंडल यू, वी विल सपोर्ट यू। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन अभी देखिए कंपलसरी हो जाएगा 31 मार्च के बाद में, तो आपको उद्यम में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, आपको उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस। आपको किसी भी तरीके का बिजनेस एनालिसिस के लिए या कुछ आपको बैंक में प्रपोजल सबमिट करने के लिए कुछ आपको डिफिकल्टीज आती है तो इस केस में आप नेशनल SC/ST हब को जो है वो कॉल कर सकते हैं और हमारा असिस्टेंस जो है हमसे ले सकते हैं। तो ये सब सारी फैसिलिटी नेशनल SC/ST हब की तरफ से है। This is all about the NSIC and National SC/ST Hub. I will request all the participants to please come forward and visit our office at least once. तो मैं आपको और भी ज्यादा ब्रीफ कर पाऊँ, we conduct special vendor development programs, marketing workshop, e-tender marketing workshop on the regular
रेगुलर बेसिस. सो आई रिक्वेस्ट टू कि आप ज्वाइन करिए. जैसे ONGC परचेस कर रही है, उसी के साथ साथ में दूसरे PSUs जो है वो भी कंटिन्यूसली बेसिस पे प्रोग्राम जो परचेस करते हैं, और हम उनके साथ में भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आपको और उनको कनेक्ट करते हैं. तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हूँ. कभी भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा तो मैं डेफिनेटली आप सभी लोगों को बताऊंगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल SC/ST हब. मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री गणेशन जी का, GM-HR LRO RLO फॉर SC/ST, श्री सुनील सिंह जी का, श्री AP त्रिपाठी जी का, श्री KS पांडे जी का, श्री OP सिंह डायरेक्टर ONGC उनका, श्री VB शर्मा जी का, और श्री जागेश सोम कुंवर जी का, जिनके एसोसिएशन में हमने लास्ट ईयर भी हमारा प्रोग्राम किया था और हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था. सो थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. आई वंस अगेन थैंक यू टू गोखे जी, कदम साहब एंड हमारे CGM साहब. उन्होंने टाइम निकाला और उस टाइम में से आप सभी पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने एड्रेस किया. सो थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, सो नाउ यू कैन आस्क टू मी, सो आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस. यस, थैंक यू वेरी मच मालविया जी. आपने जो बातें कही है, एकदम बेसिक जो बातें कही है कि जहाँ भी हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको कुछ अगर दिक्कतें हैं तो दे मस्ट गेट इन टच विथ यू, योर ऑफिस, नेशनल SC/ST हब जो NSSH के अंडर में आता है. तो मैं ये चाहता हूँ कि बिकॉज यू पीपल आर वेरी सपोर्टिव, वेरी ओपन टू एवरीबडी, नो एवरीथिंग. तो हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं दे शुड अप्रोच टू यू. They can approach to us also in ONGC if anything is required from our side. Our MM team is there. अब डायरेक्टर साहब ने हमारे इतने कहा है कि यस, हमारे जो चीफ MM है दिल्ली में उन्होंने भी कहा है कि यस, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड अवेल दिस फैसिलिटी. जब तक आप हमारे साथ में संपर्क में नहीं रहेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं या हम कांटेक्ट नहीं करेंगे, या नेशनल SC/ST का जो यहाँ पे सेंटर है मुंबई में, ऑफिस है, हाँ, वहाँ अगर नहीं अब आप लोग जाएंगे तो फिर मुश्किल है ना थोड़ा. तो सर एक्चुअली मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाह रहा था. ये हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जो है, यदि ये लोग बेनिफिट नहीं लेंगे तो द होल पर्पस विल बी डिफीटेड. तो पार्टिसिपेंट्स आगे आए, अपना इंटरेस्ट शो करें और बेनिफिट ले. यही गवर्नमेंट भी चाहती है और ये हमारा भी ऑब्जेक्टिव यही है सर. हम सभी यही चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो हमारे लोगों का, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, MSCs को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी वही है. तो हम इसमें एक माध्यम बनना चाहते हैं. हमारे साइड से जो भी हेल्प होता है, जो भी असिस्टेंस लगता है, जो भी गाइडेंस चाहिए हमको, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच मालविया जी. ही वाज मिस्टर महेंद्र मालविया, इंचार्ज ऑफ नेशनल SC/ST हब ऑफिस मुंबई. और अभी सेशन में ओपन कर रहा हूँ आपके लिए, और you can raise your queries to all the dignitaries. Gokhe Saab is there, Mr. Ravi Kumar, Mr. Sunil Zode Saab is there, Mr. R.Y. Kadam Saab है जो बैंक के बारे में, कैनरा बैंक के बारे में बताएंगे, and also Malviya ji. Okay, so first question, Sunny Samudre, yeah, go ahead, unmute yourself, then ask your question. Sunny Samudre, unmute yourself, then ask your question. Next is hello. Yeah, go ahead. Hello. I have this question for Mr. Kadam. Mr. Samudra, can you start your video? Is it possible? Yeah, go ahead. Go ahead. I have this question for Mr. Kadam. Okay, my question pertains to the loan requirements for starting a business. And many a times it is that that we approach the bank, but then the banks straight away say that you're not eligible for this particular loan, or we are sorry, we cannot do this. So how can Canara Bank help us basically to get started? That is what I would like to know. Okay, thank you. Yeah, Kadam Saab, please respond to this query. Kadam Saab. Kadam sir, are you there now?
मालविया जी क्या नाम से थे साहब यार? सर गैलेक्सी 6 से प्लस से थे सर. एक मिनट. हाँ, गैलेक्सी. या करेक्ट. या कदम साहब, या प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेरी प्लीज. Unmute yourself, then go ahead. Unmute कीजिए कदम सर. उनका फिर प्रॉब्लम है लगता है कुछ. It's all right. We can always get back again to Kadam. We can continue the program so that others are not, affected. Oh yeah, I think so. Let us wait for some time. या कोई बात नहीं. दूसरा सवाल ले लेते हैं. या ठीक है. मिस्टर अनिल कुमार या मिस्टर अरुण कुमार, या go ahead please. Unmute yourself, then go ahead. Mr. Arun Kumar. Mr. Arun Kumar, are you there? Mr. Amol Dhavre. Mr. Anul Dhavre, yeah, go ahead. Mr. Amol Dhavre. Unmute yourself, then go ahead. Ask your question. I think it's lunch time, no? So people must be busy in lunch. We are really very sorry. आपको चाय भी नहीं पिला सकते, तो ई चाय पी लेते हम लोग आज. ई चाय का अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ये मीटिंग में ई चाय. या सबको चाय पिला रहा हूँ मैं, ई चाय. Okay, Mr. Nikose, are you there? Are busy in lunch? Mr. No, I'm not busy in lunch. I'm driving. Oh, you are driving. Yeah, but then still I can, ask you the question. Yeah, go ahead. Ask. Okay, so I had actually applied in the month of July, August for a PMEGP under the SC/ST scheme for the 50 lakhs. I went to the Bank of Maharashtra. They have, kept me waiting for 4 months. Then say we cannot approve your loan for any reason. We can't give the reason. And then they send me the letter saying that it is unapproved due to some technical issues. Okay. So, all those schemes we are heard of. Okay, everything is good. I have spoke to DIC also. Okay, District Industries Center. And those people also, sanctioned the project, which was a food project in Pune. Okay, and we had done the same project for the government, which was number 4th in all over India, and which is recommended by the tribal department also. It is applauded by the entrepreneurship, tribal entrepreneurship. We stood 4th in all over India. But still, the bank has rejected it because I was behind them to pass it as early as possible because it was a period time. So I waited for 3 or 4 months. But then just I was behind them, they rejected it. And they have not given any reason for that because it was all has been approved by the DSC department. Okay. And, all those schemes are good. At the end, it looks good. All says that it is for the SC development and all, but nothing is getting approved. Even the DSC person also says that bank don't approve it. ठीक है. There are lakhs and lakhs of people who are having this problem. Yeah. Okay. ठीक है. What is the solution for this? Yeah. Just wait. ये मालविया जी. यस सर. कदम साहब नहीं आ रहे यार. सर एक काम करते हैं सर, मैं कदम साहब का जो नंबर है सर वो यहाँ चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देता हूँ सर. That would be better, I think. Yes. हाँ, so what the participants will do कि उनसे continuously बात कर लेंगे. इवन मैं उनके ग्रुप में भी हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में. So I will drop his card there. That would be better. Yes, correct. Yes. Yeah. ठीक है निकोसे जी. We will be sharing his number, Kadam Saab's number, mobile number, office number. So you can get in touch with him and you ask your queries regarding
दिस लोन फैसिलिटी, जो आपने जो कंसर्न जो रेज किया है, ठीक है, ओके. I think he is not there. Okay. Anyway, next is Mr. Anil Pandey. Yeah, go ahead, Pandey ji. Yeah, good afternoon and Jai Bhim to all of you. Jai Bhim, Jai Bhim. Go ahead. Yeah. Sir, myself Dr. Anil Pandey. I'm a professor with University of Mumbai's Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies. Ji. I really do not have any query, but I wanna just pass on a message to very esteemed guest and a fantastic audience that Jamnalal Bajaj is an institute where we always look for the information which you have shared, which all dignitaries have shared today. Yeah. And very nice session which has given information to all budding and existing entrepreneurs to grow up. Ji. The schemes which have been run by your esteemed organization ONGC and the government of India along with all state government, I expect that if it is routed through us, GEVDM-2020, because we have an incubation center where it's a public institution. There are students, not only open candidates, but result policy, reservation policies, used exhaustively. And there is a quite better chance of having the budding entrepreneurs who are, most of them are engineers. So if you allow me to contact you and other dignitaries to have a collaborative approach to build the nation and build the community, that will be my humble request. Sure. Pandey Sahab, we will work together. If you have any, we'll have a meeting, okay, in near future with our team also, National SCST have also, Zode ji also, and all the even banks will call them. We'll have a meeting and we'll work out the plan. We'll work out the strategy, then how to go about it, no? And we are really very hopeful that something good will come out of this meeting. Yeah. Okay. I'm obliged, sir. Thank you so much, sir. Pandey Sahab, can you share your number in the chat box if it is possible? Yes, sir. Yeah, please. Right now. Yeah, please. Thank you. Thanks Thank you for joining. Yeah. Next is Miss Sujata Jadhav. Yeah, go ahead. Madam Sujata, go ahead. Yeah, go ahead, madam. Good afternoon, sir. Jai Bhim. Good afternoon. सर मैं BSIT इंडस्ट्रियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से हूँ. मैं फर्स्ट टाइम ये मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ, तो मुझे ये पूछना है कि जैसे ONGC वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए ये मीटिंग है, तो ये वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और ONGC जनरली यानी किस प्रोडक्ट के लिए अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं ONGC में? करेक्ट मैडम. अभी यू बी विथ अस. अभी हमारा ONGC का जो टीम है ना, हमारी ONGC की टीम है जो MM डिसिप्लिन के हैं, जो उसी बारे में डील करते हैं, वो आपको इस बारे में बताएंगे. जस्ट वेट फॉर सम टाइम. ठीक है? ओके. या प्लीज. थैंक यू. ओके. नेक्स्ट इज सीमा शर्मा जी. या गो अहेड मैडम सीमा शर्मा. या गो अहेड. Yeah, good afternoon, Jai Bhim to all. Yeah, good afternoon. बोलिए मैडम. My question is to Malviya sir. Madam, can you start your video if it is possible? Yeah, sure. Yeah, please start your video. Yeah. Okay, go ahead then. Yeah. So my question is to Malviya sir. For SC women entrepreneurs, do you give the guidance from the idea generation as well? Because I would like to start something new business in MSME. Then starting from scratch, because where we lack is guidance from the idea generation to the execution. So that time we need some expert advice. So does NSSHO help us in that regard? Thank you सीमा जी for asking this wonderful question. At least मैंने अपने जो speech था मेरा, उसमें मैंने बोला भी था कि we do the capacity building programs on continuously basis. So I'll request you to please come down to our office once, so that I'll explain you how can you go forward. आप किस तरीके से अपने आप को थोड़ा पॉलिश करके, कुछ आपको लग रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग में हम आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. देखिए, ऑन द रेगुलर बेसिस पे वी डू द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स विद IDMI इज देयर,
Indian Institute of Packaging is there, MCD Maharashtra Center for Entrepreneurship Development is there. So they do the residential programs, even non-residential programs. So you can join that program at free of cost. और कुछ ज्यादा आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर ड्रॉप किया हुआ है विद एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेरा डायरेक्ट टेलीफोन नंबर के साथ में, तो यू कैन कांटेक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम. Okay, sir. Thank you, Okay, so madam. Okay. Thank you so much. Yeah. Yeah. Thank you. Happy now? Okay. Thank You need to get in touch with us. अगर कुछ भी क्वेरी है ना तो NSSO है या ONGC है, we are there for you. कुछ भी क्वेश्चन, कुछ क्वेरी है आपका तो we are always there. Okay, thank you. नफीसा मैडम, या बहुत देर से आप उठा रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए. या जस्ट अ मिनट. हाँ, या बोलिए मैडम. नहीं, आप अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए. हाँ. Thank you for this opportunity. Yeah, go ahead. We are again an MSME like the other MSMEs who are perhaps part of the audience. We deal extensively with ONGC. And our request as an MSME is twofold. One is, sir, ONGC has been very kind in many of the contracts where there is the LD clause. They have given 3 months extension without any documentation, etc. All MSMEs with existing contracts, saying that for 3 months we are extending the contract and no LD will be levied. We are very grateful for that. But sir, 3 months is not enough. As you know, even today, that you yourself are not coming to office in full strength. Other government departments whom we go to, whom we need, like licenses, etc., are not coming to their offices in full strength. And therefore, the 3-month window without levy of LD given by ONGC on all existing contracts needs to be extended by another 3 months, that is 6 months. Okay. That is my first humble request to everybody at ONGC. You have many bigwigs here, many stalwarts here. With folded hands, I request you that please give us an additional 3 months without any documentation. As you know, the lockdown is not lifted even today. My second plea is, again, as an MSME who have existing contracts with you, when we quoted for those contracts, COVID-19 was nowhere there. Today, we are grappling with COVID-19. We have to make all engineers quarantine for 7 days before they go on your platform and your rigs. Very often, we send them for quarantine. COVID tests are done. They go on your rig. Somebody has got COVID or corona, and they are all sent back. And the process starts all over again. Not only is it time consuming, so therefore the LD clause needs to be extended, but also, sir, the cost. It is extremely expensive, and we have not budgeted for this cost when we quoted for your tenders. So I would request a big company like ONGC, if they could would allow MSMEs like us to quarantine at the cost of ONGC in whichever hotel or institution they tell us, and then we are happy to, we'll bear the cost of the salary of the person, etc. But if the lodging, boarding can be provided by ONGC, because it is at your request that we are going into quarantine, it would help MSMEs like us tremendously. Thank you, sir. Thank you, madam, for your suggestions. Mr. Nikhil Gaur Saab is there. He is our in the corporate MM office. He must have noted your points. Gaur Saab, अनम्यूट कीजिए, बोलिए जरा. हाँ योगेश सर, मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं एंड आई वुड कन्वे टू आवर पॉलिसी टीम. जी फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द सजेशन. यस सर. थैंक यू गौड़ साहब दिल्ली में हमारे पोस्टेड है अभी. ही इज आवर गुड फ्रेंड. वी वर देयर इन आसाम टुगेदर. नाउ ही इज पोस्टेड इन दिल्ली एंड आई एम इन मुंबई. बड़ा लंबा गैप है, बट हम दोनों का दिल बहुत करीब है. थैंक यू. No sir, we are there for all kind of possible supports. Thank you sir. Yeah. Okay, next is Mr. शिवाजी गायकवाड़. 1 or 2 questions हम लोग लोगे. व्यूअर्स एक बात ध्यान में रखिए, अभी एज फार एज ONGC इज कंसर्न, आप अभी उसके सवाल मत पूछिएगा. पहले हमारे ONGC का टीम का प्रेजेंटेशन होने दीजिए, उसके बाद में इफ यू हैव फर्दर क्वेरी देन यू कैन आस्क. अभी MSME के बारे में, NSSHO के बारे में
NSSH के बारे में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछिए प्लीज। हाँ, ओके, सो दैट वी सेव आवर टाइम। ओके, मिस्टर यादव, कमलेश यादव, गो अहेड। Mr. Kamlesh Yadav, are you there? Mr. Kamlesh Kadam, I think. Yeah. Mr. Kamlesh Kadam. Yeah, go ahead. हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए कदम जी। सर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। हाँ तो जी, हो जाएगा MM आप, हाँ वही मैं बोल रहा था कि ये जो रिलेटेड टू ONGC जो क्वेश्चंस है ना आपको, आपके उसको रिजर्व रखिए अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए। हमारे MM के टीम पहले प्रेजेंटेशन करेगी ना, उसके बाद में यू कैन आस्क क्वेश्चंस। नो, ठीक है ना, पहले मत पूछिए रिगार्डिंग एज फार एज ONGC इज कंसर्न। जिन लोगों ने भी हाथ रेज हैंड किया है ना, वो दे मस्ट हैव नोटेड माय पॉइंट। तो अगर वो रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है एज फार एज NSSO इज कंसर्न, मालविया जी, और या बैंक रिलेटेड है, तो आप यू कैन लोअर योर हैंड वॉलंटरीली। प्लीज डू दैट, बिकॉज हम लोगों को थोड़ा समय का भी ध्यान रखना है, और आप लोगों को भूख लगी है जैसे मुझे लगी है, तो अभी मैं आपको खाना नहीं खिला सकता। अगर आप ONGC में आते तो आपको बढ़िया सा खाना खिलाते हम लोग, जैसे लास्ट टाइम खिलाया था। हाँ ना, चाय पिला सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप घर में पी लीजिए हमारी ओर से। थैंक यू। ओके, नाउ मिस्टर मयूर काले, या गो अहेड प्लीज, मिस्टर मयूर काले। Hello. Go ahead, yeah. Yes, sir. Am I audible? Yeah, you are audible, but your video is not there. Please switch Okay, on your video. I'll start my video. Yes. Yeah, you can see me, right? Yes, go ahead, yeah. Okay, sir, I want to ask a question to Mr. Malviya. जी. Sir, अभी कैसा, अभी recently I did my second renewal of NSIC. Okay. एक सेकंड सर, मेरे से कुछ एक सेकंड, मैं कॉल पे कर रहा हूँ सर, आप एक सेकंड। हाँ, मालविया जी आपके लिए सवाल है, जरा थोड़ा सुनिए जरा। या यस, बोलिए मयूर जी। हाँ जी, हाँ सर, कैसा है ना, मैंने अभी रिसेंटली NSIC का जो सेकंड टाइम रिन्यूअल किया है, पहले भी एक बार हुआ था, अभी सेकंड रिन्यूअल हुआ है रिसेंटली। ओके, तो जब भी व्हेन आई स्टार्टेड द फर्स्ट रिन्यूअल ना, तो एक बोलते ना, एक अलग सी मोटिवेशन होती है कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बट आफ्टर सम टाइम जब मैंने वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में पढ़ा और अलग अलग जगह पे अप्रोच किया, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट हुआ या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, तो उन्होंने सडनली दे सेड कि दिस इज नॉट समथिंग which we will consider, this is a central government policy। तो ऐसा क्यों है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी वो लोअर गवर्नमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? नहीं, देखिए मयूर जी, जहां तक बात है, देखिए ये इट इज अ गजेट नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ MSME की गाइडलाइंस हो, सभी जो PSUs हैं, इवन मिनिस्ट्रीज हैं, उनको ये फॉलो करना है। इनकेस यदि कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट यदि उसको फॉलो नहीं कर सकता एक्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ करके, तो आप हमें लेटर लिख सकते हैं स्टेटिंग की भाई हमने ये टेंडर भरा हुआ है, हमको ये जो NSIC के सर्टिफिकेट का बेनिफिट है या जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है उसका हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो व्हाट वी विल डू सर कि हम आपके बिहाफ में जो कंसर्ट बाइंग एजेंसी है, हम उनको लेटर लिखेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई ये सो एंड सो XYZ यूनिट इज रजिस्टर्ड अंडर नेशनल SC/ST हब NSIC। सो आप इनको जो भी जो एज पर दी गजेट नोटिफिकेशन जो प्रोविजंस बनाए गए उसके तहत आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा मयूर जी, फर्दर आपके साथ में कभी कुछ ऐसा होता है, कहीं पे आपका कुछ प्रपोजल रिजेक्ट होता है या कोई आपको बेनिफिट जो अलाउ है जो आपको नहीं मिलते हैं, तो आप हम लोगों को लिख सकते हैं सर। ओके सर, डेफिनेटली चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है वही अप्लाइड होगा, राइट? देखिए सर, मैं आपको एक चीज और भी ऐड करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की जो बॉडी है, ये जो जनरली क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, कुछ डिपार्टमेंट्स फॉलो करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स नहीं फॉलो करते हैं। लास्ट मंथ में हमारा जो यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ऑफ जो DIC है, उनसे श्री वेणुगोपाल रेड्डी जी से हमारी इसी विषय को लेकर के डिस्कशन हुआ था कि भाई जो गवर्नमेंट ने एक बार पॉलिसी ली है, BMC इज द वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग एजेंसी, तो एटलीस्ट आप BMC को बोलिए कि NSIC को जो सर्टिफिकेशन है उसको वो लोग कंसीडर करें। तो उन्होंने BMC को लेटर भी लिखा हुआ है और इसके पिछले साल भी लास्ट ईयर
जब यहाँ पे शुरुआत जी थे ज्वाइंट डायरेक्टर, तो उन्होंने भी बीएमसी को लेटर लिखा हुआ, और इवन जो बाकी की जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर्स में बॉडीज है उनको भी लेटर लिखा हुआ है। आप यदि चाहें तो सर लेटर की कॉपी मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको शेयर कर सकता हूं, और इनकेस यदि वहां पर भी आपको नहीं मिलता है तो यू कैन कांटेक्ट टू दी स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मयूर जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप सभी मोस्ट ऑफ दी हैं जो बोलेंगे कि सर हमको ये नहीं मिलता, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी एजेंसीज नहीं दे रही है, बट यदि हम किसी हमारे सीनियर ऑफिसर्स को या हायर अप्स को हम ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे तो ये काम बनेगा नहीं। देखिए सर क्या होता है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इज दी फॉर्मुलेशन एजेंसी, उन्होंने एक फॉर्मुलेशन एक बनाया है अपना, और एक गाइडलाइंस बनाई है, और उसको बोला है कि आप फॉलो करिए। हम लोग एनएसआईसी नेशनल एससी अपनी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई है हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। यदि कहीं पे कोई इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं या कोई नहीं दे रहा है तो प्लीज राइट टू अस। गोखे जी इज देयर, डायरेक्टर एमएसएमई डीआई इज देयर, सुनील सर इज देयर, तो आप यदि कुछ ऐसा होता है तो यू प्लीज राइट टू अस। ओके सर, श्योर, डेफिनेटली। ओके मयूर जी, हैप्पी नाउ? Yes sir, thank you. You got your answer, no? Yes, sure. Thank you so much. Very well, very good, very nice. Thank you for participating. Okay, next last two questions, brief में थोड़ा question थोड़ा short रखिएगा please. Now Mr. Rajendra Gaikwad, yeah, go ahead please, Mr. Rajendra Gaikwad. Unmute yourself, then go ahead. Mr. Rajendra Gaikwad, unmute yourself, then go ahead. अनम्यूट करा गायकवाड़ जी। गायकवाड़ जी, सर जी ये शिवाजी गायकवाड़ जी का क्वेश्चन ले लीजिए, ही इज ट्राइंग टू कॉल मी, ही हैज सम क्वेश्चंस। कौन? शिवाजी गायकवाड़। वो राजेंद्र गायकवाड़ का देख रहा था मैं यहाँ पे तो नाम। नहीं, एक शिवाजी गायकवाड़ जी भी हैं, वो भी काफी देर से। शिवाजी गायकवाड़ तो उनका हैंड रेज नहीं है। कोई बात नहीं, एक मिनट, लेट मी चेक। शिवाजी गायकवाड़, या शिवाजी गायकवाड़ जी, अनम्यूट योरसेल्फ, देन गो अहेड। मिस्टर शिवाजी गायकवाड़, जल्दी कीजिए। हेलो, आ रहा है आवाज? आ रहा है? बोलिए। सर मैं शिवाजी गायकवाड़ बोल रहा हूँ, मालवीय जी सर से तो मैं हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ जी। क्या होना चाहिए कि एनएसआईसी के जो बेनिफिट्स है, एक्चुअल क्या क्या बेनिफिट्स है, और ये मैं अभी मिंट में काम करता हूँ, मैंने मालवीय जी से मैंने एक लेटर भी डाला था, मगर वो जो कंपनी है कोई रूल्स फॉलो नहीं करती है। हम लोग ने लेटर भी डाला है, जो कि हम लोग टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर, मगर जो 25% एमएसएमई को जो उन लोग का रिजर्वेशन है, और उसमें से 4% ओनली फॉर द SC ST NSIC के लिए है, मगर कोई भी कंपनीज 4% NSIC के SC ST के लिए देता ही नहीं है। तो मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि 4% मीन वो कंपनी कितना, कहां से, मतलब कैपिटल में से ये करती है, क्या टेंडर में से करती है, क्या करती है। मेरा बहुत बार मिंट के साथ में बहस हुआ है ये बात के ऊपर, मैं पर्सनली परचेज ऑफिसर से जाके भी बात किया हूँ। अभी मालवीय सर ने मैंने टेंडर भरा है, उसमें मालवीय सर ने लेटर भी दिया मिंट को, अभी तक वो कंपनी ने रिप्लाई भी नहीं दिया है। तो मतलब ये NSIC इतना बड़ा फॉर्म रजिस्टर करके अगर कोई सुनता नहीं है तो उसका क्या फायदा है। SC ST हक के लिए अपन इतना बड़ा सा ये मीटिंग अरेंज करते हैं, ये करते हैं, और बोलते हैं 25,000 करोड़ रुपए का ये है, कोई पार्टिसिपेट। गायकवाड़ जी, आपका जो कंसर्न है उसके ऊपर मालवीय जी अभी जवाब देंगे। या मालवीय जी, गो अहेड, बोलिए। सर शिवाजी जी देखिए, एक्चुअली कैसा है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी आपने जैसा बताया कि भाई मिंट जो है हमको जो बेनिफिट्स है वो नहीं दे रहा है, तो हमने आपके अगेंस्ट में, आपके बिहाफ में हमने मिंट को लेटर भी लिखा। एक बार एक काम करते हैं सर कि मैं आपके लिए इतना जरूर कर सकता हूँ कि आप ऑफिस आइए, जो मिंट के ऑफिसर्स हैं उनसे एक बार आप अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपके साथ में चलता हूँ सर। एक बार देखते हैं कि देखिए सर हम उनके हायर अप्स को लिखें, फिर वो कुछ और बात है, इससे पहले एक बार हम लोग चल के उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे उनके साथ में कनेक्ट करिए, क्या वो कुछ बीच का रास्ता बताते हैं, किस तरीके से क्या उनकी
कुछ उनको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो आप एक बार उनसे मेरे को कनेक्ट करिए शिवाजी जी, डेफिनेटली वी आर हियर टू सपोर्ट यू, जिस तरीके से भी लगेगा विल सपोर्ट सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर क्या है, सुनो ना सर, जरा क्या मालूम है क्या, एनएसआईसी का जो ST हब लोग है ना, उनके लिए एक अलग पोर्टल होना चाहिए जो टेंडर के लिए है, कि वो कंपनी को बोलना चाहिए कि अभी जेम सरकार ने निकाला है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, वो सब कंपनी उसमें से ट्रेडिंग करती है। अगर ऐसा कुछ SC ST लोग के लिए स्पेशल निकाले और वो कंपनी को बोले कि भाई आपका कोई रिक्वायरमेंट है आप इसमें डाउनलोड करें और फिल करें, तो वो ज्यादा बेटर होएगा, तभी जाके इन लोगों को कुछ ग्रोथ होएगा और कुछ सक्सेस होएगा। नहीं तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये सब कुछ करके मेरे को कुछ फायदे नहीं है। बिल्कुल शिवाजी जी, मैं एक आपका सजेशन, मैं आई इम्प्रेस्ड विद योर सजेशन, आपका बहुत अच्छा सजेशन है। मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि नेशनल SC/ST हब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में डायरेक्टली सुपरविजन में काम करता है। MSME जो है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, वो हमारी जो है हायर अप्स हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना सजेशन जो है एक बार उनको जरूर दीजिए। यदि उनको लगता है, दिल फील कि इसमें कुछ आगे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली विल डू। हमें जिस तरीके से आगे से गाइडलाइंस मिलेंगे, हम सेम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आपने सजेशन उनको जरूर लिखिए सर, आप प्लीज। ओके सर, ओके, थैंक्स। मैं आके मिल लेता हूँ सर आपको। हाँ, एक बार मिल लीजिए ना गायकवाड़ जी। ओके सर, ओके, ओके, थैंक्स। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा गड़बड़ है। मिस्टर सुयोग दानी, ही इज जॉइनिंग फ्रॉम कुवैत। या सुयोग, गो अहेड। Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon. My name is Suyog Dani. Sir, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली MSME से कंसर्न है, so to whom I should ask? हाँ, MSME से है ना, तो अभी है ना आपने या जोड़े साहब भी है, देन अपने मालविया जी है, देन गोखे साहब भी इज आल्सो देयर। तो you go ahead, ask your question. Okay. So currently I'm in Kuwait now with the Kuwait oil company, but I was in India, so I was doing some oil and gas business consultancy. तो सर एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि MSME जो कंपनीज है तो इंडिया में, तभी आत्मनिर्भर भारत के इसके हिसाब से मेनी फॉरेन कंपनीज एंड टेक्नोलॉजी इज इनवाइटेड इन इंडिया and they are directly doing a business with the ENPs, because ENPs require the new technology, new services, which is not in India. So that is the main concern कि अगर आप मिडल ईस्ट में कोई भी कंट्री में देखेंगे तो एवरी कंट्री हैज देयर रूल कि कोई भी फॉरेन की कंपनी अगर आके आपका टेंडर लेती है या बिजनेस करती है तो उसको आपको लोकल कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना होता है विद सम शेयर परसेंटेज। So my suggestion is that if we can do it, that अगर कोई भी फॉरेन टेक्निकल कंपनी इंडिया में आती है तो उसको मैंडेटरी MSME कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट करके ही ENP कंपनीज के टेंडर या इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाए। सो अगर ऐसा हो गया तो वी विल गेट अ प्लेटफॉर्म एंड व्हिच कैन ग्रो द MSME वेरी इजीली। या ओके सुयोग, कौन मालविया जी कौन जवाब देना चाहेगा इसका? सुयोग जी का जो क्वेश्चन है सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या प्लीज? अच्छा, ओके, मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आती है, क्योंकि ENP कंपनी को जो है मेनली जो टेक्निकल सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जो भी ONGC के जैसे कंसल्टेंसी के टेंडर है या फिर किसी और भी कंपनी के है, तो उसके लिए फॉरेन कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी है तो दे कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट टू ENP। बट अगर आप में मिडल ईस्ट में या फिर कहीं पे भी किसी भी कंट्री में आपको बिजनेस करना है ना, तो फॉरेन कंपनी को इंटर करने से पहले यहाँ की जो लोकल कंपनी होती है उसके साथ पहले टाई अप करना पड़ता है विद शेयरिंग सम परसेंट ऑफ बिजनेस, देन ओनली दे कैन पार्टिसिपेट इनटू द टेंडर एज अ लोकल कंट्री। तो मेरा सजेशन या फिर पॉसिबिलिटी ये था कि अगर हम लोग इंडिया में MSME को इन फॉरेन कंपनियों को पार्टिसिपेट करने से पहले हम लोग मैंडेटरी कर दे कि MSME कंपनियों के साथ इनको पहले कुछ टाइप करना पड़ेगा या लोकल कंटेंट परसेंट शेयर करना पड़ेगा, तो वो मेरे ख्याल से MSME के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। क्योंकि MSME
completely agree with you, सुयोग जी, completely agree with you. Again, it is a policy matter. देखिए सर, क्या होता है ना कि ये policy formation की body जो है वो दिल्ली में बैठी हुई है. हम लोग तो उनकी जो उन्होंने जो नियम या कानून बनाए हुए हम सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं. योर एडवाइस एंड योर सजेशन इज वेरी गुड. मैं चाहूंगा सुनील सर प्लीज, बिकॉज सुनील सर हैज द गुड अप्रोच टू द मिनिस्ट्री और ही इज द राइट पर्सन. सो सुनील सर, मैंने जो मेरे स्पीच में भी ये कहा था कि ओवरसीज इंडस्ट्री मेंबर जो आज इस प्लेटफॉर्म पे है, उनको अगर इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ अगर जोड़ना है, तो जैसे काले जी ने कहा कि ये बहुत ही वैलिड सजेशन है. अगर आप केनिया में या दूसरे कंट्रीज में अगर आप देखोगे, तो जो बाहर का जो बिजनेसमैन है, उसको अगर उस कंट्री में बिजनेस करना है तो उसको 30% पार्टनरशिप देना होता है. या मिडिल ईस्ट में भी जैसे इन्होंने कहा कि वो बहुत ही वैलिड सजेशन है. आपने कहा कि जो 125 आइटम्स है जो इंडियन वेंडर नहीं बना पा रहे, अगर कॉलेज से अगर वेंडर्स वहां से अगर यहाँ टाइप करके अगर बना सकते हैं, तो आई थिंक इट इज वेरी गुड फॉर इंडियन इंडस्ट्री ऑल्सो. Yes. Both very valid suggestion, which I would request the participants, government organizations in this platform to write the government from their on behalf of their departments also, and we will also write to the government using our platform also. ओके. सुयोग जोड़े साहब जो है ना, वो हाई पावर कमेटी पे है ऑलरेडी, उसमें नेशनल ST हब में. सो ही विल टेक केयर ऑफ इट. ही विल वो लिखेंगे, और बाकी लोग जो है आप लोग भी लिखिए, तो सो दैट कि ये, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर जैसे बताया ना, तो इट हैज टू बी चेंज फ्रॉम द टॉप, राइट? करेक्ट नो? या, थैंक यू. ओके, नाउ आई थिंक बरडिया जी बहुत शार्ट में बोलिए. हाँ, मिस्टर दिनेश बरडिया, या गो अहेड. Hello. Yeah, go ahead. Hello. Yeah, go ahead, Bariyadi. Sir, to all, my name is Dinesh Beredia. I'm a senior manager in Bank of Baroda. Bank of Baroda. मैं हाँ actually कुछ question थे banking related, मैं भी answer दे सकता था, लेकिन I thought let it be with the concerned person who was giving lecture on that. But मेरा एक जो गायकवाड़ जी थे बीच में, जो उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ों में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि नया प्लेटफॉर्म वगैरह तैयार करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो जेम्स जो पोर्टल है, तो उस पोर्टल में ही अगर कुछ ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते, तो ऐसा एक टिक मार के फिर उसमें से कुछ सॉर्ट करके मॉनिटरिंग टीम जो है उसकी, वो उसको अलोकेट करे या उसको मॉनिटर करके उसको ये करे कि हाँ ये इतने लोगों ने अप्लाई किया था इनके पर्टिकुलर कैटेगरी में से, तो इनमें से कितने लोगों को अलर्ट हुआ. तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा. जेम्स में हम लोग रजिस्टर हो सकते हैं जो भी है वेंडर्स, और रजिस्टर होने के बाद वो उसमें मॉनिटरिंग टीम वो अलोकेशन हुआ या नहीं हुआ, तो वो एक सीधा इफेक्टिव मेथड रहेगा कि जानने के लिए कि हाँ ये चीज इनको इतने लोगों को अलोकेट हो गई है, जो टेंडर अलॉट होने थे हो गए हैं. तो जो अपना जो 4% का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया में हो सकता है कि कुछ लोगों में मतलब इट विल बिकम अनअवॉइडेबल फॉर एनी कंपनी कि इतने जो हमको प्रोक्योरमेंट चाहिए था उतना हमको इनको देना ही देना है. ये एक मेरा सजेशन था कि अगर उसके लिए अगेन मिस्टर आई थिंक जोड़े सर या आप में से कोई उसमें कुछ हेल्प कर सकते या देख सकते, तो हो सकता है कि उस पर कुछ काम हो सके. और दूसरी बात सर, मैं एज अ बैंकर में आई वुड लाइक टू टेल मेनी ऑफ पीपल हु आर क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्री सिक्योरिटी फ्री लोन. तो थोड़ा सर मैं एज अ बैंकर भी मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि नॉर्मली पीपल डू नॉट प्रीफर टू गो विद द कोलेटरल फ्री लोन इवन दो देयर इज अ स्कीम ऑफ CGTMS एक्सेट्रा. बट क्या है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि सर बैंकर फेसेस द डिफिकल्टी इन एट द टाइम ऑफ फेलिंग द लोन. तो जब वो होता है तो पर्सनल लायबिलिटी हो जाती है और दे पीपल बैंकर्स लूज देयर जॉब, देयर करियर गेट्स स्पॉइल्ड एक्सेट्रा. तो ये एक ऐसी चीज है जो CGTMS होने के बावजूद भी बैंकर नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो लायबिलिटी हो जाती है, वो इंडिविजुअल पर्सनल लायबिलिटी हो जाती है उस सैंक्शनिंग अथॉरिटी की जो लोन सैंक्शन कर रहा है. तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है जो ये क्वेश्चन पे शायद कंसर्न
शो कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि भाई बैंक में जाने के बाद हमको लोन में ये दिक्कतें आती है। तो एज अ बैंकर मेरा भी, अगर कोई मेरे पास भी आता है तो आई मतलब नॉर्मली वी डू प्रिफर लोन विद द कोलैटरल। या ठीक है, बर्थडे साहब। दिस इज माय सजेशन एंड क्वेश्चन। यस, थैंक यू फॉर योर सजेशन और गाइडेंस आल्सो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इनटू दैट फील्ड, नो, बैंकिंग। तो हमारे I'm in a startup. I'm in a startup team. I'm heading the startup in Okay. Bardya sahab, can you share your contact number, your details here in the? I will definitely share my contact number. I'll definitely share my contact. Haji. So that we'll get in touch with you then. Yeah. Okay. Sure, sure. Thank you. Last question. Precept engineering. Yeah, go ahead. Precept engineering, go ahead, please. Yes, sir. Boliye. Go ahead. Question is here. You can start your video first. Okay, just a minute, sir. Those who are asking question, they should start their videos first. Yeah, go ahead. My question is, why PSU asking for experience to MSc in tender, though they have authorization from OEM. And second question is, if MSc is registered as a service vendor, still he is not eligible for 20% and L1 plus 15% criteria. Thank you. जोड़े साहब, नहीं, हमने काफी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में गवर्नमेंट को लिखा है कि पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ये एमएसएमई पॉलिसी सही तरह से एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। और इसके बारे में वो बात सही है कि बहुत सी जगह इसका टेंडर डॉक्यूमेंट में उल्लेख भी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ये हाई लेवल पर से ही गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा कि इस बात की तरफ सही तरह से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी। अब उसमें पब्लिक सेक्टर का कहना यह होता है कि अगर हम लोग एक्सपीरियंस अगर नहीं मांगते हैं तो देयर में बी कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी प्रोडक्ट, बट इफ द वेंडर कैन प्रूव हिमसेल्फ दैट ही हैज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, तो वो जैसे ओएनजीसी ने ये सही पहल की है रिलैक्सेशन की, वो बाकी पब्लिक सेक्टर ने भी करनी चाहिए और इसको शायद हाई लेवल से ही इनिशिएटिव लेके या डायरेक्टिव्स देने होंगे। एक बात मैं कहना भूल गया था मेरे पहले की स्पीच में कि स्टेट गवर्नमेंट में भी किसी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट में और कॉर्पोरेशंस में ये पॉलिसी एप्लीकेबल है कि नहीं है उनको पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ क्लियर कहना चाह रहा हूँ कि हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में ये मैटर टेकअप किया है। शायद जुलाई या अगस्त 2016 में एक जीआर निकाला स्टेट गवर्नमेंट में और उन्होंने वहाँ एक्सेप्ट किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो स्टेट गवर्नमेंट में एप्लीकेबल है। और जहाँ कई वेंडर्स को लगता है कि उन्होंने जहाँ टेंडर भरा है और वहाँ अगर ये पॉलिसी नहीं दिखाई गई है या उनके टेंडर में अगर ये नहीं लिखा गया है कि एमएसएमई बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड, तो आप उस डिपार्टमेंट को लिखिए कॉपी टू इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर अफर्मेटिव एक्शन और जयेश सोमकेवर ऑन हिज मेल, तो हम लोग उस चीज को जरूर टेकअप करेंगे। इतना ही नहीं कि कारपोरेशंस में भी ये पॉलिसी एप्लीकेबल है, लेकिन कारपोरेशंस में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिहान का भी रिसेंटली एक सैनिटाइजेशन का टेंडर आया है, वहाँ पे ये टेंडर में ही ये एमएसएमई की पॉलिसी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। हमने उनके एचओडी से बात की कि सर ये पॉलिसी नहीं दिख रही है, तो उन्होंने वो उसमें बहुत अनिभिक्तता दिखाई। हम लोग अभी कल ही हमारा एक लेटर चले जाएगा उनका, तो सब मिलके जहां जहां आपको नोटिस हो रहा है कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी तरफ से भी ये मैटर टेकअप करना है और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को लिखना है कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। या ये टेकअप करना पड़ेगा सर। तो इसके बारे में सभी लोग अगर आगे आएंगे तो होगा। और विल हैव मीटिंग जोड़े साहब विद एनएसआईसी ऑफिसर्स, और हमारे ओएनजीसी का राव साहब भी है, उनका भी इनपुट्स हम लोग लेंगे, है ना। उसके बारे में क्या हमको करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर एमएससीज, तो वो हम लोग करेंगे। थैंक यू जोड़े साहब। Okay, so with this we come to end of this session, second session. जो MSME है, the NSIC National SC/ST Hub,
इट वाज वेरी इंटरेक्टिव सेशन, और हमारे जितने भी जो हमारे जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है। बैंक साइड से थोड़ा दिक्कत था आवाज़ में, बाकी ठीक है, उनका नंबर हम लोग शेयर करेंगे और उसके साथ में हम लोग संपर्क करेंगे। और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर दिनेश बरडिया, वो वॉलंटरीली खुद सामने आके उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया, सेशन दिया। और हमारे जोड़े साहब और बाकी रवि कुमार साहब है, अपने डायरेक्टर गोखे साहब है, मालविया जी, सभी का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे ओएनजीसी की ओर से कि आपने इतना समय दिया। और इट्स रियली मैराथन सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम, मैराथन जिसको बोला, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक चलेगा। डेफिनेटली हो सकता है उससे भी ज़्यादा चले, क्योंकि अभी 2 सेशन और बाकी है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ा हैव पेशेंस, और बीच बीच में कुछ थोड़ा खाते रहिए, सो दैट की एनर्जी इज मेंटेन्ड। ओके, सो मिस्टर सुनील देशपांडे, लिटिल वर्ड्स, बाकी मैसेज ज्यादा बड़ा, वोट ऑफ थैंक्स मिस्टर सुनील, ही इज अवर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इन एसोसिएशन, मिस्टर सुनील देशपांडे। Thank you, Kumar sir. Yeah. We have wonderful session till now. We have more than 200 plus audience was there, and special thanks to from NSI people from NSIC, NSSH. Firstly, Mr. Ravi Kumar, CGM, and Mr. Sunil, Shri Sunil Zode sir, and from SCST Hub, Mr. Malviya. Thanks for enlightening the audience, the budding entrepreneurs, and for answering their queries. Thank you one and all for sparing their time. Thank you to all. थैंक यू सुनील। और गोखे साहब को हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इज द डायरेक्टर ऑफ MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुंबई ऑफिस। और RY कदम साहब जो AGM है कैनरा बैंक में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, इंक्लूडिंग जोड़े साहब, मालविया जी एंड रवि कुमार साहब। Thank you once again for joining this program and making it a very wonderful session. Now, viewers, we are now approaching to our third session, and that session will be regarding ONGC only. ONGC procurement क्या है, कैसा होता है, ये this is very very important session। और यही आज का जो प्रोग्राम है उसका जो 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 पर्पस था कि ONGC का जो पॉलिसी है उसके बारे में we have experts with us. Mr. GVSS Rao, he is our group general manager in metal management. Mr. वेद प्रकाश जी है, वेद प्रकाश साहब जो है वो भी ग्रुप जनरल मैनेजर है MM में, वो ऑफशोर इंजीनियरिंग सर्विसेज में है। हमारे राव साहब जो है वो ड्रिलिंग सर्विसेज में है हमारे साथ में। और ये मिस्टर S मयप्पन जी है, वो चीफ जनरल मैनेजर MM जो एसेट में है, MH एसेट में। और हमारे निखिल गौड़ साहब जो कॉर्पोरेट MM से है, वो आपको इस बारे में गाइड करेंगे, ONGC की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जेम क्या है, और बाकी और भी सारी चीज़ें हैं। आपको टेंडर कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और भी जो भी क्वेरीज है ना। सो दिस सेशन विल बी वेरी यूजफुल। आपके जो कोलीग्स है वो जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनको मैसेज दीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और उनको बुलाइए, उनको ज्वाइन करने को बोलिए। जो MSCs जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, जो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में है, उनको बुलाइए। So this session will be very useful for them. So in third session we invite Mr. GVSS Rao Sahab. As I told you, he is our group general manager in MM discipline, drilling services, ONGC Mumbai, and he will be along with Mr. Salimuddin from Delhi corporate office. He will be talking on ONGC procurement process and items and services required by ONGC. So hand over to Mr. GVSS Rao Sahab. Go ahead, sir. Namaskar Jagesh ji. Good afternoon everyone. Am I audible and loud and clear? Oh yes sir, you are audible. Yeah, thank you. Mr. Salimuddin unfortunately had to leave for some other meeting which he is attending. So I'll take you through the slides what he was supposed to go through. जैसे आपने बताया, मैं वेद प्रकाश जी और मयप्पन साहब, हम लोग तीनों का टॉपिक तो एक ही है, कुछ स्लाइड्स तो कॉमन रहेंगे ही। जी। इसलिए मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन को थोड़ा ब्रीफली रखूंगा, ताकि बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में, हालांकि मैं चैट बॉक्स में काफी लोगों का आंसर भी किया है, फिर भी किसी चीज का होगा तो वी कैन डिस्कस इन द
Q&A session. Yeah. Or Jagashi, thank you for organizing for such a grand event right from far east of the globe, Tokyo, to far west, New York. And it is really commendable job on behalf done by you and your team. Thank you. And first of all, respected OP Singh Sahab, Director T&FS Incharge MM, Shri Tripathi ji, Chief MM, Mr. Pandey, Asset Manager MHSET, Mr. Sunil Singh HRO, and other ONGC officers in the discussion, and Mr. Gokhe, Director MSME, Mr. Ravi Kumar, Mr. Sunil Zode, Mr. Kadam, Mr. Malviya, whom I had a very good interaction in the last session also last year, and other entrepreneurs, successful entrepreneurs, and women entrepreneurs whom you have called. And thanks for participation and hearing me. I'll just share my screen. Kindly let me know once it gets shared so that I can start the presentation. Is it visible, Jagashi? Yeah, it is visible, but एक screen को करिए, slide show के format में लेके आइए ना इसको. Yeah, it's okay. Yeah, fine. Yeah. I'll quickly take you through the presentation, and बाद में इसका related queries जो हैं वो हम लोग Q&A session में answer करेंगे. Otherwise, the session will extend far more than what we have initially planned for. So these are the 4 or 5 topics which I have listed, and some of the topics my successor speakers also will be covering in detail also. So coming to ONGC procurement process, हम लोगों का mainly 2 types of procurement रहते हैं. एक तो open tenders हैं, एक limited tenders हैं. Open tenders हम लोग 10 लाख के ऊपर करते हैं, और recent government guidelines के हिसाब से 200 करोड़ के नीचे जो भी tenders होते हैं ONGC में, वो सब national competitive bidding में ही करना है. और जो 10 लाख के नीचे जो है वो हम लोग लिमिटेड टेंडर फॉर्मेट में करते हैं. और अदर देन दैट हम लोग OEM, OES इन लोगों से भी हम लोग डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड स्पेयर्स एंड इक्विपमेंट है. इन ऑल दीज थिंग्स the whatever benefits are required to be provided for MSME under the law and as well as GEM platform, वो सब भी inbuilt है. So coming to the government e-marketplace, I think Zode Sahab also has mentioned in his speech. This is a platform what is come out by Government of India for procurement of goods, and ONGC has gone in a very big way in adopting GEM, and mostly, in fact, as a rule, we have to explore whether items are available in GEM, and then if it is not available, we have to try to create, and if still it is not available, then only we should go for normal tendering process. So जैसे ये ONGC का पॉलिसी में GEM के थ्रू करने का है, एंड GEM में रजिस्टर करने के लिए भी आई थिंक one of my previous speaker also has mentioned it. gem.gov.in में जाइए, आपका ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. There are ONGC टाइप करेंगे, ONGC स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी उसमें लिस्टेड हैं. हम every day we are trying to add more and more products into GEM, and अगर उसमें नहीं भी होते हैं तो you can add it and then communicate to us also. We are ready to follow that, because हम लोग पहले GEM में अवेलेबल है कि नहीं देख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं. पिछले 3 साल में जो GEM के थ्रू प्रोक्योरमेंट है वो मैं यहाँ टेबल पे लिस्ट आउट किया हूँ. इस साल अगर आप देखेंगे, all of a sudden there is a jump right from 70 crores to 150 crores and going. Maybe by the year end we may be going up to 250 crores approximately. So order of the day is go for GEM. अगर आप MSME है फिर भी आप GEM में जाइए, आपको जो बेनिफिट्स MSME में मिलते हैं वो सब भी GEM में अवेलेबल रहेंगे, और वो फास्टर है. टेंडर प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम रहते हैं उसमें, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. अदर देन दैट, जो हम लोग नॉर्मल टेंडरिंग करते हैं मोर देन 5 लाख रुपीस के ऊपर, हम लोग ई टेंडर के थ्रू ही करते हैं. बहुत लोगों का इसमें सवाल था चैट बॉक्स में, हाउ डू वी डू द वेंडर रजिस्ट्रेशन. मेरा सजेशन है, गो टू ई टेंडर पोर्टल etender.ongc.co.in. वहाँ पे जैसे ये फॉलोइंग स्क्रीन में स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ऐसे स्क्रीनशॉट आएंगे. यहाँ पे न्यू बिडर, वेंडर रजिस्ट्रेशन, ये सब डिटेल्स हैं. आपको गाइडलाइंस टू बिडर भी है. आप उसमें जाके आपका मामूली डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, GST नंबर होगा, ईमेल ID, all those things you can register. You have to have a class 3 digital signature.
फॉर पार्टिसिपेशन। और इसमें जाके जो भी टेंडर्स ओएनजीसी 5 लाख के ऊपर पब्लिश करती है वो सब इसमें अवेलेबल रहते हैं, नॉट ओनली इन बॉम्बे, ऑल ओवर ओएनजीसी, ऑल ओवर द कंट्री। So this is one of the easiest way to get registered. और फिर भी आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रहा है तो you can always approach us। और ई टेंडर के थ्रू पार्टिसिपेट करने के लिए तो ई टेंडर के थ्रू वेंडर कोड लेना जरूरी है, then only you will be able to register। As त्रिपाठी साहब अपना ओपनिंग रिमार्क्स में मेंशन किए हैं, ONGC very fast in adopting government initiatives also, इसलिए all the tenders में EMD अभी रिमूव कर दिए हैं, whether it is MSME or otherwise। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ओनली 3% ऑफ द परचेज वैल्यू है। और ऑल दोस टेंडर्स व्हिच आर कमिंग आउट विल बी इन नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। सो ये सब टेंडर आपको ई टेंडर पोर्टल से ही होगा, अगर वो जेम के थ्रू या अदर मोड्स में नहीं है। सो दिस इज वन थिंग पीपल शुड नो। और एज वी हैव सीन इन द mention of the other speakers, MSME का definition भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 जुलाई से चेंज भी किया है, where 1 crore equipment and machinery installation and 5 crore turnover को माइक्रो बोलते हैं, and 10 crore and 50 crore को स्मॉल बोलते हैं, and the benefits are basically for these two entities। and SEST proprietorship 51% होने से then it will be treated as SEST owned MSME। एंड जो ONGC का फैसिलिटीज जो दिए हुए हैं, ये आई थिंक मालवीय साहब मेंशन कि भाई टेंडर फी ये सब कुछ का PSU चार्ज करते हैं। ONGC पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से टेंडर फी सबके लिए रिमूव कर दिया है। ONGC टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई टेंडर फी की जरूरत नहीं है, सिंपल रजिस्ट्रेशन इन द ई टेंडर वेबसाइट इज ए रिक्वायरमेंट। एंड जो as I mentioned, सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी ONGC पहले 10% था, अभी कम करके 3% कर दिए हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा जो पेमेंट मॉनिटरिंग है इवन एट द मिनिस्ट्री लेवल, MOPNG लेवल पे मॉनिटर होता है एवरी मंथ। एंड जो भी डिलेड पेमेंट होते हैं हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। सो वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग वेरी रेगुलरली एज फार एज द पेमेंट्स आर कंसर्न्ड। देन कमिंग टू the benefits of what can be given to MSE. Now the purchase preference is the only thing which is left out because the EMD benefit has already been given। So आपको ये whatever benefits are MSEs are required to get, all those things that you are very well aware, I have just listed down here। Now going to the services and items what are required by ONGC, specifically since I am dealing with the drilling and well services in Mumbai here, I have listed down in the following slides। These are certain services जो हम लोग regularly procure करते हैं, these are the items। बाद में मैं ये presentation को जगेश जी को share करूंगा, anyone interested they can seek it from them also। And जो services हैं, these are the main services। Now मैं चैट बॉक्स में भी ये मेंशन किया था, दिस इज द लिंक व्हाट आई हैव मेंशनड हियर, where the next 5-year ONGC requirement of various items and services are listed in ONGC India website। Anyone can access to this and get a feel of what are all the items are required। There are several questions from the vendors saying that what services we can provide। There is nothing you cannot provide as long as you are MSME and you are having that requisite experience। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है MSME को। लेकिन जैसे फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो टर्नओवर और नेटवर्थ है, उसमें ONGC ने बोला है कि ओनली अप टू, अगर गुड्स में है 25 करोड़ एंड अबव टेंडर में ही हम टर्नओवर और नेटवर्थ क्राइटेरिया रखते हैं, बिलो दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑल्सो। सिमिलरली सर्विसेज में अगर एनुअलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है तभी हम रखते हैं। जो अगर MSME का जो सप्लाईज हैं विद इन दिस लिमिट है तो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट financial turnover and net worth। Now coming to experience criteria, बहुत लोग मेंशन किया कि लास्ट क्वेश्चन भी उसी के बारे में था, why PSUs insist on experience। देखिए हम लोगों का इतना हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड कंपनी है, any small mistake in goods or services it will result into huge loss to not only to the company to the nation। एक बार सप्लाईज बंद हो गए, प्रोडक्शन या गैस प्रोडक्शन बंद हो गया तो it will have a catastrophic effect। तो
क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को हमको इंश्योर करना है। जोडे साहब भी इसके बारे में मेंशन किया था, तो कुछ तो एक्सपीरियंस तो हमको रखना है। नाउ व्हाट विल हैपन टू द पीपल हु डजंट हैव एक्सपीरियंस, इसीलिए चीफ एमएम ने अपना ओपनिंग रिमार्क में बोला है वी हैव कम आउट विद द डेवलपमेंट ऑर्डर प्रोग्राम। डेवलपमेंट ऑर्डर का लिए कंटिन्यूअसली हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चलता रहेगा। आप भी अपने तरफ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप किस चीज का प्रोडक्ट डेवलप करना चाहेंगे ओएनजीसी के लिए, एंड मामूली एक इंस्पेक्शन होगा आपका फैक्ट्री फैसिलिटीज, एंड देन ओएनजीसी विल गो अहेड एंड गिव द डेवलपमेंट ऑर्डर। उसमें ना आपको कोई ब्लैक लिस्टिंग होगी, कोई एलडी होगी, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। तो ऑल दोस फैसिलिटीज आर अवेलेबल। सो जो वेंडर में जो 5 ईयर प्लान के लिए बोला था, वो लिंक क्लिक करने से ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। व्हाट आपका ओएनजीसी 5 ईयर प्रोक्योरमेंट प्लान है, उसमें यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट। टीआरईडीएस के बारे में भी आई थिंक रवि कुमार जी एंड मिस्टर गोखे हैज एक्सप्लेन्ड। ओएनजीसी इज आल्सो रजिस्टर्ड हियर, बट मैं एक आप लोगों को बताना चाहता हूँ ओएनजीसी का पेमेंट पॉलिसी है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, whereas I think TRADS में it is 45 days। otherwise also हम लोग 21 days में नहीं भी करते हैं तो 45 days का अंदर तो हो ही जाता है। I do not know कितना आप लोगों के लिए यूजफुल है, but ONGC is actively promoting going through the TRADS mechanism also, so you can always approach through that, and ONGC will definitely allow and do that for facilitation of the immediate money required for MSMEs। ये थोड़ा हमारा स्टैटिस्टिक्स है MSc procurement during last 3 years, as our chief MM and director Incharge MM has mentioned, around 2,300 crores was last year's procurement, and 675 crores abhi tak ho gaya hai, and in fact it is up to December it is 1100 crores as director sahab has mentioned। and as we do realize that SC/ST entrepreneurs का percentage इसमें बहुत कम है, and we request you and come and participate, and we are there to definitely help you in any obstacle getting overcome। and recent changes of government of India, I think most of the speakers have mentioned it, I don't have to reiterate all those things, and, keeping in view of the time constraints। and in fact government of India has come out with even the Chinese and other land border countries say supplies को dump avoid करने के लिए भी there are several guidelines which have come out, and definitely the stimulus package what the MSME director has mentioned, it will be helpful for all those things। and as I mentioned, payment monitoring and interest on the, in fact government of India has come out that any delayed payment of MSME carries an interest, and that has to be deposited with the escrow account। so all these things we ONGC is very aware and very immediately implementing all those things in our procurement activities। so these are the recent changes in the ONGC based on the government of India guidelines। and GEM, as I mentioned, GEM procurement is mandatory, and whatever is not there in GEM, still we can go for custom bidding, and we will be doing that। then development orders I have explained in detail, and we have come out with the e-invoicing system। now you don't have to come around and submit your invoice, you can submit online with e-invoicing, and invoice monitoring system will be monitoring the invoices। all MSC payments are monitored। then for purchase preference for local content, which has come out by MOPNG, also is applicable in all the tenders above 1 crore in national competitive bidding। and this one of the lady was mentioning regarding the quarantine facilities, our executive committee was aware of this fact, and for the small entrepreneurs and small business units, ONGC is going to come out with the quarantine facilities, and so that you don't have to spend on those unforeseen costs। this policy is already taken by, decision has already been taken by our executive committee। so these are the few slides from my side। so if we can take the questions once Mr. Ved Prakash and Mr. Mayappan concludes their thing। I think most of the things I have just touched upon। thank you Jagesh ji, you can take forward। Okay sir, thank you for this wonderful presentation, and you have been very supportive as far as our vendor development meet is concerned, sparing time for this, coming for this program and guiding. Even after the program, you are always available for guiding our participants। thanks a lot to you sir।
Now our next speaker is Shri Ved Prakash Saab. He is GGM, yeah, and we'll take questions after this this presentations, right? So Mr. Ved Prakash Saab जो है, yeah, he is there, yeah. Unmute yourself, sir. Then go ahead, Ved Prakash sir. सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर T&FS श्री ओपी सिंह जी, चीफ MM श्री त्रिपाठी जी, हेड HRO हेड रीजनल ऑफिस श्री सुनील सिंह जी, और हमारे जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, श्री गोखे जी, श्री रवि कुमार जी, श्री सुनील जोड़े जी, श्री RY कदम जी, श्री महेंद्र मालविया जी, ONGC के मेरे सभी सहयोगी और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ अवेलेबल हैं और जिनको सुनने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, और सभी एंटरप्रेन्योर्स जो अभी बैठे हुए हैं इतने लंबे समय के बाद भी और इसमें शामिल हो रहे हैं। मेरे सहयोगी श्री राव ने एक ब्रॉड ओवरव्यू ऑलरेडी दिया है। अभी जो पॉलिसीज हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर श्री गोखे जी द्वारा, जोड़े जी द्वारा और मालविया जी, वो सब आपको अभी लगभग सब पता है। अभी अगर हम इसको देखें तो ये हो सकता है कि सभी MSME डायरेक्ट ONGC को या किसी PSU को जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है डायरेक्ट सप्लाई सभी नहीं कर पाए, बट गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो स्टेप्स लिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ इशारा श्री सुनील जोड़े जी ने भी किया कि अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 200 करोड़ तक के कोई टेंडर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में नहीं होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जिसके हम रिजल्ट्स देखेंगे आने वाले समय में। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कंपटीशन नोडल मिनिस्ट्री के मत में सफिशिएंट है और कैपेसिटी अवेलेबल है तो 200 करोड़ के ऊपर भी इंटरनेशनल टेंडर नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि बहुत सारे एरियाज में मटेरियल हो, सर्विसेज हो, अभी अपने देश में लोग अवेलेबल नहीं हैं जो अपने आप ये कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसके लिए लोग अब इंडिया में आके जॉइंट वेंचर्स वगैरह बनाएंगे, इंडियन कंपनीज से जो भी उससे रिलेटेड फील्ड में कुछ कैपेसिटी या एक्सपर्टीज रखते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। जो एक सजेशन आया था कि क्यों ना इसको मैंडेटरी कर दिया जाए, जैसे गल्फ में है या कुछ और दूसरे देशों में है, बट ये बेसिकली इनडायरेक्टली कुछ इसी तरह का हम सिनारियो देखेंगे आने वाले सालों में, क्योंकि जिनके पास टेक्नोलॉजी है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो नेचुरली वो जो भी अभी गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं और जो भी पॉलिसी डिक्लेयर की है उसको क्वालिफाई करने के लिए वो यहाँ पर सहयोग करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो परचेज प्रेफरेंस मिलेगा वो सिर्फ 50% लोकल कंटेंट के ऊपर ही मिलेगा, तो लोग लोकल कंटेंट बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, MSMEs हैं या जो सर्विस में हैं रिलेटेड, उनके पास कुछ एक्सपर्टीज है या कैपेसिटी है, तो उससे मैं देखता हूँ कि MSME के लिए एक नए अवसर खुलेंगे जिसमें वो उसका पार्ट बनेंगे जो ऐसी सप्लाईज और सर्विसेज थे अभी तक जो एक्सक्लूसिवली बाहर के लोग आके सप्लाई करते थे और चले जाते थे। तो ये एक संभावना मैं देखता हूँ और MSME के लिए जो आने वाले सालों में जरूर खुलना चाहिए। ये तो एक बात। दूसरा ये कि MSME के लिए ये जो जेम है ये एक बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसको हम देख रहे हैं अभी आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरेगा। और जेम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इंक्लूसिव है, इसमें कोई कहीं से भी अपना प्रोडक्ट और सर्विस को अगर वो उसमें रजिस्टर करता है और कोई भी बायर अगर वहाँ पे आता है तो उसको वो अपने आप दिखेगा कि भाई ये सप्लायर है इस प्रोडक्ट कैटेगरी में, और उस किसी को उसका नाम भी नहीं दिखेगा वहाँ पर, और अगर वो कॉम्पिटिटिव है तो उसको ऑर्डर भी मिलेगा। और जेम का प्लेटफॉर्म उसके दूसरे जो इंटरेस्ट हैं, जो कंसर्न हैं, जो चिंताएं होती हैं अक्सर MSME की कि पेमेंट नहीं मिलता है टाइम पे और कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करते हैं लोग, बड़े जो बायर्स होते हैं, तो उस पर वो जेम प्लेटफॉर्म इटसेल्फ उसमें बिल्ट इन प्रोटेक्शंस हैं
तो जैम में रजिस्टर करना मुझे लगता है कि सभी MSME में जो भी वो जिस एरिया में काम कर रहे हैं, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग, उनको उसमें रजिस्टर करना चाहिए, उनके लिए वो नए अवसर खोलेगा। ONGC भी गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से जैम में अभी प्रोक्योरमेंट करता है, और आने वाले टाइम में अभी ये भी जरूरी है कि हमें पहले जैम में देखना होगा कि जैम में वो सर्विस या मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। तो एक तरह से जैम एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे आप अगर रजिस्टर हैं तो सभी की नज़रों में आप आएंगे, आपके पास जो भी सर्विस या गुड्स हैं आप वहाँ सबको दिखेंगे आप वहाँ पर। तो इसका फायदा जरूर सभी MSME जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लें। ONGC बहुत ही फेथफुली फॉलो करती है, हालांकि कुछ शिकायतें अभी सुनने को मिली हैं कि लोग गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन्हें बेनिफिट नहीं मिलते हैं, लेकिन ONGC तो बहुत ही फेथफुली इसको फॉलो करती है, और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो सारी इम्प्लीमेंटेड हैं और कंप्लायंस होता है उनका। और ONGC के अपने भी बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जिससे कि वो MSME या कोई भी छोटे सप्लायर भी हों तो उनको अगर वो हमारी पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में या प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में आते हैं तो उनको पूरा अवसर मिलता है। ONGC ने ट्रेड डिस्काउंटिंग फैसिलिटी भी रजिस्टर कर रखी है, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अभी ONGC ने एक अपनी नई डेवलपमेंट ऑर्डर पॉलिसी भी, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, वो भी एक की है, जिसमें डेवलपमेंट ऑर्डर को डिलिंक कर दिया गया है रेगुलर परचेज से, और उसमें आप जो भी आइटम्स वहाँ रखे जाएंगे उसमें से अगर आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं, आप उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो आपको जो भी लेटेस्ट रेट है उस रेट पे आपको एक चांस दिया जा सकता है। अगर आपकी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री पाई जाती है तो आपको एक मौका दिया जा सकता है, और उसको अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आपको फिर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, ये भी उसमें बेनिफिट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं। ये MSME को हर सरकार स्ट्रेंथन करने के लिए आज़ादी के बाद से ही काम कर रही थी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की जो शुरुआत होती है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की, वो एक MSME से ही होती है। एक स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हमेशा एक छोटा काम से शुरू करता है, फिर वो एक बड़ा बनता है। तो हर सरकार इसमें हमेशा काम करती रही है, लेकिन जो पॉलिसी इकोसिस्टम आज हम देख रहे हैं ये इतना व्यापक है और इतना हर एस्पेक्ट को इसने उसको एड्रेस किया हुआ है। लेकिन ये मैं भी मानता हूं कि कुछ लोगों के फीडबैक भी दिखाई दिए कि कहीं कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन उन्हें सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, और उन्हें थोड़ी सी उससे निराशा भी जैसे लगी है, एक कह रहे थे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो किया है वो इतना व्यापक है, हर एस्पेक्ट को कवर करके, फाइनेंसिंग हो, जैसे हमें जितना डिटेल में बताया गया कि फाइनेंसिंग में क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं, और जो बेनिफिट्स हैं, अब जैसे उसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो 4% और 3% का विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो गवर्नमेंट ने रखा है, कम से कम गवर्नमेंट में और जैम में और PSU में तो वो फॉलो होगा ही। अब ये है कि अगर अपने पास कैपेसिटीज नहीं है अगर उन प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में, तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग इशू है। उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे गैप्स हैं, और वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को एंटर करना होगा, जिससे कि वो एंटरप्रेन्योर्स उस गवर्नमेंट की पॉलिसी का फायदा ले सके। अदरवाइज गवर्नमेंट ने इस पूरी जो देश की एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है और जो स्पिरिट है उसको अनलीश करने के लिए काफी कुछ किया है, और आने वाले वर्षों में मैं बहुत आशावादी हूँ कि हमारे देश में MSME भी वो बहुत उभरेगा, बहुत जोर से और बड़े स्केल पे उभरेगा। और उसके साथ साथ चूंकि ये सारी पॉलिसीज इंक्लूसिव हैं, तो जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी उसमें पूरा इक्वली प्रोपोर्शनेट बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं और चीज़ों की डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी कुछ तो राव साहब बता चुके हैं, और अभी कुछ और डिटेल्स मेरे सहयोगी महपन साहब बताने वाले हैं। उसके बाद देन विल टेक द क्वेश्चंस। सो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत सरल शब्दों में आपने जो ONGC की जो पॉलिसीज है प्रोक्योरमेंट रिलेटेड और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कैसे अवेल करना है, वो बहुत अच्छे से आपने बारीकियाँ जो है वो अच्छे से समझाई है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम और ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।
Stay with us, sir. We'll have question answer session after this. After Shri Mayapan ji, उनका जब presentation हो जाएगा. So our next speaker is Shri S. Mayapan ji. He is Chief General Manager MM, as I told you know, in MHSH, Mumbai High Asset, in Mumbai. Okay. So unmute yourself, Mayapan sahab. Kindly unmute yourself. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Good afternoon. Yeah. Good afternoon, sir. Go ahead. Go ahead. Respected OP Singh sir, respected Tripathi sir, respected KS Pandey sir, respected Sunil Singh sir, distinguished guests, friends, my colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon to all. In fact, being at the end of the session, most of the points which are to be told by me have already been covered by many other speakers. So let me try and let me see what justice I can do for my presentation. Let me share my screen where my presentation is there. Okay. Now you can share the screen. Yeah, go ahead. Yeah. Mr. Sunil Bansod is asking contact number. Yeah, we'll get you that numbers. Don't worry. You can get in touch with me. I have shared my number here. You be in touch with us. I'll again share my number. You can note down. ठीक है सर करो Yeah, is it visible? Yeah. Oh yes, sir. Go ahead. Visible. Yeah, I am S. Mayapan. I am CGM MM. I am head of the MM department, MSME ONGC Mumbai. My contact number is 9868. If somebody wants, they can note down. Yeah, you can note down the number. 9868 39 3363. I'll share in the chat box also, sir. Don't worry. Yeah, 9868 39 3363. Okay. Let me continue with my presentation. Yeah. ONGC tenders, as my previous speaker said, above 5 lakhs, all tenders are done through e-tender mode only. So there is no manual interference. All tenders, it is available in our tender site, which is given there, etender.ongc.co.in. Only tenders which are valuing less than 5 lakhs will be tendered within ONGC, within manual methods. Any interested bidder can check the details of any tender of ONGC all over the India, currently on sale, using the guest login, where no login or no password is required. And they can go through the tender document. If they are interested in the tender document, they can, if they want to participate in a tender document, then they have to register themselves as a vendor to ONGC in the same site only by obtaining login password through the portal itself. This is the portal address, etender.ongc.co.in. Please keep one thing in mind: without generating a vendor number with ONGC, nobody can participate in any tender of ONGC, because ONGC is in SAP platform. And all the technical helps, all the help documents are available on the portal. How to get yourself registered, how to get login, how to get password, what is the next step, what is the document to be attached, everything is there. Then typically the documents required are PAN card, GSTN number,
and your email ID, mobile number. That's all. Very small things only are required, and your maybe your company's registration with ROC. Those details are required. From our side, tender document, all subsequent amendments to the tender documents, and any query raised by any bidder against any tender after submission of bids or before submission of bids are also uploaded on the same portal only. So if a bidder is registered against a particular tender, we can view all the documents pertaining to the tender. Okay, and the bids and responses to ONGC's queries are also uploaded by the bidders are to be uploaded by the bidders on the portal only. Only few documents have to be submitted in physical form. In fact, it's not even few documents, it is only one document. If you are submitting a bank guarantee towards EMD, then that is the only document that is to be submitted physically. Even now, that is not required because nowadays ONGC has done away with the submission of EMD also. This process of tendering through electronic method brings in complete transparency and ease of access. These things everybody must be aware of. Okay, when the MSME Act was notified, and what are the ministries that are merged to make Ministry of MSME? This is done only to encourage entrepreneurship and employment and encourage livelihood opportunities and enhance the competitiveness in the marketplace. MSME contributes around 6.11% of manufacturing GDP of India and 25% of GDP from service activities and almost 1/3 of India's manufacturing output. And around 700 lakh employees, MSME enterprises are there in India at present. And 35 million establishments are there in rural areas and 24 million establishments roughly are there in urban areas. There is MSME enterprises, MSME establishments. It employs close to 100 million people, and exports through MSME accounts for 48%. It is expected to be this MSME sector expected to be an important role in making manufacturing hub and make in India campaign a success. This is a detail of state-wise distribution of enterprises, MSME enterprises. I think I can skip this. This is the percentage distribution of MSME enterprises, that is between rural and urban. How many SC enterprises are there? There is SC entrepreneurs are there, ST entrepreneurs are there, OBC, others. All details are there in this slide. I'll share the slide with Mr. Jagesh, who in turn can share with all the participants, all the interested people. This is also already dealt by many people, many speakers before me. MSME enterprises are acceptable both for manufacturing and service enterprise service contracts in respect of ONGC tenders based on the classification. And the below just the revised classification applicable with effect from 1st July 2020 is mentioned, wherein the turnover has been increased so that so many people can be covered under MSME ambit. For micro, it has been increased to 5 crores, and small, it is increased to 50 crores. Of course, we are not we're concerned about medium. This is done only to enhance the ambit of MSME enterprises so that their participation, the preferences that is available to MSME enterprises can be increased. MSME benefits available to MSME enterprises. Bank loans become cheaper as the interest rate is lower compared to other regular loans, and various tax rebates are available and concessions are available. Concessions are offered by Government of India, and they have easy access to credit also. And as I said earlier, in CPSUs and government departments like ONGC, benefits are available in terms of purchase preference and all those things. And there is a protection against delayed payment also for MSME bidders. Waiver from submission of EMD, of course, till very recently we were seeking EMD from all non-MSME bidders, but now even that is withdrawn now, so this is not of much importance. We are not seeking EMD from any bidder nowadays.
We only seek a declaration from them, bid security declaration. And if the MSME bidder falls within the price range of 15% of the L1 non-MSME bidder, when in quantity can be split, 25% of the quantity is awarded to MSME bidder. Out of this 25%, 4% is earmarked for SC/ST entrepreneurs and 3% is for women entrepreneurs. In this case, 25% cannot be divided, and there are more than one MSME bidders falling in the range of lowest bidder plus 15%. The quantity is equally shared among the eligible bidders. And in the opinion of ONGC, tendered goods cannot be divided in the ratio of 75% to 25%. Then ONGC reserves the right to award the contract on eligible MSCs for a quantity not less than 25% as may be divisible. These are the registration authorities, and from 1st of April 2021, everybody is to be registered necessarily with the GGM registration authority. That is the only authority which is empowered to register MSME enterprises. The documents that are required is, these are the documents, and from 1st of April 2021, we will be requiring GGM registration authority letter, registration letter for the bidders to claim the benefits. And no trader or a dealer of a manufacturer who is an MSC will be eligible to get the benefits of purchase preference, etc. And trade receivables discounting system platform, it is based on the initiative of Government of India to help the MSC vendors to get immediate access to liquid fund based on ONGC's credit rating by discounting MSME enterprises trade receivables through an auction mechanism. ONGC has registered itself with three platforms. You can please note down: RXIL, Mind Solution, and A Trades Limited. MSC vendors can avail this benefit by registering themselves with any of the exchanges providing e-discounting, provided ONGC is also participating in such trades platform. As I said earlier, ONGC is registered with 3 such platforms. And all costs relating to availing the facility of discounting on trades platform shall be borne by the bidder themselves, and they have to indemnify ONGC also when participating in trades platform. ONGC will not be liable for any special or indirect incidental damages that may be caused to ONGC. Vendor registration, as I said, every vendor who is willing to, who is interested or who is to participate in a ONGC tender, or they have necessarily registered themselves with the ONGC as a vendor, and they have to get a vendor number. That number only will be applicable for all the tenders of ONGC across the country. And this is the basic minimum requirement. Thank you. I take this opportunity to invite all the MSC enterprises to upload their products in the GEM portal. Either for, it can be for manufacturing, it can be for services. In both the cases, please upload your product or services in the GEM portal so that it will become visible for us, so that it will be very useful for us in our tendering processes. As Mr. Rao told already, nowadays we are supposed to first tender through GEM portal only, and then only seeing the response only we are supposed to go for outside GEM tender, outside GEM portal tender. I think that concludes my presentation. Thank you very much, Mr. Jagesh. Thanks for your very elaborate initiative in this regard. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot, sir. Mayappan Saab. He was Mr. Mayappan. He is our senior officer, chief general manager in discipline in ONGC Mumbai. He is looking after procurement of MH asset, Mumbai High Asset, biggest asset of offshore in India. So thanks a lot, Mayappan Saab, Rao Saab, and Ved Prakash Saab. Everybody, all stalwarts of discipline in Mumbai, because Mumbai contributes, 70% of total production. Yeah. So you are looking after all the other needs of the material and services, etc., etc. Thanks a lot. We have already Mayappan Saab has already shared his mobile number here. राव साहब के बारे में राव साहब आप भी शेयर कर दीजिए, और वेद प्रकाश सर मैं निवेदन करता हूं आप भी अपना नंबर ऑफिस का लैंडलाइन या मोबाइल नंबर इफ यू विश
you can share with the participants so that they will get in touch with you. You can also get in touch with me. I have already shared my number. I am Jagesh Somkuar, host of this program, and my number is 9435717290. Yeah, 9435717290. Okay. Now the house is open for question answer session. Yeah, please go ahead, raise your hand and ask your question as far as ONGC's procurement process and procedures and e-tendering, GEM, etc. they are concerned. Yeah, go ahead, please. Mr. Ravindra, yeah, Mr. Ravindra, yeah, go ahead, please. Unmute yourself, then ask your question. You start your video first. Okay, go ahead. Sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. Go ahead. Yes, sir. Actually, we are the SC candidate, so we don't have any manufacturing plants, but we have the product some OC candidate manufacturing. So can we take that equipment and we can sell it in our ONGC? Okay. राव साहब, can you I think राव साहब समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? Yeah, should I repeat करना है? Can kindly ask him to repeat, no? या थोड़ा आपका माइक है ना, आपका रविंद्र जी थोड़ा सा दूर रखिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है ना, इको आ रहा है. Yeah. So actually, we are the we are the new entrepreneurs, sir. We don't have any right now. Suppose we want to supply the completion equipment, sir. What completion? Supply the like liner hanger, packers and all, sir. Yeah. Okay. Okay. So actually, I'm the SC candidate, sir. So we don't have manufacturing unit, sir. So our colleagues have manufacturing plant. We can take that equipment. We can buy through our name, my company name, my entrepreneur company name. See, basically the development order. You see, you don't have an experience as of now. You want to supply this equipment to ONGC. Now, for you to get that experience, the process of development order has been introduced. So development order is given only for the person who is manufacturing it, and it is obviously not for the trader. So you will have to establish that you have those facilities, and then our inspection team will come and inspect your facilities, and then they will give the development order to you. Okay. Okay, sir. Okay, Ravindra ji. Okay. Yes, next is Mr. Suyog Dani. Yeah, Suyog, go ahead. Yeah, thank you, sir. Yeah. Sir, it's a very good opportunity me to ask this question as MSME and ONGC both are on the same platform. The question is related to when we register a company to the MSME website or on their registration site, we have to go through the different categories that your company is doing the business related to consultancy, material, or anything. So there are the categories, and that is the online process. So we have to click those categories, and then the certificate is generated. So the certificate which we have is MSME certificate with the different some kind of categories. But when we are going into the ONGC tender, ONGC tender has some particular name to that tender. For example, there is some consultancy services required for drilling or anything. So the problem which we faced is that the tender name and the MSME category is not the same. So we were not able to participate during that time, that tender name. So we were stuck in between the conflict of this name. So I request that this problem should be addressed because MSME is having a category name and ONGC is having a different tender name. So how are you going to allow the companies to, as per this category? That is my question. Okay. Yeah. Ved sir, you would like to take that? Ved sir. So you unmute, sir, your voice is. हाँ एक मिनट वेद प्रकाश साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ. हाँ सर, go ahead sir. As far as services are concerned, correct me if I'm wrong, this registration is in the service category itself is enough. Exactly.
the benefits of registered MSME. Yeah. In case of procurement, you should have the registration for that particular item which you are putting. But for services, your registration as in the service category itself is That is sufficient if I want to go for some particular, if ONGC required a consultancy in drilling or anything. So if I have a registration in service category. But see, there are two things about this. One thing is getting the benefit as a registered MSME, and second thing is qualifying the experience criteria. The benefit as a MSME bidder is different than qualifying as a technically acceptable bidder. While if you are registered in the service category, you get the benefits of MSME with regard to the policy, public procurement policy. But you have to qualify as per whatever the individual experience criteria or qualifying criteria is given for that particular service or the job. Yes, sir, that is completely agree. This, as Mr. Rao sir said, that these are the technical services and you have to maintain the quality. You have to qualify. So, experience is mandatory, but that was my concern, because here is the problem. We come for the services, we have the quality, we have the person experience. We work 20-25 years in the industry, but when we go to the company required the company experience, not the person experience. We in our development policy, we will also be considering some services also wherever feasible for development orders. Not all. Mr. Dani, further to supplement what Ved Saab has said, see, we do understand as an expert from the oil industry, you may be having an experience. But here we are dealing with it is a business to business program. See, ONGC is a business entity. I have to deal with another business entity. Maybe a proprietorship also will do, but still it has to be a business entity. I cannot deal with an expert. For that, we have a system of domain expertise and all those things, which we hire it on a separate note. Where we don't have in-house expertise, we go for the domain expertise. But that always the dealing is between a business to business. So you must appreciate that, because otherwise, how do we recognize that particular entity without business enterprise being there? Yes, that's I agree, sir. I completely agree. That's why I was suggesting last time that we have companies in foreign, those are experienced. But there should be a concept or policy that MSME should be mandatory connected to this foreign company, and then only they can participate into the ONGC. This kind of Bhumiputra things are. Yeah, we do understand this kind of Bhumiputra process is there in Malaysia, and now Saudi also has come out with that, and so many people are. But that is a government policy requirement. As Mr. Zode said, that he is also going to take it up. If government tomorrow comes out with that kind of mechanism, we'll adhere to it. But Mr. Ved Prakash, I don't know whether you have heard his speech very clearly. He brought out that because of these policies, it is in a way indirectly benefiting the MSMEs only. See, the foreign, now I cannot float a ICB tender for tenders valuing less than 200 crores. So naturally, that will bring in this kind of establishments where they'll have to rely on the local companies. This is what Mr. Ved Prakash has explained in his. Yes, sir. I agree. Thank you very much. Okay, so Suyog, got your answer now? Yeah. Yes, thank you. Oh, Thank you very much. yes, okay, thank you. Okay, next is Mr. Pran ESV. Yeah, go ahead. Mr. Pran ESV. Hello, sir. Hi, am I audible, sir? Yeah, you are audible, but you can start your video first. Huh? Yeah, sorry. Yeah. Just a minute. Yeah, go Is ahead. it okay? Yeah, hello, sir. It's fine. Sir, one particular scenario which I want to highlight, and just wanted to understand what will happen in this case. Like I have gone through your material management list, that exhaustive list is there, wherein you require items like servers, desktop PCs, laptops, Microsoft licenses and all that. Do I qualify for these benefits if I'm going to supply these particular items to you? Like I'm not a manufacturer of a server or a operating system developer. So do I qualify for these particular policies which government has laid down if I supply these items to you?
Mr. Praveen Tapase. Mr. Praveen Tapase. Okay. See, as a policy, most of these equipment now have to be procured through GEM only. With what are all the things which are available in government e-marketplace, we'll have to go through that. GEM does not prohibit a trader being bidding, because recently we have floated the tenders for the desktop PCs and the servers, and we could award it to the traders. And whatever the benefits are available, there again the GEM portal takes care of that benefit. So if the benefit of MSME is to be given to the trader or not, that GEM portal is taken care of that aspect. So you will have to register through GEM. Otherwise, ONGC procurements, at least for these items which are available in GEM, cannot be bought from outside GEM. Yeah, that's okay, sir. But these particular policy which we just discussed, like all the benefits and all those things, are they applicable to a person who's dealing with these servers and PCs? No, are you an integrator? Am I audible? Hello. Yeah. Hello. Yes. Are you an integrator? No, I'm planning. I just seen this list, exhaustive list, and I do understand this industry, IT industry. So I'm just planning to supply these equipments to ONGC. As an integrator, you can supply. Do I qualify for these? As an integrator, you can supply. Okay, but the item list doesn't say you are from an integrator or a trader or a dealer. So normally these things are tagged to be supplied by a dealer. So do you consider me as a dealer or MSME registered person? How do you look at me? You will be considered as a dealer only. So then these policy don't apply to me? Yes, the but benefits? the procurement will be through GEM portal. You have to upload your products there from your company's entry, company's login. And since you are not a manufacturer, MSME provisions will not apply. Will not apply. Okay. The traders are not registered on MSME. MSME is for manufacturer of goods and provider of services. Service integrators can be, but even if it's not service integrator, then that's not possible. So the thing is, I have registered myself into Udyog Aadhaar as an MSME, micro MSME. That's okay. But I do want to supply these equipments also to ONGC. So can I through there that are channel? two categories of registration under MSME. One is either you manufacture some goods or you provide some services. Services. Correct. Right. So to trading is not a service. They don't register people as a trader, I suppose. Either you are doing some service job or you are manufacturing some goods. So if you only trade, you buy somewhere and you supply to somebody, then it is not a sorry, sir, not able to hear you. Registration category. Unable to hear you. Yeah. प्रकाश सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए, उनको सुनाई नहीं दिया बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप MSME में आपकी दो कैटेगरी हैं, either you manufacture some goods or you provide some services, right? So if you are only buying from somewhere and then supplying to somebody, it does not fall in any of the categories. You don't get any benefit of that policy. Correct. ठीक है। प्राण साहब ये उनका लगता है कुछ कनेक्टिविटी का इश्यू हो गया है। ही इज नॉट आई थिंक ऑडिबल। कोई बात नहीं, लेट हिम ज्वाइन अगेन। ओके, नेक्स्ट इज मिस्टर दीपक सराफ। मिस्टर दीपक सराफ, या गो अहेड प्लीज। मिस्टर दीपक सराफ। Saraf ji, go ahead. You start your video first. Yeah, then go ahead. Yeah, go ahead. Good afternoon, sir. Good afternoon. बोलिए sir. Good afternoon. Can you see me, sir? Oh yes, yes. Okay. Sir, we are providing catering services to offshore. And during this 22 मार्च से आज तक हमने काम किया है, and काफी हमने हमारा कोविड सेंटर हमने खुद का खोला है, अभी भी है, and around 170-180 people we have done the crew change in offshore till today. Now,
एज अभी एक नया आपने भी मेंशन किया है जो क्वारंटाइन हमारा जो है ओएनजीसी करेगी, बट व्हाट अबाउट जो हमने अभी तक किया है और जो हमने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है उसका रिएम्बर्समेंट का क्या प्रोसीजर है सर? सराफ साहब, ऐसा अभी तक उसका बारे में डिसीजन आया नहीं है मैनेजमेंट से, तो I can only talk about the management decision what has been taken, but what decision has not been taken as of now I will not be able to. Moreover, it is contract specific. सर आप हमसे एक एडिशनल सर्विसेज ले रहे हैं जो कि बियॉन्ड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। आपने बोला हमने काम किया, हमको काम करना है, हम कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। आपकी सारी बातें सर आंखों पे, लेकिन सर I don't think this is the forum to talk that. This is very contract specific. I don't think this is the forum to discuss this issue, isn't it? नहीं, वो एक टॉपिक महपल साहब निकला था, इसीलिए जस्ट एक थोड़ा टच किया है। नहीं सराफ साहब, ये आज का जो प्रोग्राम है ना, इसका पर्पस थोड़ा दूसरा है। यू हैव कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ आवर मैनेजमेंट पीपल ना, हमारे ऑफिसर्स के नंबर आपके पास तो सब है। यू आर लीडर इन दिस फील्ड फॉर सो मैनी इयर्स, नो? तो उनसे बात कर लीजिए, दैट वुड बी बेटर आई थिंक, राइट? थैंक यू। श्योर। या थैंक यू सराफ साहब। नेक्स्ट इज प्रतिभा फैब्रिकेटर्स। या गो अहेड, प्रतिभा फैब्रिकेटर्स। हाँ, अनम्यूट करा या अनम्यूट कीजिए, या गो अहेड, या गो अहेड। हाँ हेलो। हाँ, या गो अहेड, बोलिए। हेलो सर, मैं बोल रहा था ये अपना ओएनजीसी का जो रजिस्ट्रेशन है। हाँ हेलो। या रजिस्ट्रेशन ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इसमें क्या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना होता है टेंडर के लिए? हेलो। हाँ राव साहब, राव साहब। हेलो। हाँ ठीक है, वो तो 2-3 वॉइसेस आ रहे थे। आप वापस पूछिए अपना सवाल, आराम से पूछिए। इनका सवाल मैं सुन लिया हूँ। हाँ, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। नंबर 1 वेंडर कोड लेना जरूरी है। तो उसके लिए जो मैयप्पन साहब ने प्रोसेस भी आपको दिखाया है, कोई भी ई टेंडर के लिए आप ई टेंडर वेबसाइट में जाइए, वहां पे आप एज ए न्यू यूजर आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करने से इट इज वैलिड ऑल थ्रू द कंपनी, एंड जो भी रजिस्ट्रेशन है इट इज नॉट हैविंग एनी कॉस्ट टू यू। यू हैव टू ओनली सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन। मैयप्पन साहब, यू कैन सप्लीमेंट। Yeah. You have to have different vendor numbers for HPCL, BPCL, and ONGC. You cannot have a common vendor number. Vendor numbers have to be specific. If that is your question. ठीक है। Okay, thank you, sir. Okay, yeah, okay, thank you. One or two questions. Dinesh साहब, you want to say something? Yeah, go ahead. Dinesh Bardia ji. I want to say 2 things, sir. हाँ बोलिए। एक तो I would like to add some information, and second thing, one question. First, I'll ask a question. If suppose since I have seen the list of the items which ONGC procures from MSME, and those items appear to be of very higher technical or engineering goods, which are normally small scale industries may or may not be able to provide at the beginning stage because of capital constraint, etc., or knowledge constraint or expertise constraint. So whether any new entrepreneur can join hands with some existing expert entrepreneur and from non-SEWA community and have a tap with the or supply the items to the ONGC. This is number 1. Number 2, in case other than this higher engineering goods, whether there are any other items which are low means very small items like goods of regular usage, which are like, for example, in recently many items like mask and then sanitizer, etc., is also being manufactured at a large scale by these small vendors. So whether such items can also be added into the procurement policy of ONG or government or ONGC.
these two questions I have to ask to you, and I would also like to add something related to startup, because many people are raising questions related to some pre-requirement of the applying for the tenders. So just yesterday when I was discussing something with one startup, so all MSME or new company should register themselves with a startup, so that I think there are no prerequisite of many things like EMD or any experience or expertise also for some goods. Like for example, yesterday I met one customer who came to me for his proposal. He discussed with me about his activity. He is manufacturing, that tarpaulin. And in a tarpaulin, though he earlier he was supplying it to government central warehousing, etc. But he was getting only small amount of uh, contract, or he was getting order for this small amount like 5 lakh 10 lakh maximum. But because he was not falling under the criteria of 3 years balance sheet and some specific amount of turnover, etc. So the central warehousing itself told them, you first registered with the startup, so that if you get the startup certification, then all this criteria will be waived off. And without any criteria like balance sheet or some specific amount of turnover or your previous expertise, experience will never be asked, and you will be getting the any amount of order. So immediately they got, after receiving the certificate of startup, they got the order of 50 lakh rupees. So this is one thing which I wanted to means you people to share with all these members who are participating here. But because nobody told, so I thought let's share this thing to you all, because I am heading the startup here in Indore, and this information also was new to me. So I thought to share it with you all, so that it can enlighten so many things. So my kindly question reply to my other two questions which I have asked. Thank you. Okay, Badya ji. Yeah. देखिए दिनेश जी, as far as the other items other than the technical items or technically superior items, I have already mentioned it that most kya hai, it is invariably we procure it through GEM. They have to register through that. All the procurements, including the masks, sanitizers, everything we are procuring through GEM only. We have recently placed the order also through GEM. So this is a mandatory requirement. So that is the reason whether you are MSME or non-MSME, registration through GEM is a primary requirement now for most of these items to be supplied to ONGC. Okay. No, other than that, sir, my question was whether for other expertise, some specific niche product like some engineering goods or some kind of reprocessed material, can we have a tie with the non-SC/ST person and apply in the GEMs for SC/ST benefit? No, for you to get some SC/ST benefit through MSME, you will have to have that that person having 51% minimum ownership in that. This I have mentioned in my presentation also. Yeah, that's what I'm saying. See, suppose somebody is manufacturing some any goods like so for example tarpaulin only example, somebody is exporting, somebody is manufacturing a tarpaulin, and he is a non-SC/ST person, and if I have a tie-up with them with the 51% of the capital, can I apply in that for 4% procurement policy? Yes. There is no restriction. As long as you are meeting that SC/ST requirement, you should be able to do that. Okay, any other person can also be non-SC/ST person. That's not a problem. No. No issue. Confirm, no, sir? No issue, no? Okay, sir. Yeah. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay. So last question. Thank you, yeah, thank you, Mr. Dinesh. Last question, Mr. Abhijit Govare. Yeah, Abhijit ji, yeah, go ahead. Unmute yourself, then go ahead. Last question, Mr. Abhijit Govare. Yeah, go ahead. You first start your video, please. Yeah. Okay, go ahead. Ask your question, please. Yeah, go ahead. Abhijit.
Mr. Abhijit, go ahead. हाँ, start your video first. सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही, बोलिए, go ahead. जी सर, मुझे एक चीज पूछनी है जेम के रिलेटेड, बट मैं नहीं जानता कि क्या मुझे यहाँ पर पूछना चाहिए नहीं. प्लीज आप मुझे सब गाइड करें सर. मुझे जेम में जब भी हम प्रोक्योर करते हैं तो उसकी क्वालिटी के रिलेटेड एक कंसर्न था, क्योंकि हम कभी भी कुछ भी ऐसे खरीदने जाते हैं तो कई बार चीजें ऐसी होती है जहाँ पर हमें क्वालिटी का थोड़ा आइडिया शायद नहीं लग पाए या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उसको कैसे हम सर उस पर ध्यान दे सकते हैं सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक्सपर्टाइज नहीं होती है सर. It's an ONGCN. Abhijit, I suppose you are an ONGCN. I think we can discuss this correct. separately also. Correct. ठीक है सर. Forum may not be there. या गोवारी जी, ये साहब को मिलिए ना. आप कौन सेक्शन में है? सर एचआर सेक्शन में. एचआर में है तो शर्मा जी है वहाँ, महपन साहब है, राव साहब है, उनसे एक बार बात कर. मैं सर से फिर मिल लेता हूँ. ओके, यस, थैंक यू very much once again. Thank you sir. And now with this we have come to an end of the session. This was very informative, very interactive session also. Our thanks to our MM stalwarts, ONGCians, Rao Sahab, then Ved Prakash Sahab, Maheppan Sahab, and then Nikhil Gaur Sahab from Corporate MM Delhi for participating in this discussion and guiding the participants. From organizing team, I sincerely thank you, sir, all of you, for sparing your valuable time, and you are always there to guide the participants. Yeah, thank you, Maheppan Sahab. Thank you. See you again. Yeah, Ved Prakash sir, thank you. Yeah. Thank you, Jagesh ji. Congratulations for such a wonderful organization of the event. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Okay, viewers, now it's time to listen from the overseas entrepreneurs. They are successful in their journey, and they have proved, yes, they can do that. Yes, we can do that. और उन्होंने भारत में नहीं और भारत के बाहर भी जाकर उन्होंने अपना परचम लहराया अपनी सफलता का. और वो अभी ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसमैन है, जो बाहर कंट्रीज में है, तो उनका हम इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं. ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन और ये वेस्टर्न ऑफशोर यूनिट ONGC मुंबई के jointly we are organizing this program. So let us start this program. Let us hear thrilling stories of success, their success, and let us have interaction with them, with our successful entrepreneurs, overseas entrepreneurs. So to start with, I welcome Mr. Pinder Paul, but I think Pinder Paul ji is in New York, and now presently the condition is not like that he will be here with us, क्योंकि वहाँ पे storm चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है और काफी बड़ा वो snowfall हुआ है. So he may not be available, but he will be later on join this program. So I invite Mr. Prashant Golghate. He will be joining from Tokyo, Japan. Prashant ji, Jai Bhim. And yeah, just a minute. Yeah, please unmute. Yeah, Prashant ji. Jai Bhim. Good evening from India. And yes, we are really grateful to you for sparing your valuable time for this and agreeing to join us for this program. और किन शब्दों में आपका हम शुक्रिया अदा करें, वो अभी समझ में नहीं आ रहा है. But you have proved that yes, success can be through hard work, तो passion होना चाहिए इसका, entrepreneurship का, business का. And you left India so many years back, okay, almost 20 years work experience and expertise in a variety of management, market research, advisory, consulting, execution, and business development roles. You are basically from Nagpur, yes, I know. You are the chairman of Japan India Industry Promotion Association, JIIPA. After graduation, you joined
India Trade Promotion Organization ITPO, or Government of India CPSC in 2004 as a deputy manager and deployed to Tokyo, Japan. You were involved in promoting India's trade in Japan through various B2B and BSM events in India and Japan. In 2009, started an organization, Japan in India Industry Promotion Association in Tokyo. So since its inception, JIIPA has become the Silk Route for promoting industries, technologies, services, companies, and market opportunities between the countries, and also facilitating trade, B2B, B2G industry seminars, joint ventures, technical tie-ups, and investment in across the sectors for various councils of India and Japan. You have been playing significant role in strengthening the economic and business relation between Japan and India. So, Prashantji, Yeah. with this very brief introduction, I am really very excited to welcome you to this program. Mr. Sanjay Khandagale, he is also joining. Khandagale साहब, जय भीम. Yeah. जय भीम संजय जी, जय भीम. और इधर विशाल ढोके जी is joining from UK, London. विशाल जी, जय भीम. Good evening from India. Yeah. और खंडागले साहब जो बहरीन से हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, और पिंदर पॉल जी का हम वेट करेंगे. सो लेट अस वेट फॉर हिम, अगर वो आते हैं तो. सो टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम, ओवरसीज इंडियंस, सक्सेसफुल इंडियंस एंटरप्रेन्योर्स. So I request Mr. Prashant Godghate, he is the chairman of Japan India Industry Promotion Association, to start his presentation, please, and guide and encourage our entrepreneurs, those who are waiting since morning for this, for your words. Mr. Prashant Godghate, please. Yeah, Jai Bhim everyone. This is Prashant Godghate from Japan. I'm speaking from Tokyo now. So I'm here in Japan since last 16 years. So as introduced by Mr. Rajesh Somkuaji, I am an chairman of Japan India Industry Promotion Association. So basically, I'm from Nagpur. I'm here since past 16 years. So my background is I'm just a commerce graduate. So you can imagine, like if a commerce graduate can come to Japan and establish their own company, so why can't we like a general people who is a commerce or our graduate or engineer, whatever? Why can't we start our own company? So to start a company in Japan is not that easy, but since I have done it in Japan, surely maybe you can explore the same opportunity in India and do the export opportunity in across India and all over world. So I would like to guide upon how to do exports overseas. So basically, I am involved into facilitating trade, investment, joint venture, technical tie-up between India and Japanese industry. So whatever Indian industry they want to do business in Japan, so I help them to grow their business. I help them to have a joint venture or technical tie-up between Japanese industry and Indian industry. So guys, I have a lot of experience here in Japan, and I know buyers in across all the sectors. So first of all, I like to encourage all our community people to start a business. Like why we can do export business very easily. So you don't want to be a manufacturer. It's okay to be a manufacturer, but even if you don't want to spend or invest so much money. Okay, sorry. So even if you are not able to manufacture any goods, so you can explore those opportunities with getting some products from the market and explore export opportunity in overseas. So say if you want to start an export business, get know-how of one product. Say if you want to manufacture a scarf, so get know-how of scarf in what kind of fabric you can manufacture this scarf, in silk, in wool, in pashmina, whatever. So get know-how of that one product. You can either manufacture by yourself, or there are many
small manufacturers or artisans in India. They do manufacture handmade products in India, but they don't have exposure to export those things in overseas. So you can join hands with them. You can take their goods and you can explore the export opportunity. To explore export opportunity, you have to be like if you are a garment manufacturer, you have to be a member of some councils in India, like Apparel Export Promotion Council or Silk Export Promotion Council. So that membership is just 5,000 rupees a year. So with this, if you become an exporter, then you will get ample of opportunity to export, not only in Japan, but all over the world. So they, as a export promotion body, their job is to explore export opportunity overseas. So they do participate in overseas events across the world. So you can do participate in event and you can explore export opportunity. So for participating in an event for SC/ST communities, we have subsidy from NSIC. So NSIC gives 100% subsidy to SC/ST community exporters. So, for example, you don't need to pay any participation charges, travel expenses, or accommodation expenses, all covered by NSIC. So you can be, participate in overseas event at zero cost. You just have to go there and display your products and get the product inquiry for the entire year. So if we get even one inquiry, and if it is like for a year, so you can easily survive and you can get easily, benefit from it. So similarly, like you can be registered to many councils in India like AEPC or Silk Export Promotion Council or WWEPC. So it's just a 5,000 rupees per year. So you can explore those market opportunity through them. So it doesn't need to be a manufacturer. As I told you, like there are many artisans in India who made handmade products, and they are they don't explore the market opportunity. So you can join hands with them. There is now a boom of e-commerce segment, so you can also sell through e-commerce website in India and also to the overseas world. Yeah, and I'm in Japan, and for any kind of business opportunity, I'll be very glad to help you or assist our community people to explore export business in Japan. And even we have experts in all kind of industries like textile or automotive or food or pharmaceutical or chemical. So if you are planning to do some business, do let us know. We can get the experts from Japan to send to India and develop a factory as per Japanese standard. And once you are able to do export to Japan, so guys, it's one of the stringent market in across the world. Once you are able to do export to Japan, you can export to any other countries. Any single product you have to choose and get know-how of that product, and you can explore the export opportunity of that product. Yes, Somkor ji, yeah, that's it from my side. So if there is any question, I can guide. Okay, we'll take one or two questions if questions are there. Yeah, viewers, participants, any question from your side to Mr. Prashant Golghate? I joined directly from Tokyo, Japan. Okay, I think we'll have to wait for some time. But anyway, प्रशांत जी, thanks a lot for आपको बहुत इंतजार करवाया मैंने, क्योंकि हमारा सेशन काफी लंबा चला ना, उसके लिए इसलिए हम लोग थोड़ा अच्छा. एक समुद्री जी है, he is asking something. Mr. Sonal, yeah, there are two questions I think. Just yeah, Sonal साहब, go ahead please. Yeah, brief में question पूछिए, brief में, short. Yeah. Unmute yourself, then ask your question. Please unmute yourself. First unmute yourself, Sonali sahab. Sonali sahab. Oh, you are not audible. You are not audible. You can unmute.
Jagesh, you can unmute him as a host. Hello. Yeah, now it's okay. Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. हाँ हाँ बहुत बहुत मुबारक हो प्रशांत जी थैंक यू सर। और या जय भीम एंड गुड आफ्टरनून। तो बहुत सुना था आपके बारे में और आज देख भी रहे हैं, तो बड़ी खुशी है कि आपने, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको जापान में जाके बिजनेस खोलने का ये इंस्पिरेशन ये कहाँ से मिला एक्चुअली? कई स्पार्क तो हुआ है जरूर, तो वो थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे जो बाकी जो लोग हैं सुन रहे हैं उनको भी, वो भी अब जापान में आएंगे। या सो सर मेरा बैकग्राउंड है कि मैं पहले इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करता था, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। तो वहाँ से मुझे जापान में जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ काम करते करते जापानीज लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध बनाए। तो जब समय आया वापस जाने का इंडिया, तो मैंने छोड़ दिया जॉब, इंडियन गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का कोशिश किया, क्योंकि वो समय था कि इंडिया और जापान के बीच में बिजनेस का ट्रेंड बहुत बढ़ने वाला था। तो उस अपॉर्चुनिटी को मैंने डेवलप करने की कोशिश की और कुछ जापानीज लोग थे, उनके साथ में मिलकर एसोसिएशन चालू किया और आज वो एसोसिएशन का मैं एक यानी जापानीज लोगों के ऊपर में जाके अपन एक चेयरमैन बन चुका हूँ वहाँ पर। तो यही था कि यानी क्यों जॉब करें ना, यानी अभी तक तो जॉब अपन ने करते ही आए हैं, तो लेट्स स्टार्ट सम डिफरेंट थिंग्स। सो यहाँ पर जापान में भी बहुत सारे लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो इंजीनियरिंग जॉब में, आईटी जॉब में, अपने जॉब में व्यस्त होते हैं। बट मैं जब जापानीज लोगों से मिलता था और उनके साथ में बैठ के बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उनके लिए मैं क्रिएट करता था जापान से इंडिया के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ये काम करूं और उनको हेल्प करूं इंडिया में बिजनेस डेवलप करने के लिए उनके साथ में। तो इसके लिए मैंने खुद का ऑर्गेनाइजेशन चालू किया यहाँ पर। Okay, thank you. Yeah, wonderful, really wonderful. Yeah, congratulations once again. And we are proud of him. We are proud of you, Prashant ji. और Mr. Last question for you, Mr. Samudre. Yeah, brief में थोड़ा पूछे, Mr. Samudre. Yeah, go ahead. Good afternoon, Prashant ji. Jai Bhim. Jai Bhim. Samudre here. Jai Bhim. Yeah, go ahead. I wanted to ask you a question regarding honey. Honey? Yes, sir. Is there a market for honey in Japan? Okay. From India, can we export honey from India to Japan? And is there a market for Indian honey in Japan, sir? Yeah, we are already importing honey from Medghat, from Maharashtra, and we are giving to Eon Superstore in Japan and some super chain store in Japan. So yeah, honey is being imported from India very well, and Medghat honey is very famous in Japan. I see, sir. So we have about 24 varieties of honey, which are classified into three: organic, infused, and natural, sir. Yeah. So basically, organic honey is very much in demand in Japan. Okay. So we can definitely explore if you can send me a product catalog. So I myself is very much interested to represent your company in Japan, and we can definitely explore a business here for you. Amazing. Would it be possible for you to share me your details, sir, as to how I can, send my product catalog to you via your mail and your number? Yeah, I'm texting on the chat here my mobile number and email address, so you can reach to me anytime. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Thank you, Prashant ji. Thank you, Somko ji. Yeah, I'm here, so I can hear. Oh yes. Sanjay Khandagade, my friend, and fine. Sonali, my friend. Yeah. Yeah. So viewers, now let us move to next speaker, next successful business leader who is in Bahrain now, Mr. Sanjay Khandagade, and Captain Amol Yadav. He has also joined, and Mr. Sharad Sonone from Dubai, he has also joined. So welcome all of you guys. We are really very happy to see you here
in this program organized by All India SCST Employees Welfare Association and our organization ONGC. Since you are there since morning you are there, I noticed that Mr. Sharad and Captain Amol also. Thanks a lot to you. And now Mr. Sanjay Khandagle is basically an engineering graduate with MBA with interest in psychology and an expert in hand in EPC startup in onshore and offshore in oil and gas industry. A multifaceted personality with an overall experience in building organization for EPC projects in the field of oil and gas and manufacturing sector. A career spanning 28 years with a rounded experience as an engineer, terminal manager, safety in charge, production in charge, marketing and HR, project manager, strategy, etc. Held senior position is head strategy, chief operations officer, managing director, oil and gas, CEO, and now is a partner director in two companies in the engineering and construction sector in Bahrain. A passion to build sustainable EPC organization in various geographical locations. Please mute your mic. Please mute your mic. Please mute your mic. Okay. He has ventured in MENA market and is successful due to his influential network and ability to get projects, capital, and manpower resources from all across the world. He believes that there are immense opportunities provided if you have the capacity to convert problems and uh, challenges into unimaginable opportunities. This is very, very true. This is very important line. His hobby is to travel and get to know the people and their cultures, with reader, master coach for CEOs, and loves to conduct leadership seminars. So we'll be inviting you for the next seminar for on leadership. He is a founder member of our Forum for Emotional Intelligence Learning and has presented papers as far as leadership, fundamental leadership. Has been a mentor and a coach to senior members of various business units in India and abroad. He has been an advisor for National Oil Company BAPCO for last 3 years and is now MD of two companies, Signet International WLL in Bahrain and Vishal Structurals WLL. So let us, with a round of applause, let us welcome Mr. Sanjay Kandagale ji. Jai Bhim Kandagale ji, Sanjay ji. Now you go ahead, please share your experience, your journey in this field. Jagesh, yeah. Jagesh, thank you for the wonderful introduction. Let me tell you that I am a product of public sector enterprise and also the product of SCST associations. I led the SCST association of HPCL in a very able way. We took up a lot of challenges, and even the 4% allocation of quota for SCST was initiated much before we started. So all this has led to building of excellent leadership capabilities. So I'm thankful to the public sector that I worked in, and all the best talents have been groomed by the public sector. And hence you see, so whatever best talent is available in India, it is all because of the public sector organizations like the oil companies, especially ONGC and stuff. Okay. My topic you have given is business mantras. Okay. And I will stick to that because I believe in business etiquettes more than anybody else. So I will be basically giving you 4 mantras. Okay. And one particular mantra that I will start with is entrepreneurship is common sense, yet it is so uncommon. Okay. Number 1, entrepreneurship is common sense, yet it is so uncommon. The second mantra that I am going to dwell upon is do your best and be prepared for the worst. That is the second mantra. The third mantra that I would like to really emphasize on that business is not busyness. Okay. Time is money. So business is not business. This is the third mantra. And the fourth mantra is cash is the key. Okay.
So whosoever holds the cash holds the key to success. Okay, so those are the 4 mantras that I'm going to talk, and I will integrate with my little bit journey in the 10 minutes that I have in order to make it sense for the All India SST Welfare Association guys, the vendors, and of all the people, the management who has given so much support of ONGC and the employees of ONGC as such. Okay, so entrepreneurship is common sense. Okay, yet it is so uncommon. Okay, if you really want to be an entrepreneur, okay, you need to have the opportunity to use your common sense, okay, and get ideas, get innovative ideas, and get into the game. Okay, most often than not, okay, we do not have the common sense in order to create opportunities out of the problems and challenges that we face. Okay, so adversity is the mother of invention. So same thing with entrepreneurship. You can get innumerable ideas, and once you execute one of those ideas, you become successful. Okay, let me tell you that in big organizations also, how common sense is so uncommon, and one person with an entrepreneurial spirit can make a difference. Okay, this is a company called as 3M, who are very good in whatever they do, especially in the field of chemicals. And one of the team members came out they started with a product for getting a very strong adhesive, and ultimately that guy landed up with a very weak adhesive. Okay, everybody refuted him, everybody insulted him, but there was one entrepreneur who came up and said, oh, this fellow has developed such a great thing, okay, that it can be used for post-it notes. And the post-it notes that you see, small yellow post-it notes, okay, those are the post-it notes that come with a weak adhesive. So you can stick it anywhere, remove it anywhere at any point in time. And for 3M, this was a booming business which brought in the best of the profitability for 3M. Okay, so common sense is entrepreneurship is common sense, yet it is so uncommon. Okay, so once you start business, once you want to really get into business, try to use your common sense to the maximum, because it is so uncommon in the common population. Okay, so any entrepreneurship idea that you want to develop on, okay, you have to use your common sense and look at various opportunities, thousands of opportunities that are lying elsewhere, okay, that can be tapped into. One such opportunity, I guided one of the organization who is into business of taking over, okay, defaulted loans, and they have created a fortune for themselves. Okay, what the company does is takes the data from the banks and then tries to pacify the people in order to pay back their loans, and they are making a fortune out of it. So these are the 2 ideas that I want to throw you, okay, in order to really understand that common sense is so uncommon. Okay, and all entrepreneurs needs to use their common sense. Okay, the second mantra that I would like to highlight on is do your best and be prepared for the worst. In business, you have to always do your best during the worst of the times, okay, and be prepared for the worst. Nobody in the world thought that COVID vaccine will really impact the entire business and you will be out of business for a year or so. But nevertheless, COVID has come in. Okay, how many industries were really prepared for that? Okay, 0. Okay, but then industries who have really managed their business risk portfolios well, okay, they have tried to reduce the impact of losses. Okay, they might not have made profits, but they certainly didn't lose that much as others have lost. So doing your best and being prepared for the worst is one of the cornerstones of a successful businessman. So any entrepreneur who wants to really do great business, he needs to know what is he best in, try to apply with confidence whatever is there, and try to contribute it to the best of his ability. Okay, the other thing is manage risk well so that you don't land up into problems in the long run. So do your best and prepared for the worst. So confidence and contribution can really help boost your way in order to do your best and be prepared for the worst. Okay, the third mantra that I wish to tell you is that business is not busyness. Most often than not, in the guise of doing business,
you keep yourself occupied with so many 80% of the useless things that are not urgent and important, and you waste your time on the precious, you lose time on the precious 20% of the items that you need to focus and move ahead. Okay, so business is not business, time is money. For business, the moment you start your business and have some investment in place and get going from day zero onwards, you need to be very, very clear that business is not business and time is money. Okay, so time lost is money lost. If you are able to really bring that into your conscious and try to set up a positive mental model that my time is precious, okay, my business should reduce and I should be effective, then you will be really implementing the mantra that business is not business and time is money. Okay, so mind you well, you have a limited lifespan and you need to make valuable contribution, okay, in the way that you need to manage your own self and manage your relationship and manage the entire social standing in order to really move ahead. Unfortunately, we lose a lot of time, and that is what is the issue here. Okay, the last mantra that I'm going to tell you is cash is the key. Businesses survive if they are able to really manage their cash flows very well. Okay, now there are, if you are not able to manage your cash flows well, then even if you are a big monolith company or the best of the companies, you can collapse in no time. You have seen the best of the companies that have collapsed. Okay, in just one decision making, they have collapsed. Okay, so I can tell you about a 150-year-old institution of a Barings Bank. Okay, it was one of the most prestigious banks in the world, but one person came in as the CEO called as Nick Leeson, and what he did to the bank was he collapsed the bank in no time. Okay, so if you are able to manage your cash well and don't take any wild decisions, okay, take all calculated decisions well and manage your risk well, okay, then you will be able to have sustained cash flows in the organization. Okay, now in an uncertain time like the COVID times that we are in, okay, managing cash is going to be difficult because banks are not able to lend you. Okay, market is not able to lend you money. Okay, you are at a loss, yet you should be able to manage your cash flows well by preparing enough insurance and managing your risk well. So for all the ONGCNs, okay, for all the entrepreneurs, SCST entrepreneurs who are there, for the entire team of All India SCST Welfare Association, okay, and the vendors who have registered, okay, and the budding entrepreneurs, I would suggest that be careful and be very clear about these 4 mantras. Okay, entrepreneurship is common sense, yet it is very uncommon. Second mantra is do your best and be prepared for the worst. Third is business is not business. Okay, time is money, so we value that. And last is, if you have to do business successfully, you need to manage your cash well, and cash is the key. So I thank you for the wonderful opportunity for me to speak. I will be open to serve society in whatever way possible. I thank everyone for supporting me in whatever I am today. My public sector organization, my All India SCST team that made me the leader for around 5-6 years. Okay, we did great challenges along with Mr. Sonare Saab, who was there on the panel right now. So I'm really happy that such an initiative is taken by Jagesh for the benefit and learning of all. Thank you so much, Jagesh, for the wonderful opportunity. Thank you, Sanjay bhai. Thank you for this wonderful address and giving very useful mantras for our budding entrepreneurs. Managing time and managing cash flow and managing your social and personal life also. So really, we are grateful to you for only one call और आप आ गए. Yes. बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पहली बार हम लोग मिल रहे हैं. आपके बारे में बहुत सुना था. My friend Jay Prakash is there. He has also joined this program. Right.
तो उनसे बहुत बार आपके बारे में सुना था, बाकी दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी टू मीट यू, and we'll be conducting more webinars on the leadership development and and managing your business or etc etc. Okay, thank you very much once again for joining us. Thank And you, my pleasure. And be with us, thank you. Sure. Okay, thank you. Now next speaker is Mr. Vishal Gokhe. Vishal Gokhe is joining from London, UK, and brief में थोड़ा उनका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, बाकी ज़्यादा उनके बारे में वो थोड़ा अगर बताएंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आईटी सेक्टर में अभी बिजनेस कर रहे हैं यूके में। और बेसिकली जैसे लास्ट टाइम हमारा काफ़ी चैट हुआ व्हाट्सएप पे, वो बोल रहे हैं कि बेसिकली केमिकल इंजीनियर फ्रॉम त्रिची एनआईटी और बाद में उन्होंने ही स्विच ओवर टू दिस एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम कहेंगे पहले आईटी में, देन फाइनेंस में। इस बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है विशाल जी का। सो विशाल जी, जय भीम एंड वेलकम टू यू। एंड या थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा बता देता हूँ आपके बारे में। वास्टली एक्सपीरियंस एंड सेल्फ मोटिवेटेड टेक्निकल डिलीवरी मैनेजर with excellent leadership, communication, and IT skills, backed with an impressive track record of successfully delivering IT solutions for various regulatory and business change initiatives for clients in banking and financial industry sector over the past 14 plus years. His experience in providing management services for high profile regulatory integration, cost saving, and revenue generation programs in top tier 1 bank. Uh, though leadership in an onshore, offshore resource matrix at the cutting edge of retail banking, IT development, including a broad range of experience delivering IT, business, change, product, technical, and creative projects, including multi-vendor and scaled agile environmentals, creation of roadmaps with delivery of products, feature sets, budget and forecasting, software development, agile and waterfall delivery, process improvement, prototyping, strategy, infrastructure and support, data science, live rollout, stakeholder, team leading, release management and implementation. His specialization in banks, all integrated application, platforms and technologies. उन्होंने बहुत सारे एमएनसीज में काम किया हुआ है, और उनके बारे में और भी कुछ बोलना है, उनके बारे में बताना है, उनको शेयर करना है हमारे साथ में. So he is most welcome, Mr. Vishal Gokhe. Is joining from London. Yeah, Gokhe ji, go ahead, please. Jevim, am I audible now? Oh, yes, you are audible. Yeah, go ahead. Yes. Thank you for giving me an opportunity. And as you have given a very brief introduction about myself, and I'm not a very, I wouldn't call myself a very successful entrepreneur like the Sanjay and the Prashant sir, who has been in this industry since long time and has provided their vast experience and the knowledge. Okay. So I'll start especially about the entrepreneurs. Like entrepreneurs, you can see the qualities, from the childhood itself. Like if I have to compare myself, our generations, I would call my second generations might be into the entrepreneurs or the business. Earlier, most of us, our society was into they were lack of education, obviously. Then immediately they started getting the education, then they started getting the job into that. But I think entrepreneurs and business, I would call this generation or the last generation, the most of our people are getting into it. And still there are a lot of people has to come. I think we do believe that entrepreneurship is the long way to go. Job, obviously people choose, and even myself was in a situation or dilemma so many times in my life, whether I should go for a secure job or I should go for the entrepreneurs or the business side of it. So early stages of life, obviously, I know the family's background and financial stuffs had to start working as during schooling days itself. So you had to work and you get a salary at the month of it. But then there were some kind of events like melas or our Diksha Bhumi's programs or some other stuff where you do a one-time business, but you earn more than what you earn in a whole month of salary.
So you can see in that point itself that, well, the more effort you put into the entrepreneurs or the business, you will get more outcome of it. Your effort, your talent, it considers. You interact with so many people during that entrepreneurship or any business that you do at that time. Okay, so I learned from my childhood that I have to go into the entrepreneurs or the business side in the end of my life. And but obviously, due to financials, you cannot jump straight away into the business or any entrepreneurship ideas. So graduated in RSC, as you mentioned, then got a job, and doing in business was was always in the back of my mind. But then obviously there was a trend of going on site, and being in out of country was also very attractive at that time. So obviously I got a job and then moved to the UK to the job. IT sector was the easiest way, I would call, that time to get into the on-site side. So, and then my continue as an IT engineer and in the banking and financial domains. But after, because that when you have in your mind that entrepreneurship or business stuff, that will always go in your mind every time you do the job, that are we really doing the justice to yourself or not? And then you pick up, and after so many years, getting life settled into life and all those things, then I decided at one time. And I think this particular point, comes in everyone's life. At what point you have to jump from your salaried job to the business. When you start or any business, you may not match your salary, whatever you've been get salaried that time. And you might struggle it at some point of time, because to match to what you're earning, it takes times. You might successful, you might not successful. Okay. But when you see the longer picture, you decide. And that is what I had to do at that time. And there was obviously, as Sanjay and Prashashan said, there are a lot of benefits, and everyone suggested how the entrepreneurship has grown. So the benefits I have seen in the longer term, the salaried person, I can earn myself, I can feed my family all together, but I cannot provide an employment to our community. I cannot support a lot to our community in India. So that is where I jumped into the business side of it. So I initially started with my IT consultancy into banking and financial domain and the IT sectors into the UK. So I have been doing that since like 4-5 years now. So we are providing the development, consultancy, the banking, all the stuffs into the all banks. I have all my 15 years of experience in banking and financial sector, and we are providing that services to the all banking. So recently during this COVID, obviously, so now it's time to expand our businesses. So what we are doing is now getting our students mainly, developing them. When they graduate, the first stage of them is to get a job, obviously, somewhere, and it's very difficult. So, okay. So what we are trying is to develop them, okay, and get them ready with the experience and all. And we are also providing them as a company experience and trying to get them out of the India if possible, okay, and then training them here and then employing them. So obviously entrepreneurship, and when you talk about the vendors and the products, you do provide the products, but the human resource and the talent is also a one product, we call, which is a unique, and our community has a lot, but because of lack of confidence, I would say, or the lack of communications and other skills, we are very resistant or limit ourselves at that point. So exploring that opportunities and trying to bring them out and get them out of India is first our aim or mission that we are targeting now at the moment. Then, so as I think I did mention to Jagesh sir yesterday that we have started an academy to train our students as well. So whoever the student who can't afford to pay the fees to get this highly technical languages and all those things,
So we are training them free. We are giving them free education so that they can stand themselves into this competitive market. And then with that, the other companies during this COVID, we are seeing that many the IT particularly, because I'm in the IT sector, I might talk mostly on the IT side. So being working at the home and continuously watching and the screen the whole day, you go into the depression or you go into the lowness of your life. So we have started a mindfulness and resilience program to encourage and get liveliness out of it, the well-being out of yourself into that one. So we are providing that program and consultancy to the corporates here and internationally. So that will just to get all our community people or the outside people to get out of this whole COVID era, I would call it. Then the third ventures that we are starting next year is about the recruitment agency here, as I said, because during the Brexit of in UK, we are separating from Europe. So a lot of opportunities are going to open next year in UK, including this IT or non-IT as well. I would call it. I can see a lot of vendors are here who has a lot of different products and they wanted to sell it. So yes, UK is a very good ongoing opportunity from next year due to Brexit. And we are like recently one of our communities, so we had one fabric order from them. They're just going to reach next week in UK. So we are also helping them to expand their business out of India to UK. We are not in any particular sector, but anyone who wanted to expand their business out of India, we are helping them, as we have a business setup here, like what Prashantji has suggested, and they are doing into the Japan. So similar activity we are doing in UK as well. Whoever wants to have any kind of products and they are qualified to sell into UK and all other countries, UK and Europe. So we are helping them and getting their products out of UK, out of India to UK. So these kind of things that we are still working on. Obviously, it's not very successful, or we're just starting it off now in this year. But that is what we are doing, and we obviously would like to help and our entrepreneurs or the vendors or business people to expand their businesses in UK. I think Jay sir. ओके थैंक यू विशाल भाई, और बहुत बढ़िया सा आपने आपका जो एक्सपीरियंस है, अपना कैसे लॉन्च हुआ, आपका जो आपका आईटी इंडस्ट्री है, बाकी और भी जो आपने बातें बताई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। और हमारे जितने भी आज के जितने जो एस्टेब्लिश और जो बडिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने कुछ उससे लिया है, और आपने और भी चीज़ बताया है कि यूके में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर दिस ब्रेक्सिट और बाकी जो चीज़ें हैं। सो लेट अस होप कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं है इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, दे विल बी इन टच विथ यू एज फार एज फर्दर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप एरिया, वहाँ कुछ अगर करना है, सो यू कैन यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड योर नंबर हियर। या So viewers, you can note down and you can get in touch with Vishal sir. He's very social person as far as I know since last night. ये बहुत वो मतलब दिल रखते हैं और कुछ करने की इच्छा है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, एंड ही इज डूइंग कंटिन्यूअसली। जितने भी हमारे आज के स्पीकर्स हैं, इंक्लूडिंग शरद भाई है, प्रशांत साहब तो खैर जापान में है तो वो तो कई सालों से कर ही रहे हैं, और संजय भाई इज आल्सो देयर, कैप्टन अमोल इज आल्सो देयर, नो। So these are all role models for our society, So we have to learn something from them, yeah. And thank you, Vishal ji, for joining us and sharing your experience and knowledge, and for encouraging our viewers, our participants. And I hope to see you soon again in next program. Yeah. Thank you please, very much. yeah, thank you. Please be with us. Okay, participants. Now, next speaker is Mr. Sharad Sonone. He's basically from Akola, Maharashtra. He's a student of Sardar Patel College of Engineering, Mumbai, and settled in Dubai now presently. और आपको और एक चीज़ बताओ कि जो
मराठी मूवी जो आई थी ना सैराट, ब्लॉकबस्टर जिसको हम बोलते हैं, ब्लॉकबस्टर मूवी जो थी सैराट, उसका लॉन्चिंग जो है वहाँ पे रिलीजिंग जो है यूएई में वो उनके कंपनी द्वारा हुआ है सैराट का। और पूरा वो राजगुरु रिंकू एंड वो अपना मंजूड़े जी और पूरा उनका टीम वहाँ गया, उन्होंने वीडियो भी शेयर किया था हमसे, वो हमने देखा। So let us welcome with a round of applause to Mr. Sharad Sonone. He is son of Pandurang Sonone. He is basically a mechanical engineer. मेरा फील्ड मैं भी मैकेनिकल वाला हूँ। और जैसे मैंने बताया कि he came from working in one oil and gas company in UAE in 2005, and now he owns a business जो है SKS Events and एग्जीबिशन। उनका बिजनेस उनका जो नाम है कंपनी का वो SKS इवेंट्स एंड एग्जीबिशन है। उनका जो इवेंट्स जो पास में उन्होंने किए हैं वो है अजय अतुल म्यूजिकल नाइट इन दुबई इन 2015, या अजय अतुल का बारे में सुना होगा ना, म्यूजिशियन, या देन MICTA मराठी इंटरनेशनल सिनेमा थिएटर अवार्ड इन 2016। देन एज आई टोल्ड यू सैराट का जो रिलीजिंग हुआ यूएई में वो उनकी कंपनी द्वारा हुआ। देन वॉइस ऑफ यूएई विथ कविता कृष्णमूर्ति, रिनाउंड सिंगर, in 2018 he started manufacturing unit, interior and fit out workshop, exhibition stands making in UAE since 2017. He is very passionate about social work and very fond of music also, और बहुत अच्छा गाना गाते हैं। और उनके बारे में जितना भी इस बारे में कहा जाए, इज वर्सटाइल पर्सनालिटी, very extremely talented and extremely passionate. So let us welcome Mr. Sharad, and thanks Sharad for joining us and giving this opportunity to invite Sanjay bhai and Vishal bhai and Prashant ji and everybody. Because of you ये सब हुआ, otherwise it would not have happened. Thank you Sharad bhai. Yeah, go ahead. Am I audible? Can everyone hear me? Yes, go ahead. Yes, everyone hear me, right? Yeah. Okay. My name is Sharad. I'm in Dubai right now. अभी दोपहर के 3:15 बजे हैं, मतलब 1.5 घंटा आपसे पीछे चल रहे हैं। एंड रियली मिस्टर जागेश, आई हैव सीन द प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम, आई एम सिटिंग एंड सीइंग हियर, और मैं थोड़ा भी बोर नहीं हुआ। एवरी स्पीकर, द बॉसेस हैव स्पोक वेल रियली, एंड एवरीथिंग इज वेरी मच इंफॉर्मेटिव, and I really appreciate the type of efforts you people have taken to do this. I will mix up my Hindi and English talk, and I just want to share my own experiences of life. How did I arrive to Dubai? और मैंने कैसे चालू किया, बेसिकली how did I come into this? So I'm a mechanical engineer and I never wanted to come abroad. खुश था, बॉम्बे में था, जॉब कर रहा था, बट ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई जहाँ मुझे कुवैत जाना पड़ा कुछ इंस्पेक्शन वर्क के लिए, एंड देन दैट prolonged for 3 months, which was actually planned for a week, which was I was not happy for. वो होते होते फिर इसके 8 महीने हो गए. Every month then I used to come back from Kuwait and then go back to Kuwait for the inspection purposes. वहाँ से फिर मुझे कोई ऑफर मिली, मैं दुबई में आ गया, but still I was thinking always कि जाना है, इंडिया में कुछ करना है. I came into oil and gas sector. I'm 27 years into oil and gas sector now. 94 में पास आउट हुआ था मैं एसपी कॉलेज से, and everything was going good till the time I realized myself कि मुझे लगता था कि मैं एक कंपनी में ऑयल एंड गैस में नौकरी कर रहा हूँ, and then is it that end of my life, like one fine day it will come to my end of life, and then I died as a manager of oil and gas company. तो इसके अलावा मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सोच आती थी मेरे माइंड में. And then that life was calling me back when जब मैं कॉलेज में था, मैं गाने गाता था, then people used to admire me, people used to like praise me कि अच्छा गाता है and all that. So I thought, is it that my life is finished? So ये सोच के वजह से फिर मैंने थोड़ा गाना गाना चाहिए करके मैंने अपने आवाज़ को फिर से ठीक करना, गा के देखना, बाथरूम में गा के देखना, वहाँ से शुरू किया फिर से. When I was singing, I stopped singing, and then further कैसे करूँ, अभी तो गाता भी नहीं अच्छा. अभी दोस्त बोलते हैं गाता है क्या आजकल, so I said नहीं यार आजकल नहीं गाता. क्यों यार, साले तू अकेला ही तो था जो गाता था, बाकी सब इंजीनियर थे, ठीक, because you had one more added quality, so why you have spoiled that. तो मुझे रियलाइज होने लगा कि मैंने स्पॉइल कर दिया लगता है शायद. So I started to I thought of recollecting it once again in my life.
तो वो करते करते then I started singing and started singing. Then the events were calling me. मैं कॉलेज में भी इवेंट्स करता था, मैं कॉलेज में भी कल्चरल सेक्रेटरी रहा हूँ. तो आई थॉट कि मुझे ये कुछ करना चाहिए. So as you mentioned, Jagesh sab, Ajay Atul show, the first show I did, which was the biggest hit of this country. यहाँ पे मराठी इवेंट अभी तक मराठी मंडल जो करता है, यहाँ पे मराठी मंडल जो 150-200 लोगों के लेके तबला पीटी पे इवेंट करने वाले लोग हैं. तो इसके आगे 150-200 के आगे कभी वो लोग एक जून नहीं जमा पाए, मतलब दी ऑडियंस दे कुड नॉट गेट. जहां मैंने 5000 लेके अजय अतुल शो पहला हिट मार दिया. So कहने का मतलब था, then when I did this event, it was only passion. I want to tell to all the viewers here and all the entrepreneurs here, it was only passion who got me here. कि करना है. So what करना है, तो ये इवेंट करना है. तो कैसे करना है, I did not look into कि मुझे पैसा कौन देने वाला इवेंट के लिए. मैंने बोला इवेंट करना है. मैंने अजय अतुल से डायरेक्ट एक मैनेजर से बात कर लिया. I came to SLH Film Studio. I sat along with them. I got them from Pune कि आ जाओ मीटिंग करेंगे. And I told them मेरे जेब में पैसा पड़ा हुआ है, आपका इवेंट. And that time I did not have any sponsor. I do not know how I'm going to do such a big event. काफी बड़ा event था ये. And when I came back, then I started realizing मैं बात तो करके आया बड़ी, लेकिन अब event कैसे करेंगे? And I'm still working. Okay, that time I'm still working. Event कैसे करेंगे? Then I went out in the market and then started talking to the people and started gathering the sponsorship amount. But मुझे ये बात बतानी है यहाँ viewers को, यहाँ entrepreneurs को कि मैं प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा मैं अपने आप को बेच रहा था. सो माय कॉन्फिडेंस वाज कि मैं ये बोलता था कि तुम आओ या ना आओ, तुम पैसा दो या ना दो, ये इवेंट होने वाला है और ये बहुत बड़ा इवेंट है. इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, प्लीज पे. सो दैट कॉन्फिडेंस वाज सो बिग कि मुझे स्पॉन्सरशिप अच्छे से मिल गए. मतलब इट वाज वेरी बिग इवेंट एंड देन इट वाज इन अ वेरी फेमस दुबई में अल नसार स्टेडियम है, वहां पे मैंने इवेंट किया था. So that boosted up my confidence. It has not only boosted up my confidence, it has boosted up the confidence of all the Maharashtrians in Dubai, or in UAE. I mean, यार इतना बड़ा भी हो सकता है. And Mahesh Manjrekar came searching me कि ये event हमको तुम्हारे से ही करना है. तो I did his mikta. Then mikta करने के बाद में मेरा confidence built up हो गया कि मैंने कुछ करना है. So then actually I formed the company. And both the events I have done from another company. जो कोई इवेंट नहीं करता था, जो उसको पैसा देके उसकी इवेंट कंपनी खरीद के टाइमिंग के लिए, for I purchased that company for timing to do these events. Then I formatted my own company and then started doing other events. So Sairat was done in our own company, which is called SKS Events and Exhibition, which you have referred about. And with that boosting, my wife joined me. Initially हम लोग को लगता था कि हम कर नहीं पाएंगे, इतना बड़ा करना है. So my wife was still calculating on me. देखो मत करो, सोचो, नौकरी ठीक है. But then जब ये event हुआ, मिक्टा हो गया. When we have seen मिक्टा was such a huge event, then for release of Sairat, she joined me hands together. So while doing this event, then we thought like इसमें थोड़ा professionally चलते हैं, धीरे-धीरे चलते हैं, professionally चलते हैं. Still I am working. Okay, and then when she took the place and she boosted, I mean, when she came in, my energy boosted double. कि चलो कर सकते हैं, चलो बीबी भी साथ में है. So then that brought us to the exhibition industry. अभी हम लोग exhibitions करते हैं. If anybody wants to know about the exhibitions, a lot of participants are participating from India in different shows here, like Girl Food है, ATM है, in World Trade Center. They are participating here in Adnix Center in Abu Dhabi. So if somebody of you are interested in that, you can tap up the people there, the business people who are actually coming and displaying their business. We are the manufacturers who manufacture for them. I can become your manufacturer if you are getting some business as a trade from there. You can come in connection with me. I will share my mobile number here. So we have a small unit in Alcos, which is a 3,000 square feet area factory. Around 15 people working, and this small business we want to take up to some another level very soon. मैंने एक ड्रीम देखा था कि मैं सोचा था कि चलो अपने अकोला के, I'm from अकोला, so अकोला के 100 लोग को दुबई लेके आना है. So I'm successful bringing 3 people as of now. So अभी 97 लाना है. तो the world is so big for as of now. There is a long way to go. But मैं सोचता हूँ ऐसा करते करते ही maybe I will achieve one day, and that I have kept as my dream.
And I have learned from you people, many people here. Mr. Sonare, I know him from so many years when I was studying in college. इनका social work देखा मैं I know JP who must be here. I have not seen him here. I have Sanjay here. Prashant is my friend who is in Japan. So we are in line. We are connected to each other and we discuss. We talk sometimes. Challenges तो है. So businesses are of challenges. Challenges will be there, but challenges enjoy करने लगो तो business होने लगेगा. So challenges लेके जो भागा निकल गया, he is not in the race. जब तक शस्त्र हाथ में है, आप युद्ध भूमि में खड़े हैं, शस्त्र डाल दोगे तो युद्ध खत्म हो गया. So don't put down. There will be challenges, there will be problems. एक टाइम ऐसा आएगा कि there will not be a single penny in pocket और मैं क्या कर रहा हूँ यार, धंधा कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. Yes, I have done this even in Dubai. ये दुबई में भी हुआ है मेरे साथ में, but now I understand कि नहीं, these are the phases of life. वो phase से निकलना है, and then you have to be motivated, always motivated, because you are number one product of your life. आप ही हो, आप ही ने करना है, and you cannot go out. You are out, then you are out of it. So as the fingerprint we say, किसी का match नहीं होता है, एक बंदे का एक का उसी का fingerprint होता है. So उसी के problem उसको ही face करके उससे आगे निकलना है. And निकलेगा तो then he can make his world. So this is what I think so. And don't sell the product, sell yourself. अपने आप को खड़ा करके जब approach करोगे ना तो product, then after you have to explain. First you need the appointment to explain the product. In whichever field you are, bosses, here everybody as an entrepreneur who is looking forward to come in life, whatever product you are selling, whatever business you are doing, you are required to go and tap a business for your own entrepreneur. When you go, first thing is that you need the appointment, then after you have to explain your business. So appointment लेने के लिए you have to sell yourself, not the business, not the product. So to selling yourself, you need to be prepared for that. So sell yourself, business will automatically come. This is what I think I have learned, and I have also a long way to go. I have my own challenges which I am facing day-to-day basis. We face in business and we are resolving it and progressing ahead. Very soon to see. Let's see where we land up. But I am enjoying the path of business basically. Thank you, Mr. Jagesh. Thank you everyone here to listen to me. I will share my number to you. You can be in connection with me. Thank you. Thanks a lot, शरद भाई. Wonderful. क्या वर्ड नहीं है, आपने इतना बढ़िया बोला है कि जो है ना, हम खुद को सेल करना है, उसका प्रोडक्ट तो बाद में सेल होगा. दिस इज वेरी राइट. यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ फॉर दैट. नो, उसके लिए जो पैशन चाहिए, उसका डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए जो करेज चाहिए, उसमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का जो जज्बा चाहिए, वो अगर है तो कुछ भी कर सकते हैं. एंड यू हैव प्रूव्ड दैट. संजय भाई हैज प्रूव्ड दैट. प्रशांत जी हैज प्रूव्ड दैट. विशाल भाई हैज प्रूव्ड दैट. There are so many other people, they have proved, yes, we can do that, we can do wonders. And we still remember that wonderful dinner with you we had in Dubai when we were there in 2015 for my daughter Purvi's international championship. Yes, We I still do remember that. It was really wonderful having meeting with you. Yeah. Thank you. Am I audible? Oh, आवाज नहीं आ रही है. Just a minute. Am I audible to everyone? हाँ, नहीं आ तो रहा है. आ तो रहा है नेट. Am I audible to everyone? Yes. Okay. शरद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है. I thought that way actually. Anyway. ठीक है. So thank you very much for joining us. Since morning you are there. और बहुत अच्छा लगा. हमारे डायरेक्टर साहब है ONGC के T&FS, आदरणीय श्री ओपी सिंह सर, और बाकी जो टीम MM है, हम लोगों ने सुना और बहुत अच्छा लगा पूरा प्रोग्राम. और आप लोग आए हैं खासकर, उसमें 4 चांद और लग गए. या so thank you very much Sharad bhai. Now our next speaker is really wonder man, wonder person, जिसको हम बोलेंगे
अमोल शिवाजी यादव, अमोल यादव जी, उनके बारे में आपने कई न्यूज़पेपर में कई वीडियोस भी शायद आपने दिए, सोशल मीडिया में देखे होंगे, सुने होंगे। हाँ, Amol Yadav ji is basically, is captain and deputy chief pilot by profession. He has been working on building indigenous aircraft for last 16 years. और उन्होंने वो करके 17 years और उन्होंने वो करके दिखाया है कैप्टन अमोल यादव जी. Please unmute yourself. Yeah. जय भीम. ओके, आवाज नहीं था तुमचा, आवाज. जय भीम साहब, जय भीम. और जैसे मैंने कहा कि इंडिया का फर्स्ट जो इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है वो कैप्टन अमोल शिवाजी यादव ने बनाया है. और सोशल मीडिया में और हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने उनको बहुत शाबाशी दी है, बहुत सत्कार किया है. और यस, ही हैज प्रूव्ड हिज वर्थ. और ये भारत में ये एक बहुत बड़ा इसमें क्या कहेंगे, एक पूरा चेंज होने वाला है कि यस वी कैन मैन्युफैक्चर इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट्स. और शिवाजी अपने अमोल साहब ने, उनके फादर का नाम शिवाजी है, यादव जी ने वो करके दिखाया है. वी आर रियली प्राउड ऑफ यू अमोल जी, एंड वी वेलकम यू टू दिस प्रोग्राम. और सुबह से आप भी काफी वेट कर रहे थे. वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, बट इट इज रियली मैराथन मीटिंग नो, सिंस मॉर्निंग. और ये वर्चुअल मीटिंग इज वेरी टायरसम. हाँ, हम लोग अगर हॉल में होते तो थोड़ा घूम फिर के आ सकते थे, बीच में लंच ब्रेक होता, टी ब्रेक होता. अभी मैं आपको वर्चुअल चाय पिलाता हूँ सबको. या तो वर्चुअल चाय आपको मुबारक हो. और मुझे अभी तक मिली नहीं है, मैडम से अभी मिलने वाली है. आप लोग भी चाय लीजिए. और नाउ विद दिस वर्ड्स थोड़ा डिटेल में जो है ना कैप्टन साहब, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ. एट द एज ऑफ 19 कैप्टन अमोल फ्लू टू यूएस in 1995 for the commercial pilot training. He underwent rigorous training and brainstorming session required for becoming a successful pilot. This has developed a confidence in Captain Amol that he himself can manufacture and customize aircraft. He returned to India with lots of hopes and aspirations. Destiny had some brighter plans for Captain Amol, which nobody knew. After returning to India, he utilized his training and knowledge to transform his ideas ideal aircraft dream. Captain Amol's father, Mr. Shivaji S. Yadav, stood like a lighthouse when Captain Amol told him about making an aircraft. His family and friends stood by him through the thick and thin. In 1998, Captain Amol started with an extraordinary dream. He wanted to convert the flight of an eagle into a reality. His ambition took wings, and single-handedly he made two-seater aircraft. But the aircraft stayed grounded due to technical reasons. This propelled Captain Amol further. In 1999, he took care of all the technical details. By 2003, he completed his two aircrafts but could not launch due to regulations. However, his passion for aircraft did not allow him to stop. Finally, in 2010, the conception of a new aircraft, TSE-003, took roots. By 2016, a slick six-seater came into existence due to Captain Amol's firm determination and perseverance. Working with Jet Airways gave him the expertise regarding selection of high-quality raw material, aviation quality norms, regulations, and avionics. The blessings and the strong support of his family, friends, and well-wishers inspired Captain Amol to reach new heights. A foolproof, technically sound six-seater aircraft boomed its way at the Make in India exhibition. It got an overwhelming response. In 2005, he joined Jet Airways, and past 10 years he has been working in Jet Airways. Now he is working with Jet Airways Management as a deputy chief pilot as trainer. I think Jet Airways अभी नहीं है, तो मेरे ख्याल से स्पाइस जेट में है. He is switched over to स्पाइस जेट, Captain Amol. So
let us welcome Captain Amol, and let us listen from him. Yeah, go ahead, Mr. Captain Amol. Jai Bhim to all. Jai Bhim. I should thank Sri Jagesh Somkumar, Mr. M. Ganeshan, Sri Sunil Singh ji, Sri A.P. Tripathi ji, Sri K.S. Pandey ji, Sri O.P. Singh ji, and Sri V.B. Sharma ji for inviting me here for Global Entrepreneurship and Vendor Development Meet for SC/ST entrepreneurs. As Somkor sir has given the brief introduction about me, and my subjects here says my glorious flight to success and achievements, opportunities in aero designing and aviation. So I wouldn't call myself. I would definitely accept that I have few achievements, but I wouldn't call myself a successful entrepreneur as of now, because until and unless we achieve the regional connectivity, which was in existence before we got our independence, before India got our independence. So I want to bring that regional connectivity back into existence, and then I will consider myself as a successful entrepreneur. Until then, I would say I am a struggler. I'm working with a private company as an airline pilot, and I'm struggling to achieve my dreams. So here I would like to tell you what all, I mean, people talk a lot about the airplane, and here we are, the airplane which is made by me, and here we are sitting for the vendor development program for SC and ST. So I would not advise, I don't consider myself in a position to advise the entrepreneurs, but I can definitely share what I have done in my life. And I will just let you know in brief. As I know it's been long and everybody is waiting, I would try to keep the story short. And I would just like to tell a small story of my experiences. So I was born in Mumbai. I did go to Marathi medium school, that is AB Goregaonkar English School, which was the best school in those days in Goregaon. After that, I went to Patkar College in Goregaon. I did my 12th science, and then I went for my flying studies in US. And from there I came back. Well, I was not from a very rich family. My dad used to work for Bank of India in those days, and his dream was that I should become a pilot. And later on, this I was having the same dream, and we both were working towards the dream. Not that we had sufficient funds to pay the fees, but my dad had taught me this, that you have to achieve what you want to achieve, no matter what. There may not be, I mean, the funds is the problem everywhere, and that is where we started. But we had decided that I will go for my training. I went for my training, but as we did not have enough funds to pay the fees, I was struggling there for quite some time. And then my uncle retired. He gave his retirement funds for my fees, and that is how somehow I could complete my flying training. But while doing that, I was trying to find other ways how to save the funds which were so hard earned by my family members. So I was looking for the possibilities. How could I save the money? And when I was, I used to go to different flight briefing offices. I used to read the advertisement on the board, airplanes for sale. And that was the time I realized that the fees each and every Indian student was paying to the school was the cost of one old airplane. And I suggested my friends that we should buy our own airplane, and that is how we can save some money. Few of my friends agreed, and we decided to buy one airplane. We bought one airplane, and we did our studies on flying training on that airplane, and that is how I could save some money. So even when I was struggling for paying the fees, I could still save some money by buying an airplane and completing the training on that my own airplane.
this sounds little weird. Everybody, I mean, whoever knows that I used to own an airplane when I was a student, they normally think that I was very rich. But actually the scene was exactly otherwise. I was not so rich, and to save some money, I bought my airplane. Sounds little weird, but this happened in US, and this was in 1995. When I came back to India, when I was in US alone, and I could achieve so much in away from my home country. When I came back to my country, I definitely wanted to have my own airplane in India. So I started searching for airplanes in India, and to my surprise, I came to know that it was 50 years of independence then. I came to know that our country did not have any airplane manufactured in India, and that was a shocking thing for me. The situation still remains same. The airplane which is made by me, and I have flown that airplane, that is the first airplane which has been registered by DGCA in India after independence. That is a very shocking and ironic thing, but that is the truth. When I came back to India, I realized that there are no airplanes, and that was the time when I decided that I will make airplane for my country. When I told this to my brother, my parents, none of them showed the they all believed me. There was no doubt in their mind that I could do it, and this backing was at that time was surprising to me, but it remained even till today. So that is how I'm being successful in making airplane. When I started working on the airplane, I did not know how much money it would take. It was just the decision that I had taken that I will start making an airplane in India. When I started working on this, in those days, we did not have information available like we have it today. In those days, we had to rely on books. There was no YouTube. There was not much of a internet information available. And I used to look for the books. I used to go searching for the books. But before that, I looked for one fabricator. I started working on the airplane. That airplane was pretty much ready, but I knew that I had committed a lot of mistakes in making that airplane, and then I decided to stop working on that airplane because I knew that going ahead with those mistakes, inbuilt mistakes, was not a correct decision. So I had to stop my project. I had to go back, hit the books. But while buying the book, while trying to find the books, I realized the books are very, they're very rare. You wouldn't get books everywhere. So I had to go search for each and every bookstall which was available in Mumbai. In those days, I used to go to each and every bookstall and ask for aviation books. Most of them did not have it. There were very few selected bookstalls which had the aviation books. But when I found those books were very, very expensive. The cost of those books were in dollars and pounds. And there was no possibility that I could invest money into books than the airplane. So I used to go find the books, and those people knew that this young boy did not have the money, but somehow they allowed me to read those books, and I used to read those books there. Then I would come back again. I would take my team members to the same bookstall. I would explain them what I meant by whatever I had told them earlier, and that is how I trained my team. It was quite difficult to train the team, but somehow we have achieved in this way only. I could not buy the books, but then as the books were available for me, I have been to each and every bookstall. The bookstalls on the footpath had few books, so I remember sitting on the footpath and reading those books. This is how I have trained my team how to build the airplanes. And when I actually started, the first effort was I had to stop. The second effort was almost completed. We did the taxi test of that airplane, and this was in 98, 99. We started working on that airplane, and that airplane was ready by 2003 December, I remember. And
we did the taxi test of that airplane, but Indian DGCA, Director General of Civil Aviation, did not have any provisions in those days to register an airplane which was made in India. This is even ironic. The government officials did not know how to do it, and then that project had to be stopped. So in 2003, I had worked on the airplane for about 4 or 5 years, and there was no provision for the government to register that airplane. And I was totally bankrupt. I did not know what to do. I had to stop the project. In 2005, I got into an airline, Jet Airways, as a pilot, and my life was, I was pretty happy with that because I was doing what I wanted to do, and I started flying as a co-pilot, and then I got married. But when I was sitting with my dad, he said, "I'm really happy that you are successful in your career, but I will really feel proud of you only when you will make the airplane which you started making." And I started working on the airplane again. This was the third airplane which I start. Now I gathered my team again, but we did not have any place to start working on the airplane, because when I start working on the airplane, I needed the proper shade, I needed electricity, I needed the water connection, I needed the security. All these things were very expensive in Mumbai. I was based in Mumbai, and there was no other place where I could go and do all these things. The only place which was available to me was on top of my house, that is the terrace of a 5-story building. And that place was available, but my team members were not ready to work on the residential area on the terrace above. That was not practical for them. But somehow I managed to convince them that let us start working here, and when the things gets bigger, we will move our efforts to some other place. This is how we started. And eventually now, as it was top of my terrace, top of my building, I was staying right there. When it became very easy for me to work on the airplane, because I did not have to travel to any place to see what is happening with the airplane, because it was right above the house, and I could give a lot of time. I did not have to worry about the electricity. I did not have to worry about the water connection. I did not have to worry about the security. Everything was managed. It was just the shade which I had to keep on maintaining properly. So, and later on, my team members were also very comfortable working there. We completed the whole airplane on the terrace of my building. But when we decided to start working on the airplane on the terrace, the first question was, how will we get this airplane down? And that was a difficult task. And we spent about 6 years on top of my terrace. Until first 2 years, I did not know any solution how to get the airplane down. And as I was working, the building construction was also going on, and there was one lift slab was constructed there. And I got the idea that along with this lift slab, I can build a crane, and that crane can be moved 270 degrees out of the building, and then we can lower the airplane parts slowly. The airplane was constructed in such a way that we could detach the wings, we could detach the tail, engine, all parts could be where we were able to detach and then take the airplane down. This was the plan, but we did not know when it was going to happen, how it was going to happen. In 2016, Government of India announced the Make in India program, and the exhibition was held in Mumbai, BKC. The big advertisements were there in the newspapers, and I was going through those advertisements. My brother showed it to me, and we were very excited that we could display our airplane in that Make in India exhibition, which would be a great pride. But when we started looking for the application forms and the procedure to get inside the be a participant in the Make in India exhibition, we came to know that it is just not possible,
We tried all the different ways. We went to the Chief Minister of Maharashtra. We went to all the Make in India head, Mr. Amitabh Kant, who was in Delhi. My brother went there. We realized that there is no possibility that we can get we can be the part of this exhibition. And then my brother kept on trying to be the participant, but it was just not possible. I remember it was 11th of February morning. 13th February was the inaugural date, and the airplane was still on the terrace. I had built the crane. Just a day before, we were thinking that if at all we are allowed to participate in that exhibition, we have to take the airplane down. So we were trying to, we bought one electric crane. Earlier we had the mechanical crane, and that mechanical crane used to take about 20 minutes for one round, one way. So I needed to have the electric crane as well. I took some money from my friend. I remember he paid for that electrical crane, and that crane was also installed, but there was no permission for us to be participant there. And the airplane was still on the terrace. This was 11th February, and 13th February was the day when Prime Minister was supposed to be there. My brother was trying hard. He was denied permission from everywhere. He went to big people in Maharashtra. He went to Delhi. Nothing happened. But he's a diehard person. He went to HAL and he said, please give us some space. They said, if you can manage in our, there was the reason he was told that there is no space available. And when he went there, he went to HAL stall and he saw some space was available. So he sent me a photograph from there that is it possible to park our airplane between these two, one helicopter and a Bofors gun. Can you park it there? I said that there is not enough space, but if you tilt the airplane, you can still keep it there. You can park the airplane there. And that was enough for him. So, but it was 11th morning and 11 o'clock in the morning. I said, please forget it now. We'll get some other Make in India exhibition then. You just come back because now it is not possible to bring the airplane down, which is going to be a task because we have never done it before. And that is like landing on the moon. We don't know how it is going to happen. So just please stop your efforts and come back. He said, just do one thing for me. This is just give me one chance. Please call Mr. Parikar's office and ask him for the permission there. I knew that like everywhere the permission was denied, and here also the same thing was going to happen. But my father agreed. He called Mr. Parikar's office, and to our surprise, Mr. Joshi, who was assisting Mr. Parikar, he said he gave the instructions to HL that this airplane should be kept in HL space. So that was just the verbal order from Mr. Parikar's office. And HL agreed to allow us to keep the airplane there. And we requested for any permission, and there was no permission available, and there was no time available. My brother said, you have to take the airplane down right now. I said, do we have any permission? He said, just believe me and get the airplane down. I decided to believe him and started working on dismantling the wings and all other parts of the airplane. And we started working. All my friends, everybody in the family, they all started working on this project, which we did not know how to give effect to. We all started working. This was 12 o'clock in the morning. And the only condition my brother had put was you have to get the airplane to the exhibition place before midnight, because after midnight, the Prime Minister's security was going to take over. He spoke to Maharashtrian police in Marathi saying that this is real Make in India and you have to support us. And surprisingly, the police people understand that this has to be done. And the only condition they put was before Prime Minister's security, if anything comes, we accept it. After that, we will not be able to do anything. And with that condition in mind, everybody started, all the team members started getting the airplane down. Now, after the airplane was down, we removed all the parts, we removed wings, all the small parts started coming down. Very easily, it all came down.
But when the fuselage, which is the central part where the body of the airplane where the passengers sit, is called fuselage. That was the biggest and the heaviest, and that had to be lowered down with the crane. And when that was put on the crane, this was almost this was night time, and we were trying to get that fuselage down. Halfway it went down, and the crane got stuck. And before it got stuck, the slab it was attached to, the plaster started coming off. The crane started moving uncontrollably, and I had actually lost hope that now the giant structure is got stuck 2 stories above the ground, and I was really not sure whether how I was going to get it down, and I had lost hopes then. But my team members were pretty cool. They were still holding their position. They did not get distracted by anything. They got the fuselage up again. They got the chain which removed, which was stuck, and they got the fuselage down somehow. We were down on the ground with all the parts of the airplane. Somehow now when we wanted to put it on the truck, there was no truck available where we could put the airplane on top of the truck. So we actually had to tow the airplane to the exhibition site. This was all night time, and we were towing the airplane. So this is how we took the airplane there. And when we took the airplane there, the police people allowed us to take it inside. We attached the airplane totally, and the airplane was there. I was really not sure why am I doing this. The airplane had reached the exhibition place, but next, and the Prime Minister's security started taking over. This was next day morning. This was 12th morning where the airplane was ready, and after that, next 13th, the Prime Minister was supposed to come. My brother realized that if we do not ask for passes, the airplane will be inside and we will be outside. So it was going to be of no use. When the Prime Minister comes, in the exhibition, the airplane will be there alone and nobody will be there to explain him what it was. He decided to ask for the passes, and he spoke with his friend, and his friend suggested that we have already gate crashed. Asking for passes is like going to we will get arrested for this. But my brother did not agree to him, and he said if we don't do it, then what's the use of getting the airplane here? By this, it was evening time. All the news people had started coming to know how the preparation of Make in India exhibition was going on. My brother went to the organizers and he said, please give me the passes for the exhibition for Prime Minister's visit. And they said, who are you? And he said, my airplane is parked in HL space, so you should give me the passes. And then they realized that there was a gate crash, and all the officers came running to the place where the airplane was parked. And they realized that there was a gate crash. So they started looking for me. Some officers spotted me, and he came to me and he said, you have to get the airplane out of this place by 5:30 in the evening. I looked at the watch. It was 5 o'clock in the evening. They complained to the police. They arrested my brother, and he was taken to the police station, and I was there alone with few of my friends, of course. And my brother's friend, who was saying don't go to the exhibitors, he found Mr. Deepak Bhatuse from Z News, and he got him to the airplane. And Mr. Deepak Bhatuse started asking me questions. I was very nervous, but as he started asking me questions about the airplane, I started answering about it. And by then his cameraman had already started shooting. The interview was over and they left. I was wondering how to remove the airplane, and after removing the airplane, how to take it back to the place. And now it is not going to go on the top of terrace.
So we had to keep it somewhere else. All those things were going in my mind. And my brother was arrested and he was taken to the police station. Now, when he was there in the police station, the inspector asked him, "What is your crime?" And luckily, at that particular time, in the police station, the Z News channel was going on, and they were showing the preparation of Make in India exhibition. And they were showing that Make in India, the first ever Indian-built airplane is being exhibited. And my brother said, "This is my crime. I have made the first airplane." And that stuck to that inspector very badly. And he said, "Okay, in this case, all the police people are authorized to issue the passes, and in this case, how many passes do you want?" All other exhibitors were getting 4 passes. My brother got 40 passes that day, and that is how I could exhibit the airplane. I was so happy that all the Indians by heart, everybody who saw the news next day, which was there in the newspaper, everybody started to visit the Make in India show or Make in India exhibition. And the most attractive object there was the airplane which we made, which was made in India, and it was made for India. My efforts are still on. I'm sure it's been very long. There is very big stories, very long stories, but I have to cut it short here. I should thank all of you, especially Mr. Jagesh Somkuar and all the team for inviting me here for this wonderful vendor development program. Thanks a lot. Jai Bhim. कैप्टन साहब सारे मंत्रमुग्ध हो गए. It was really very exciting, very thrilling journey, you know, or journey with a firm determination, lot of struggle, huh? My goodness. और जो आपने अचीव किया है इज रियली वंडरफुल. और एक किसी हमारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कमेंट किया है वहाँ पे कि ये यस यू शुड राइट योर स्टोरी फॉर दिस इंस्पायरिंग स्टोरी. या सो हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी थोड़ा ध्यान रखिए और एक बढ़िया से एक बुक लिखिए, आपका स्टोरी लिखिए. सो इट विल शो अदर्स that your struggle, no, your path road to success and you final your flight to success. तो इसलिए आपको जो सब्जेक्ट दिया ना फ्लाइट टू सक्सेस दिया था मैंने. थैंक यू सो मच वंस अगेन कैप्टन अमोल. Thank you, sir. Thanks to all the participants for joining us and sharing your really wonderful journey. You know, the exemplary work, I would say exemplary, because you know कितने कठिन परिस्थितियों से आपने पढ़ाई की है, फिर कैसे आगे बढ़े हैं, और माय गुडनेस रियली रियली वंडरफुल. हैट्स ऑफ टू यू. Thank you once again. Thank you once again for joining us, and we'll be in touch and we'll invite to some other occasion in ONGC, and you know, yeah. Sure. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah. Jai Bhim to all. Jai Bhim. You be with us. Now our ladies entrepreneurs, they will be taking over now. So this session will be our last session, and और एक्चुअली कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, बाकी प्रोग्राम में हमारा उल्टा हो गया, लेडीज जो है लास्ट में हो गया है. वी आर रियली वेरी सॉरी लेडीज फॉर दिस, बट एनीवे द शो मस्ट गो ऑन. एंड now first I would like to invite Madam Padmaja Raj Guru. She is the owner of KP Industries. ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है. शी इज़ पोस्ट ग्रेजुएट इन MSc, पोस्ट ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग MSc किया है उन्होंने. देन एक्सपीरियंस इन लेदर ट्रेडिंग सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग since 2017 till date. Worked as business development executive in Accenture Private Limited, Vikhroli, and also worked as digital marketing and business development executive in JKIT Solutions LLP, Thane. She is the CEO of KP Industries. A company name is KP Industries, and she Aura, AURA leather luxurious brand. Sharad bhai,
मैडम के लिए वहाँ ओपनिंग रखिए जरा दुबई में केपी इंडस्ट्रीज का, लेदर इंडस्ट्रीज में है मैडम, उनको थोड़ा प्रमोट कीजिए आप लोग। हाँ विशाल भाई आप भी थोड़ा ध्यान में रखिए। हाँ और पद्मजा मैडम को, या मैडम पद्मजा जी वेलकम टू दिस प्रोग्राम एंड वी आर रियली वेरी सॉरी कि आपको लास्ट में हम लोग बुला रहे हैं। सो कांचन इज देयर, कांचन भालेकर एंड नम्रता शिर्के इज देयर एंड आल्सो शुकेशना देवरे वेजिटेबल वेंडर्स, और उन सबके गुरु मिस्टर जयप्रकाश इंग्लिश, ही इज आल्सो विद अस। सो ऑल वेलकम टू दिस प्रोग्राम, ओएनजीसी प्रोग्राम। केपी इंडस्ट्रीज मैडम, गो अहेड। Yeah, go ahead. first of all, hello to everyone and Jai Bhim also. So I'm really thankful to ONGC and respected Sonkuva sir for this very beautiful platform. And I'm also thankful to respected speaker guest, my vendor colleagues and the public. So I know that कि अभी बहुत देर हो चुकी है, but apart from that today's my subject is women empowerment through business. So हमने सभी ने कहीं ना कहीं हमेशा ये सुना भी है और कहा भी है अपने मुंह से कि हर कामयाब इंसान के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ होता है, बट इन सब चीजों में महिला है, महिला पीछे क्यों है ना। आज की भी हम मीटिंग देखें तो बहुत कम वेंडर्स इसमें महिला पार्टिसिपेट बहुत कम है, और वैसे देखा जाए तो बिजनेस फील्ड में तो बहुत ही कम है। सर ने मुझे पूछा भी था तो उस टाइम बताने में भी बहुत दिक्कत आई थी कि महिला एंटरप्रेन्योर्स कौन है और बिजनेस फील्ड में। सो आज का मेरा टॉपिक ही वही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को एम्पावरमेंट कैसे करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने बिजनेस फील्ड में आना चाहिए एक्चुअली। एंड इफ यू सी द वन ऑफ द अवर स्पीकर गेस्ट कैप्टन अमोल यादव, इनको मैंने 2 साल पहले एक सेमिनार में इनका स्पीच मैंने सुना था, और बाय इंस्पायरिंग हिज स्पीच immediately on that day I left my IT career and start my entrepreneur journey, and now till I'm here कि 2 साल मैंने बिजनेस किया, टोटली उसमें मैंने एक्सपीरियंस लिया। इवन whenever I go in बैंक, तो बैंकर्स ने मुझे बोला कि मैडम आप IT फील्ड से हो तो आप ये लेदर बिजनेस में क्यों कर रही हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ये भी था कि लेदर बिजनेस इज माय ओकेजनल बिजनेस, और उसमें आज की डेट में कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो लीडरशिप करी है या वो बिजनेस में आगे बढ़ रही है। तो मुझे ऐसे लगा कि इंडिया इज सच अ कंट्री जहाँ पे स्किल वर्कर्स को लेकर बहुत सारा बाकी के जितने भी देश है वहाँ पे बहुत ज्यादा मीन्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने लेदर बिजनेस को चुना, क्योंकि उस टाइम पे आईटी फील्ड में कोई भी काम करने के लिए मेरे पास टीम भी नहीं थी, और मेरे कोई फ्रेंड्स अपना जॉब लेफ्ट करने के लिए रेडी भी नहीं हो रहे थे। सो आई चॉइस दिस बिजनेस, और उसे लेकर मैं आगे बढ़ी। और मैं बहुत सारी बैंक्स में गई, बहुत सारी जगह पे भी गई। आई नो कि वहां पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे, बट जितने भी क्वेश्चंस आपको लाइफ में आते हैं उस हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढना चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मुझे पूछते गए सब लोग, तो मैं उस क्वेश्चंस के हल ढूंढती गई और उसके आंसर मुझे मिलते गए, और मैं लाइफ में आगे बढ़ती गई। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन वेरी बहुत ही कम कीमत में, मीन्स लाइक 10,000 रुपीज की से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। नाउ आई डील विथ इन लैक्स। बट इफ आई सी कि 2020 का जो पीरियड था, नॉट ओनली मी बट किसी को भी ये पता नहीं था कि ये सब चीजें अपनी लाइफ में आएंगी, उसमें फेलियर्स भी आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये सब चीजें मिस छोड़ देनी है, या फेलियर्स आए तो उनका सामना हमें नहीं करना है। बिल्कुल हमें उन सब चीजों का सामना तो करना पड़ेगा। और इसी बीच जब मैंने देखा कि अब टोटली मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स बंद हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स उतने बहुत ही ज्यादा कड़क थे, तो उसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो आई फेल्ट कि अब क्या किया जाए। तो उसमें मैंने मेरे अंदर छुपी एक क्वालिटी के बारे में मैं ढूंढ पाई। तो उस बीच मैंने अपने खुद का ब्लॉग राइटिंग स्टार्ट किया,
और मैंने देखा कि विद इन अ पीरियड बहुत सारे लोगों ने, मैं जो मोटिवेशनल ब्लॉग लिखने लगी थी, बहुत सारे लोगों ने उस ब्लॉग को मीन्स पसंद किया, पढ़ना पसंद किया, और बहुत ही अच्छा मुझे एक्सपोजर मिला। उससे एक अच्छे पब्लिकेशन कंपनी ने मुझे बुक लिखने के लिए भी मीन्स इनवाइट किया, और वो भी मेरे सामने है। और उस बीच मैंने कुछ शॉर्ट फीचर फिल्म्स के बारे में भी लिखा, और उसमें से एक फिल्म मेरी नेक्स्ट ईयर में नेशनल और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जा रही है, और दूसरी जो फिल्म है उसकी शूटिंग स्टार्ट है। तो मीन्स आई विल कि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी चीज हो, हाँ, हमें कभी भी खुद को रोक के नहीं रखना चाहिए। हमारे बीच में जितनी भी क्वालिटीज है, और मैं ये मानती हूँ कि कोई भी महिला हो, उसके अंदर जो मैनेजमेंट स्किल होती है वो किसी के भी अंदर नहीं होती है, क्योंकि एट अ टाइम हम बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये 2020 में मैं चुप नहीं बैठी। मैं नहीं कर सकती थी, मुझे पता है, मैं क्या पूरी दुनिया भी नहीं कर पा रही है, तो इसलिए मैंने हार नहीं मानी। तो इसके बीच में क्या कर सकती हूँ, इसके बारे में मैंने सोचा, और वो चीजों पे मैंने वर्क किया। और डेफिनेटली मैं वही तो आपसे कहना चाहती हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते। उसके लिए बस हमको ये सोचना है कि जस्ट लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, एंड खुद को ये बोलो कि आप ये कर सकते हो, और डेफिनेटली आप वो कर सकते हो। और आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट, आपके सामने हूँ, और ये सब चीजें मैंने की, और वो डेफिनेटली सक्सेस हुई। और अभी जो हमारा सब्जेक्ट है कि वुमन एम्पावरमेंट थ्रू बिजनेस, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने बैंक के रिलेटेड स्कीम या गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम के बारे में आपको बताया, बट कुछ चीजें ऐसी है कि जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। मेरे ख्याल से बहुत सारी महिलाओं को वो पता नहीं होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है। मैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपको उनके नाम बताऊंगी। लाइक महिला उद्यम निधि स्कीम है, उद्योगिनी स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम है, दैट इज टोटली फॉर द कैटरिंग एंड मसाला बिजनेस, जो भी महिलाएं करती है उनके लिए। स्त्री शक्ति स्कीम है, जिसको एसबीआई सपोर्ट करता है। लाइक मिनिमम स्किल में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लाइक अपना कुछ छोटा सा होटल वगैरह कोई लेडी स्टार्ट करना चाहती है, तो 2 to 5 लाख तक उनको स्त्री शक्ति के तहत एसबीआई से लोन मिल सकता है। और लेकिन उनके लिए ईडीपी ट्रेनिंग बहुत मस्ट है उस स्कीम के लिए। और उसके अलावा एक भारतीय महिला बैंक जो 2017 में एसबीआई में मर्ज हो चुकी है, तो उनकी भी एक स्कीम है जो जिनका जो भी एग्जिस्टेंट वुमन एंटरप्रेन्योर है, जिनको उनका जो भी मीन्स एक्सपांड करना है या बढ़ाना है, तो उनके लिए स्कीम है जिसमें विदाउट कोलैटरल 2 CR तक उनको लोन मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने सिर्फ महिलाओं के लिए दी है। अदर देन दैट आपको पता है पीएमईजीपी है, सीएमईजीपी है, मुद्रा है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे भी कुछ स्कीम है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, और जिसमें किसी भी प्रकार की कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक की तरफ से नहीं ली जाती है। तो जितने भी वुमन वेंडर एंटरप्रेन्योर्स है, या जो भी गेस्ट मिस सुन रहे हैं, या जो भी मेल वेंडर्स है, उनको भी अपनी वाइफ हो या सिस्टर हो या माँ हो, उनको बिल्कुल बिजनेस में लेके आना चाहिए। तो ये जस्ट अभी मुझे पता है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं बहुत ही कम समय में मैंने ये ब्रीफ आपको दिया। बेसिकली मैं लेदर बिजनेस करती हूँ, मेरा खुद का दी औरानावा का ब्रांड है, और वेरी सुन आई इंट्रोड्यूस माय प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स, माय ओन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो प्लीज आप जरूर ब्रांड का नाम याद रखना और विजिट करना। ठीक है, आई एम रियली थैंकफुल टू ONGC एंड रिस्पेक्टेड सोन कुंवर सर कि उन्होंने आज यहाँ पे बुलाया। लास्ट टाइम जो उनका हुआ था प्रोग्राम, उसमें मैं एज अ ऑडियंस बैठी थी, बट टुडे मुझे मौका मिला कि एज अ गेस्ट मैं सबके सामने एक थोड़ा सा सबको बता सकूं कि कैसे भी सिचुएशन हो, सिचुएशन जाएगी, वक्त हमारा भी आएगा। सो प्लीज ट्यून देयर एंड होप खोना नहीं। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल पद्मजा जी, बहुत बढ़िया आपने कहा कि यस, होप जो है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। और आपका जो प्रोडक्ट है आपने ऑलरेडी उसको लॉन्च किया हुआ है,
और वो बहुत उसमें बढ़ोतरी होगी, और आपका जो बिजनेस है, जो आपने जो इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज आप बहुत सक्सेसफुल है इसमें बिजनेस में, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में, इट वाज योर इनिशिएटिव, और इसमें आपको बहुत विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस. Thank you so much Thank you, for sir. having that much patience till last program this morning. You are there, I am seeing you. Yeah, thank you. Okay, now next is Namrata Dinesh Sirke, madam with NDT, yeah, and thermography. Unmute yourself, Namrata. Namrata is basically owner of founder and inspection engineer, and the company's name is Invento Engineering Solutions. Innovative and performance driven entrepreneur with a deep passion for technology and business, experienced in managing all aspects of business development, possesses the ability to work and remain calm under pressure. This is very important. Excellent leadership skills and great time management skills. Founded company which offers advanced NDT testing, non-destructive testing, and quality control services. So, मैडम नम्रता जी, आपका स्वागत है ओएनजीसी के इस कार्यक्रम में. आप अपना 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 जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करिए प्लीज. या गो अहेड. Jai Bhim to all. Jai Bhim. Yeah, go ahead. Good afternoon to all the respected dignitaries of ONGC and all the existing and established entrepreneurs of the community. I am Namrata Dinesh Shirke, founded and proprietor of Invento Engineering Solutions. Before I begin my entrepreneur journey, I would like to pay my gratitude to Dr. B.R. Ambedkar, because of whom we have got an opportunity to empower ourselves, not only socially but also economically. So the entrepreneurship journey began when I was in the college, like in the last year of my engineering. That time, me and my friend used to sell engineering components, electrical engineering, whatever small components we used to sell. And after completing my college, I decided to take up a job in private companies, and I did my job. And I'm very glad to today that one of my previous company's boss, Miss Nafisa Mulubhai, is also present over here, and she has always inspired me, the way she have worked in the company, and the way she have her, like leadership and all, she have inspired me from the very first day. So the main entrepreneurship, जो entrepreneurship मेरी शुरू हुई 3 साल पहले, जहाँ से हमने इन्वेंटो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को फाउंड किया था. तो वो शुरू हुई एचपी सेवा के ट्रेनिंग के साथ, जहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसा होता है, क्या होता है, जो 1 मंथ ट्रेनिंग थी. उसमें हमारे गुरु, हमारे मेंटर जयप्रकाश सिंह सर ने मुझे एक गाइड किया कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे होगा. तो उसमें से उन्होंने थर्मोग्राफी मुझे कहा कि आप थर्मोग्राफी कर सकते हो, या थर्मोग्राफी के बारे में उन्होंने कहा. और क्योंकि ये बहुत नया कंसेप्ट था और बहुत कम लोगों को, आज भी ये कंसेप्ट बहुत कम लोगों को पता है कि थर्मोग्राफी हम किस लिए करते हैं. तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी और मुझे इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी. सो आई टुक अप दिस अपॉर्चुनिटी, और हमने हमारी जर्नी फिर वहाँ से स्टार्ट की, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर्स एंड स्टार्टिंग फॉर एवरीथिंग, लाइक प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग. तो जब हम कर रहे थे तब बहुत से हर्डल्स आए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है कि जहाँ हम शुरू तो करते हैं, कल कौन सी हार्डशिप आएगी या कौन से हार्डल्स आएंगे ये हमें पता नहीं होता है. और सबसे पहले कि जब हम एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है वो फंड्स की, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं होते. अब जब मैंने शुरू किया था तो ये एक मैजिक कहे या फिर क्या पता नहीं, लेकिन एक कहीं से तो मुझे एक 5000 के बैंक में अकाउंट में पैसे आए थे, जहाँ से मैंने वो पैसे यूज करके सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स एंड सारे चीजें कंप्लीट की थी. उसके बाद HPCL ने, जैसे हमने EDP कंप्लीट किया था, तो HPCL ने हमें वेंडरशिप दी थी. उसके थ्रू मुझे थर्मोग्राफी का टेंडर फ्लोट हुआ था, जो मैंने पार्टिसिपेट किया था और वो मुझे मिल गया था, विन हुआ था.
तो हमारा इंस्ट्रूमेंट लेने से लेके पूरा एग्जीक्यूशन तक बहुत सारे चैलेंजेस आए कि जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, ऐसे चैलेंजेस आए थे। और क्योंकि थर्मोग्राफी और एनडीटी ये पूरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, यहाँ पे मतलब वुमेन्स है ही नहीं देखा जाए तो। और ऑन फील्ड जब काम करने जाते हैं तो अलग से और हमें ये हार्डशिप्स होती है। तो दिस वाज एक्चुअली टोटली लाइफ टर्निंग एक अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पे मैंने बहुत सीखा। और ये एक एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी थी कि जहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड था सरवाइव करने के लिए, ठीक है। और आज हम 3 इयर्स के बाद, टोटली हार्डशिप के बाद, ऑल ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद, 3 इयर्स के बाद हम एक सक्सेसफुली थर्मोग्राफर इन सर्विस थर्मोग्राफी सर्विसेज देते हैं। HPCL इज वन ऑफ आवर क्लाइंट। एंड जहाँ पे हम फर्नेस की जो थर्मोग्राफी करते हैं, वहाँ पर वी आर द ओनली वन हु आर डूइंग द फर्नेस थर्मोग्राफी, एंड आई एम द ओनली लेडी एंटरप्रेन्योर इन इंडिया हु इज ऑफरिंग दिस सर्विसेज, and that too in HPCL and oil industry. So I would like to say, to sum it up, like what is entrepreneurship? Entrepreneurship is thrilling, but it is also rewarding, and you have to be very honest like what you are doing. You have to be very honest with whatever you are doing, because you are building yourself. हमें अपने ईमानदारी से काम करना है, वहाँ पे जो भी हम सर्विस दे रहे हैं वो हमें ईमानदारी से देनी है, क्योंकि हमारी ईमानदारी आगे चल के हमें काम देगी, ऐसा। सो दिस वाज द थिंग। और अगर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ कहना है कि पूरा जर्नी क्या है, तो वो 3 लाइन में होगी कि एक तो नेवर गिव अप, चाहे जितनी भी हार्डशिप आएगी कभी ही गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है। अभी 3 साल के बाद मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता था, लेकिन हम लोग ने कंसिस्टेंटली वो करते रहे। आज कोविड की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए, हमने सेकेंडरी बिजनेस भी डेवलप किया। तो वी हैव टू कीप मूविंग ऑन, अपॉर्चुनिटीज आएगी उसे एक्सप्लोर करना है एंड मूविंग अप, ठीक है। सेकेंड इज यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। पेशेंट से भी काम करना है। आज अगर आप सोच रहे हो कि नहीं अभी मैंने काम शुरू किया और मुझे तुरंत सक्सेस चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, इसके साथ सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपको आपके पैसे को भी एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करना है, फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए यूज करना है, और आपको हमेशा नॉलेज गेन करती रहनी है। एंटरप्रेन्योरशिप में आप जितना नॉलेज गेन करोगे उतने आइडियाज आप जनरेट करोगे, जितने आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे उतने सोल्यूशंस आएंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देना। जितने प्रॉब्लम्स होंगे उसमें ज्यादा सोल्यूशन आएंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। और उसके साथ साथ ये सारी जर्नी होते होते हमने एक एनजीओ एस्टेब्लिश किया था, जो हमारे SC ST एंटरप्रेनर्स, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर्स है और जो ऑलरेडी या फिर बडिंग एंटरप्रेनर्स है, उनको ट्रेन करने के लिए, जिसका नाम था HP SEWA वुमेन्स एंटरप्रेनर फाउंडेशन, which not only aims to train but also handle and nurture the budding entrepreneurs. So this was the all my journey in a nutshell. Since we have a time constraint, I am just summing it up in a very few words. And I would also like to thank Ingres sir, because he was the biggest support in my journey since the start to end. And today also he have supported me in many ways. And before I sum it up, I would like to thank Jagesh sir for giving me this opportunity to speak in front of all the dignitaries and also in front of my inspiration, Mrs. Mulubai ma'am. I hope I have covered all the things. Thank you. Jai Bhim. थैंक यू थैंक यू नम्रता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको इतना इंतजार करवाया हमने। बाकी जो आपने बात कही है कि यस, नेवर गिव अप एंड डोंट लूज योर पेशेंस, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज यू हैव गिवन थ्रू दिस योर टॉक नो। और एनडीटी बिजनेस जो है वो काफ़ी इसका डिमांड है, जितना भी ऑयल इंडस्ट्री है ना, और बाकी जो इवन रिफाइनरीज में है वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ONGC में भी इसका स्कोप है। सो लेट अस एक्सप्लोर दी पॉसिबिलिटीज। और जो आपने EDP के जो बात कही है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, हम लोग ONGC के थ्रू भी ये प्रोग्राम करना चाहते हैं।
हमारे मित्र दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस में है MM में मिस्टर निखिल गौर जी। गौर साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। या ये जो HPCL में सर एक प्रोग्राम हुआ था EDP का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो रेसिडेंशियल हुआ था, उस प्रोग्राम में उनको हैंड होल्डिंग किया गया था एक्चुअली, कि ये 1 मंथ रिगरस ट्रेनिंग था, उसमें रेसिडेंशियल था, उसमें दे सिलेक्टेड 25 पीपल, बॉयज एंड गर्ल्स, और उनका थॉरो ट्रेनिंग हुआ था वहाँ पे, थॉरो ट्रेनिंग हुआ था। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट को उन्होंने बुलाया था, टॉप मैनेजमेंट के लोगों को बुलाया था, बैंकिंग सेक्टर्स को बुलाया था, लॉ अथॉरिटीज को बुलाया था, सबको बुलाया था, और उनका बहुत बढ़िया रिगरस ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद में ये जो लड़कियां जो आज प्रोग्राम में दिख रही है, ये उसका प्रोडक्ट है। सो लेट अस स्टार्ट दिस इनिशिएटिव इन ONGC आल्सो। श्योर। या राव साहब, इधर मैयप्पन साहब इज आल्सो देयर, मिस्टर गणेशन जी हमारे RLO है। जी सर, डेफिनेटली सर, विल गो अहेड, विल डू इट कलेक्टिवली जी। तो ये रेसिडेंशियल जो प्रोग्राम है, ये अगर कुछ हम सही में ONGC के थ्रू करना चाहते हैं फॉर आवर सोसाइटी, और खास करके हमारी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए करना चाहते हैं, तो ये इनिशिएटिव हमको लेना पड़ेगा। उसमें सभी का, आप लोगों का उसमें हमको सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। श्योर सर, श्योर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हमारे जो बिल्कुल सर, बिल्कुल, श्योर सर। हमारे जो त्रिपाठी सर है, और उनको भी नॉलेज में लाइएगा ये बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल। या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या थैंक यू गौर साहब, और थैंक यू नम्रता जी। नाउ थैंक यू सर। नेक्स्ट स्पीकर इज मिस कंचन भालेकर। कंचन मैडम, आपका स्वागत है, अनम्यूट कीजिए। और ये कांचन मैडम जो है, उनके पास टैंकर है, शी इज द ओनर ऑफ टैंकर। और जो ENP बिजनेस में जो यूज होता है ना, पेट्रोकेमिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन में, वो शी इज द ओनर ऑफ दैट। और उनका जो कंपनी का नाम है वो ऑरुम, AURRUM, ऑरम एंटरप्राइजेस है। और इनका जो है वो बल्क LPG ट्रांसपोर्टेशन का उनका बिजनेस है। और शी इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ HP सेवास दिस EDP project. Yeah. So Kanchan madam, please go ahead and share your experience with us. Sure, sir. Thank you so much for introducing me. Yeah, go ahead. Yeah. जय भीम to all. जय भीम। मेरा नाम कांचन भालेकर है और हमारे कंपनी का नाम ऑरम एंटरप्राइजेस है। तो हमने जब हम बल्क LPG सप्लाई करते हैं, तो मैं जब भी इंट्रोड्यूस करती हूँ कि हम बल्क LPG में है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो मैं पहले तो आपको बता दूं कि जो LPG हम यूज करते हैं, वो हम टैंकर के थ्रू ऑल ओवर इंडिया, जो भी प्लांट टू प्लांट होता है HPCL के थ्रू, हम लोग सप्लाई करते हैं। और उसके बाद में मैं पहले तो आपको बता दूं कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है HPCL EDP से, जो हम तो उन्हें बड़े पापा ही बोलते हैं, जो जयप्रकाश है। तो उनकी वजह से हम अभी यहाँ पे हैं, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से बडिंग करके जो भी अपॉर्चुनिटी है हमारे तरफ आई है। और जैसे भी मेरी जर्नी रही है, मैंने अभी 3 साल मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ जो भी मैं कंपनी मेरे ऑरम एंटरप्राइजेस है। तो स्टार्टिंग में हम लोग जब भी टेंडर वगैरह प्रोसेस है, कैसे टेंडर भरना है, कैसे क्या है, वो सब हमको EDP ट्रेनिंग में ही जो कुछ है हमने सीखा है। और उसके बाद हम लोगों को ये बताया गया कि हमको 1 ईयर का हैंड होल्डिंग प्रोसेस मिलेगा। फिर हैंड होल्डिंग जब भी होता था, तो हम लोग ये बहुत इजी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ट्राई करते रहे। जो भी वुमेन्स है, हम लोगों ने पूरा ट्राई किया। 1 ईयर तो कुछ भी काम नहीं था, हम ऐसे ही, मतलब फैमिली सपोर्ट था और हमारे इंग्लिश सर हमारे साथ थे। इसके लिए हम लोग सिर्फ टेंडर भरते थे, पार्टिसिपेट करते थे, और जो भी हमको समझ में आता था, हमको जाना है, काम मांगना है, यही हमारा रूटीन था 1-1.5 साल तक। अभी मुझे ये कहना है कि हम अगर ये फील्ड में है तो हमको काम करना ही है। कुछ आपके पास आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपको हार्डवर्क करना ही है। हार्डवर्क के लिए कोई भी कभी भी कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको हार्डवर्क ही करना है। और मैंने जब भी अभी मैं BPCL के मीटिंग्स में जाती हूँ, HPCL की मीटिंग्स में जाती हूँ, तो उनको लगता है कि मैं किसी के साथ आई हूँ। आई एम नॉट द ओनर ऑफ माई कंपनी। तो उनको मुझे बताना पड़ता है कि नहीं, मेरा खुद का टैंकर है, आई एम द ओनर ऑफ द टैंकर। और मैंने खुद वो टैंकर का लोन, जब मैं बैंक में गई थी, तो बैंक के
मैनेजर ने मुझे पूछा था कि मैडम टैंकर को टायर कितने हैं आप ये हमको पहले बताइए। तो मैंने उनको पूरा डिटेल्स दे के प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझा के उनको पूरा मैंने लोन सैंक्शन करवा के लेकर ही दम लिया था। तो उनका मुझे अभी तक बहुत ज्यादा सपोर्ट है। वो मैनेजर पूरा का पूरा बैंक ऑफ बड़ौदा अभी हमारे इतना अच्छा हमको मदद करता है कि हम बिल्कुल भी मतलब कॉल पे भी काम कर सकते हैं, ऐसा हो गया। तो इसके लिए आपका अगर हार्ड वर्क होगा, आपको अगर उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता। अगर पूरा PSU सेक्टर ONGC ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्रिएट किया है, तो पूरे वुमेन्स के लिए तो मैं इतना ही कहूंगी कि आपको आगे बढ़कर यहाँ तक पहुंचना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो सब बातें हैं, तो वो सब आप अगर उनके पास जाएंगे तभी आपको ये सब पता चलेगा। और मैं अगर प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो NSIC है, जो भी MSME है, वो सब बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट करते हैं। जो हमारा टैंकर का जो पूरा प्रोसेस था उसके लिए हमको पूरा 1 साल लगा था। अभी 1 साल हम कंप्लीट करने आए हैं। अभी हमने जो स्टार्ट किया था तो मेरी फर्स्ट ऑर्डर जो थी जो 10,000 की थी, जो 10,000 के ऑर्डर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का स्टार्ट किया, फिर प्रिंटिंग का किया, नट्स बोल्ट्स जो भी चाहिए था PSU को हमने पूरा सप्लाई किया। फिर बाद में हमको ये टैंकर की अपॉर्चुनिटी सामने से आई, फिर हम लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके अभी हमारा महीने का ही 2-3 लाख का इनकम जनरेट हो जाता है। तो हम लोग अभी लैक्स में ही डील करते हैं। अभी हमारी कंपनी पूरी माइक्रो से स्मॉल हो गई है। तो ये बताने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे बहुत वुमेन्स को तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोक्यूरमेंट है, जो भी रिजर्वेशन है, वो फुलफिल ही नहीं हो पाती है, क्योंकि वुमेन्स को तो पूरा का पूरा मतलब अपने अभी इतने सारे ऑफिसर्स है जो हैंड होल्डिंग प्रोसेस देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद करते हैं, तो आपको वहां आना है। और EDP प्रोग्राम इज द बेस्ट थिंग जो इंग्रेज सर ने हमको मतलब विदाउट EDP प्रोग्राम हम लोग खुद को इमेजिन भी नहीं कर पाते थे कि हम अभी पहले हम लोग ये प्रोग्राम अटेंड करते थे या फिर हमको कहीं से पता चलता था तो हम जाकर विजिट करते थे। आज हम स्पीकर है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा फासला हम लोग 3 साल में काट सके। और जो भी हमको करना है कि ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेंट है या फिर वुमेन डोमिनेंट है। आप मत बाइफिकेट कीजिए, आप सिर्फ काम कीजिए। बाइफिकेशन करना ये तो सोसाइटी का काम है, आपको सिर्फ काम करना है। वो बाइफिकेशन है वो या क्या है क्या नहीं, आपको जिस भी फील्ड से अपॉर्चुनिटी आएगी आपको उसी तरह से काम करना है। और अगर आप हार्डवर्क ही करते रहोगे तो सक्सेस आपको मिलना ही है। और एंड टू एंड तक तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप डरते नहीं हो तो कोई आपको डरा नहीं सकता, और अगर आपने जीतने की ठानी है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, क्या थैंक यू बात है। सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स and all the dignitaries, all the ONGC, Jagesh Somkuar sir, Jaiprakash Singh sir, all the NSIC, MSME. I am so overwhelmed right now, and thank you that मुझे एक अगर इंसान को मैं इंस्पायर कर पा रही हूँ तो मैं ये बहुत बड़ी चीज मानूंगी इस दिन में। और सिर्फ इंस्पायर करना ही नहीं, आज जो कुछ भी हुआ है सोमकुवर सर, मैंने जितने लोगों को सुना है मैं इतनी खुद इंस्पायर हो चुकी हूँ कि अभी मैं हम लोग खुद ढूंढ रहे कि नहीं, अभी ये पैंडेमिक, इस पूरे पैंडेमिक में हम लोग पूरा काम कर रहे थे। और आई रियली हैप्पी टू शेयर यू कि हमको एज अ कोविड वॉरियर एप्रिसिएशन लेटर भी HPCL ने प्रोवाइड किया है। पूरा पैंडेमिक में हमने काम किया है, हमारे ड्राइवर्स ने, हमने ये सब पूरा। So I'm so inspired, whatever stories I have listened and all these things. So I'm really thankful and I'm really glad that I'm part of this program. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच कंचन मैडम, जय भीम। और रियली बहुत, एक बार सब लोग ताली बजाइए, वीडियो ऑन करिए, सब लोग पर्दे के अंदर मत रहिए, बाहर निकलिए, थोड़ा ताली बजाए हमारे जो वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुकेशना इज नॉट देयर, आई थिंक सुकेशना कुछ नेटवर्क का इश्यू है, शी इज नॉट देयर, बट एनीवे आप सबके गुरुजी है। जयप्रकाश जी को मैं थोड़ा बोलने के लिए यहाँ इनवाइट करता हूँ। जयप्रकाश जी, अनम्यूट योरसेल्फ, देन
speak few words about your bachchiya. Jayaprakash ji, go ahead. Yeah. Jagesh, welcome, Jai Bhim. Jai Bhim, welcome. Yeah, शरद, जय भीम। और नम्रता, कांचन, पद्मजा, मैं हमारे दादा, मेरे फादरली फिगर सोनाली साहब भी दिख रहे हैं यहाँ पे। जी जी। और सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स, संजय भाई भी था, शायद चला गया क्या अभी? हाँ, चला गया, चले गए वो। ओके, नो इश्यू। बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के साथ मिलके फिर से एक बार। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम चला, मैं तो काफी लेट, संजय जब बात कर रहा था तभी मैं ज्वाइन किया। शरद को पूरा सुना, बाद में उसके बाद में सभी स्पीकर को सुना, विशाल जी को मैं सुना लंदन से। और मुझे काफी खुशी हुई है कि पूरे विश्व भर से जागेश भाई, आपकी मेहनत, बहुत बड़ी मेहनत है आपकी इस प्रोग्राम के पीछे। और ओएनजीसी के हमारे जितने भी ऑफिसर्स और साथी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी यंग जनरेशन को आप मोटिवेट करने का जो काम कर रहे हैं और उनकी सक्सेस के लिए जो आपकी, जो मैं एक बोल रहा हूँ कि एक एफर्ट आप ले रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ पे बैक टू सोसाइटी। एंड इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा याद दिलाता हूँ अपने दोस्तों को और अपने यंगस्टर्स को कि बाबा साहब आम्बेडकर अपनी किताब में लिख के गए हैं, स्मॉल होल्डिंग्स एंड इट्स रेमेडीज इन इंडिया। उस समय मीन्स करीबन 100 साल पहले लिखी हुई बाबा साहब की किताब है, जिस किताब में बाबा साहब ने लिखा है कि फार्मर शुड हैव ओनली वन सन in the farming, one son in the service, and one son should become entrepreneur। ये बाबा साहब ने लिखा है। और उसमें बाबा साहब ने आगे चल के ये लिखा है कि अगर बेटी है तो उसको आप एजुकेशन सेक्टर में डालो। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने उस जमाने में ये शायद वो विजन नहीं कर पाए कि बेटियां भी एंटरप्रेन्योर बन सकती है। तो ये बाबा साहब की स्पीच में ये आया नहीं कि बेटी को भी एंटरप्रेन्योर बनाओ, लेकिन आज की बेटियां हमारी एंटरप्रेन्योर बन रही है। तो ये बाबा साहब की विजन को बहुत बड़ा सैल्यूट है, ये मैं समझता हूँ। आगे चल के बाबा साहब ये भी बोलते हैं कि आपके समाज की महिलाएं कितनी ऊंचाई तक पहुंची है, उस ऊंचाई से ही आपके समाज की ऊंचाई समझ में आएगी। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए वुमन एंटरप्रेन्योरशिप ये हमारी कम्युनिटी के लिए स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी कम्युनिटी और हमारी जो वुमन एंटरप्रेन्योर है अगर सक्सेसफुल बनती है तो ये हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग सोशल माइग्रेशन से चल रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा मुझे मालूम नहीं, बट अगर ये जो छोटे छोटे हमारे एफर्ट्स है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलो या ऐसे इस टाइप के मीट बोलो, ग्लोबल मीट बोलो या जो भी कुछ है, MSME मीट्स बोलो, यहाँ पे हम लेडीज एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, अगर हम उनके साथ खाली हम बोल भी देते हैं कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो मुझे लगता है कि आगे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद कर देती है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो 2015 से हम लोगों ने स्पेशल में जो प्रोग्राम शुरू किया। तो पहले प्रोग्राम में तो खाली 5 लेडीज थी, लेकिन दूसरा हमारा वुमेन स्पेशल प्रोग्राम था जिसमें 35 वुमेन थी। तो टोटल हमारे पास अभी तीनों प्रोग्राम मिला के EDP 1, 2, 3 एक वाइजैक में जो हुआ, सो 45 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ में है जो स्पेशल के साथ छोटा मोटा और बड़ा स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल और बिग बिजनेस भी कर रही है। सो आप ये अगर देखेंगे तो काफी अच्छा नजारा है। और हमारा जो कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, ये कंसेप्ट हमने इसका कोई कॉपीराइट नहीं लिया है या इसका कोई हमारे पास पेटेंट भी नहीं है, ये ओपन टू ऑल है। अगर ONGC हमारी अभी मदर कॉर्पोरेशन हो गई है, सो हम ONGC के पार्टी है। सो ONGC अगर ये करना चाहती है तो हैप्पीली हमको हमारा प्रोग्राम ले लो, हमको ले लो, सब कुछ ले लो। ये अभी आज के तारीख में ये आपका ही है। भले हमने जब चालू किया तब हम इंडिपेंडेंट थे, लेकिन आज हम ONGC के पार्ट है। सो ONGC को अगर ये प्रोजेक्ट चाहिए तो हम पूरे का पूरा हम आपको दे सकते हैं, लेना भी चाहिए आपने, क्योंकि ये अभी आपकी कंपनी हो गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपकी कंपनी हो गई। तो ये प्रोजेक्ट के लिए आपको जो भी मेरे से मदद चाहिए, मैं किसी भी दिन आधी रात को उठ के मुझे बुलाओ कि भाई आ जाओ JP भाई, मैं आ जाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है।
गेल हमारा पार्टनर रहा EDP 3 में। अभी गेल ने कुछ इंडिपेंडेंट भी करने की कोशिश करी, लेकिन कोविड की वजह से वो प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ सिलेक्शन वगैरह भी करके रखा है। हमारी जो अभी नम्रता ने जिक्र किया HP सेवा वुमन एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन, इसमें सभी हमारी जो वुमन एंटरप्रेन्योर है उसकी उन्होंने ये फाउंडेशन बनाई है, तो वो लोग भी ये प्रोग्राम आपके लिए कंडक्ट कर सकते हैं। जागेश भाई, आप उनको इनवाइट करो, वो पूरा करके देगी आपको, सिलेक्शन से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन, मेंटरिंग। अभी तो जब हमने शुरू किया तो कैसा कैसा मेंटरिंग करने का हमको पता नहीं था। हमको जितना समझ में आया वो उतना हमने किया, लेकिन अभी 3-4 साल का जो जर्नी है इन लोगों के साथ में हमने जो किया है, इसमें से ये पता चला कि जो नया एंटरप्रेन्योर हम बनाते हैं वो किस किस कठिनाइयों से गुजरता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और वो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लाइव एग्जांपल्स हमारे सामने है। सो ये जो हमारे EDP प्रोग्राम से जो निकल के बच्चे सामने आए हैं, 45 वुमन और बाकी के जो मेन कैंडिडेट्स है, जेंट्स कैंडिडेट्स है, उनका अगर आप एक्सपीरियंस ये प्रोग्राम के साथ अगर लिंक कर सकोगे ना, तो आने वाला जो प्रोग्राम रहेगा ये बहुत ही श्योर शॉट सुपर हिट रहेगा। इसमें बहुत सारे लड़कों को हम लोग उनके पैरों पे खड़ा कर सकते हैं और यस देश को इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। राइट। आज की तारीख में हमारे देश में नौकरियां नहीं है और नौकरियां क्रिएट करने वाले लोग चाहिए, और नौकरियां क्रिएट करने वाले वही लोग हो सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सो IDP प्रोग्राम हमारे लिए, स्पेशली ऑयल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत जरूरी है, हमने ये करना चाहिए। बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं ONGC में भी ये हो, लेकिन आज के प्रोग्राम के माध्यम से अगर जागेश भाई और बाकी जितने भी हमारे साथी ONGC के हैं ये प्रोग्राम को अगर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा योगदान हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी जब भी जरूरत पड़े आप मुझे बुला सकते हैं, हमारी वुमन एंटरप्रेन्योर्स फाउंडेशन को बुला सकते हैं, हमारे दादा नागसेन जी यहाँ पे है, कभी भी बुलाते हैं तो हम लोग हाजिर हो जाते हैं। कोई उसमें इश्यू नहीं है, और ये अपना कमिटमेंट है हमारे देश के प्रति, ये हमारा कमिटमेंट है कि हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है तो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी जो है ये बहुत जोर से होनी चाहिए। तो वो करने के लिए जिधर भी हमारा कंट्रीब्यूशन की जरूरत है हम लोग है, अवेलेबल है, एनी टाइम यू कैन कॉल अस। एंड आई एम थैंकफुल टू जागेश फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। अदरवाइज मेरा कुछ ऐसा रिटर्न डाउन कुछ नहीं था, ना तो मैं कुछ स्पीकर हूँ ये प्रोग्राम का, ऐसे एक मौका मुझे दिया। जस्ट मैं एज अ स्पेक्टेटर करके आया हूँ, लिसन करने के लिए आया हूँ, सुनने के लिए आया हूँ प्रोग्राम, बट काफी अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू जागेश भाई गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू जयप्रकाश भाई। ये थे मिस्टर जयप्रकाश सिंगले जी, जो अभी जनरल मैनेजर है HP सेवा में, HPCL में, और उनका इनिशिएटिव था ये जो वुमेन EDP का जो प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सराहा गया पूरे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के मिनिस्ट्री MSME और बाकी जो है इंडस्ट्रीज में, उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, और काफ़ी इसकी गूंज जो है काफ़ी बड़े बड़े गलियारों तक गई है। सो हमको ये प्रोजेक्ट करना है, जैसे मैंने कहा। राव साहब, आपका ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपका पहले थोड़ा सा 1 मिनट का हो जाए। GVS राव सर, आर यू देयर? आपका एक लास्ट कमेंट आपका before end this Yes, program. Jagesh ji, it was so inspiring actually. These women entrepreneurs experience, as well as Mr. Yadav's experience, they should have been in the beginning rather than our routine speech. It was so inspiring for a person who is going to retire in 2-3 years like me. And really, hats off to Hindustan Petroleum for coming out with such a great program. I think we should really learn by it and try to implement in ONGC. There is always scope for learning. It was great experience to be part of this program from the morning. Jagesh ji, really the pains you take, I think ONGC also will achieve success in providing this kind of platform to all the budding entrepreneurs and also furthering all the existing MSMEs also. And congratulations for conducting such a wonderful program. As I said in my speech earlier also, right from the east of the earth to west of the earth, right from New York to, I think the gentleman could not join, but still you made your effort, and gentleman from Tokyo also joined. It was such a inspiring, such a beautifully organized,
Wonderful, and congratulations to you and the team, All India SCST Association and EWA. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot for your kind words. और आपका यही कॉपरेशन है, जो आपका पार्टिसिपेशन है, आपका गाइडेंस है, वो हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मिलता रहे, यही हम आशा करते हैं। या थैंक यू। गौर साहब, लास्ट में आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, गौर साहब, क्योंकि सिंस यू आर जॉइनिंग फ्रॉम दिल्ली और कॉर्पोरेट एमएम में है, थोड़ा बोलिए जरा 2 शब्द। Am I audible here? Yes, you are audible. Yeah, go ahead. So, Jagesh sir, on behalf of our corporate MM team here, I would like to give my personal thanks and compliments to all of you, all the office bearers from All India SCST Association, for organizing this wonderful program. You have provided such a good interface between the various stakeholders from ONGC and various entrepreneurs, and I only request, मैं सभी हमारे जो आज एंटरप्रेन्योर्स थे उनसे एक स्पष्ट शब्दों में बात करना चाहूँगा कि इस तरह के सभी मित्रों से मेरा जो है हार्दिक गुजारिश है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स तो बहुत बार करते हैं, और क्या होता है जागे सर के उस प्रोग्राम के बाद में वो टेम्पो को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। जैसा आपने खुद ने कहा कि पिछले 1-2 वर्ष में इतने लोग आए और उसके बाद वो टेम्पो मेंटेन नहीं हो पाया। तो मेरा आज सभी उपस्थित जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे तहे दिल से गुजारिश यही है कि आप आज के टेम्पो को बना के रखें। जो ये ब्रिज सामंजस्य आपके और हमारे बीच आज बना है, इसको आने वाले समय में और अच्छा संबंध बनाएं और आगे लेके जाएं, और जिस तरह का भी आपको सपोर्ट गाइडेंस चाहिए, हमारे सारे कलीग वहाँ मुंबई में हैं, राव साहब हैं, वेद सर हैं, मायापत जी हैं, शर्मा साहब थे, सब तरह का सपोर्ट आपको मुंबई वाले हमारे टीम के मेंबर्स देते रहते हैं और आगे भी देंगे। आपको जो भी पॉलिसी सपोर्ट, पॉलिसी क्लैरिफिकेशन दिल्ली के कॉर्पोरेट ऑफिस से है, हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे कि ये जो आज जागेश सर के सौजन्य से जो आज एक संपर्क बना है, ये टेम्पो टूटे ना। और मैं अपने कॉर्पोरेट टीम का एक मंत्र है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, इनफैक्ट वो पूरी ओएनजीसी की सप्लाई चेन के लिए है, और पिछले 2 दशक में जो आज राजेश सर हमारा मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स के लिए है, क्योंकि पहले हम उनको सप्लायर का कहते थे और पिछले इस नई 21वीं सदी में ये परिवर्तन आया कि अब हम इनको सिर्फ सप्लायर ना कहकर बिजनेस पार्टनर कहते हैं। तो उसके लिए एक स्लोगन मैंने कॉइन किया हुआ है जो आज के इस मौके पर काफ़ी उपयुक्त लगा मुझे। दिस इज एड्रेस टू ऑल माय एंटरप्रेन्योर्स, come to ONGC as a supplier or contractor or vendor, go back from ONGC as business partner and friend and associate। तो ये हमारे डिपार्टमेंट का दोस्तों आज गाड़ी मुश्किल है, आप हमारे यहाँ आइए और हमसे सब तरह से संबंध स्थापित करके बिजनेस पार्टनर बनिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही ओएनजीसी अपने जो मिनिस्ट्री के टारगेट्स हैं एक्सप्लोरेशन के, ड्रिलिंग के, प्रोडक्शन के, वो पूरा कर पाते हैं। तो मैं फिर से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते सर। थैंक यू गौर साहब। और बिफोर वी गो फॉर वोट ऑफ थैंक्स, विधिवत रूप से हमारे सीनियर लीडर और हमारे बड़े प्रेरणा स्रोत है सोनारे साहब, एनके सोनारे साहब, ये चेयरमैन ऑफ मुंबई ब्रांच एसोसिएशन, उनका फाइनल कमेंट हम लोग ले लेते हैं। सोनारे साहब, या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ देन स्पीक। या बहुत खुशी हुई जागेश भाई ये प्रोग्राम किया, और ओएनजीसी के हमारे सारे स्टॉलवर्ड डायरेक्टर, हमारे टी&FS और बॉम्बे एमएम के चीफ, और वहां से हमारे हेडक्वार्टर के भी सारे हमारे एमएम के चीफ सब आए हैं, और बहुत इंस्पायरिंग रहा है। स्पेसिफिकली जो हमारे जो यंग बडिंग जो है एंटरप्रेन्योर्स है, उसमें हमारे जो कैप्टन हैं जिन्होंने एक एयरक्राफ्ट बनाया, और उसमें जो हमारी गर्ल्स हैं जिन्होंने 2016-17 में इनका ट्रेनिंग हुआ, और इन्होंने उस समय हमारी अंबेडकर सेंटर जस्टिस एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन और एचपी सेवा के माध्यम से वो प्रोग्राम हुआ था।
और उस समय फर्स्ट टाइम वो प्रोग्राम हुआ तो काफी उसकी तैयारी करनी पड़ी थी। और ये आगे जो 35 लोगों का ट्रेनिंग हुआ, ये आगे कैसा होगा और ये कितने इसमें सक्सेस होंगे। लेकिन अभी आज जो इनका जो देखा है, जो हमारी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, इतने कॉन्फिडेंस से जो बात कर रही थी, उसमें नम्रता है, कांचन है, और तो ये सब लोगों को देख के जो बड़ी खुशी हुई कि उस समय जो एफर्ट जो दिया गया है और उसका बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है। ये तो ओएनजीसी का हमारा 2016-17 में एक प्रोग्राम होने वाला था इमीडिएटली एचपीसीएल के बाद, लेकिन उस समय वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। प्रोजेक्ट भी दिया गया था ओएनजीसी को, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि हमारे अभी क्योंकि एमएम के ओएनजीसी के भी रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ पर है और डायरेक्टर T&FS साहब ने इसको ब्लेसिंग दिया आज इस प्रोग्राम को। तो आज जो है मैं चाहूंगा कि आज कल में ही आप प्रोग्राम जो है डायरेक्टर T&FS को दे और डायरेक्टर से इसको अप्रूव करके ले ले, और ये आगे आने 1-2 महीने के अंदर में ही हमारा ये प्रोग्राम हो। और जैसे एचपी सेवा ने 1, 2, 3 किया, ईडीपी 1, 2, 3, तो अभी ओएनजीसी क्योंकि एचपीसीएल की मदर है अभी ओएनजीसी, तो ओएनजीसी 1, 2, 3 कम से कम 3 प्रोग्राम ओएनजीसी के हो और उसके अंदर में कम से कम 50% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग मिले और अच्छा प्रोग्राम हो। और ओएनजीसी के पास सारी फैसिलिटीज है, ओएनजीसी को बाहर जाके होटल करने की भी जरूरत नहीं। ओएनजीसी के पास अपने गेस्ट हाउस है, पनवेल में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ओएनजीसी के पास में है और बांद्रा में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। खाली अभी हमको ओएनजीसी से ये सैंक्शन करके लेना है और प्रोग्राम करना है। तो लेट अस होप दैट 2021 में कम से कम एडीपी 1, 2, 3 हम लोग कर पाएंगे, और ये अगर हमने किया तो मैं समझूंगा कि आज के प्रोग्राम का सक्सेस होगा। और मेरी अभी जो इंटरप्रेन्योर जो सक्सेस हुई है वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो उन्होंने साइमल्टेनियसली जो हमारी दूसरी अभी वुमेन जो है यंगस्टर्स जो कुछ एमए कर रही है या एमकॉम कर रही है या डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग कर रही है, तो साइमल्टेनियसली वो भी उनको नए एंटरप्रेन्योर्स को भी बडिंग करे, अपने अपने कंपनी में उनको ट्रेनिंग में रखे, उनको अपने साथ में, तो उनके साथ में रहते रहते वो भी एंटरप्रेन्योर बन जाएगी। और ये अभी आगे लंबा जर्नी है, तो कम से कम एक एंटरप्रेन्योर है तो लाइफ में ऑब्जेक्टिव रखे कि मैं सब लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाऊंगी। जैसे हमारे सोनोने जी जो है हमारे शरद, उन्होंने बोला है कि मैं 100 लोगों को दुबई में कतार में लाऊंगा अकोला जिले से, तो 3 लोगों को लेके गए, अभी 97 लोगों को महाराष्ट्र से लेके जाने वाले दुबई कतार। तो ऐसे हर एक एंटरप्रेन्योर ऐसा टारगेट रखे कि मेरे लाइफ में मैं 100 लोगों का एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा, तो और उसके साथ से वो शुरू भी कर दे काम। तो इतना कहते हुए मैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे 7 घंटे में ये प्रोग्राम चल रहा है और नॉन स्टॉप चल रहा है बहुत अच्छे से, और बहुत पूरे वर्ल्ड से लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, जय भीम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सुनारे साहब फॉर नमस्ते सुनारे साहब, नमस्ते। नमस्ते गौर साहब सर हमारे गौर साहब बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। वास्तविक साहब के चैम्बर में आपसे मिलता था, एमएम वास्तविक जी। जी जी हमारे जाकेश भाई एक हमारे एमएम के सीनियर थे वास्तविक साहब। जी एमएम वाले वही मिलते थे हम सोनावाले साहब से। एमएम वाले या एमएम वाले वास्तविक साहब। जब मुलाकात हुई है बांद्रा में थे। हाँ जी जयप्रकाश भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? बात करते हैं। हाँ बोलिए ना जयप्रकाश। एक चीज मैं बोलना मेरे स्पीच में भूल गया एक्चुअली। हाँ बोलिए। फर्स्ट प्रोग्राम जब किया था तो हमको रियली कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था ये कैसा करना है। तो मैं सोनारे साहब के पास गया कि दादा इसको कैसा करना है। मेरे पास तो पूरा ब्लूप्रिंट एक था, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, और हमको एनजीओ की जरूरत थी। तो उस टाइम में हमारी जो आम्बेडकर सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस जो है संस्था, वो उसके थ्रू हमने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था। तो उस टाइम में इट वाज मींस कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना पीछे कि ये करना कैसे है, वो फाइनेंशियल और बाद में वो सब अरेंजमेंट और एग्जीक्यूशन, उसका फॉलोअप और वो ट्रेल। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं सोनारे साहब को देना चाहूंगा कि उनके वजह से मैं ये पहला प्रोग्राम कर पाया, कि उन्होंने मुझे गाइडलाइन दिया कि हाउ टू गो हेड। या हाँ, सो ये पहले प्रोग्राम का जो मेजर क्रेडिट यू कैन से लाइन शेयर गोज टू सोनारे साहब। थैंक यू। मैं तो जस्ट फॉलो कर रहा था। थैंक यू। उसके बाद में हमने सेकंड प्रोग्राम फिर एचपी सेवा के थ्रू किया, थर्ड प्रोग्राम फिर वो एचपी सेवा और वो लोकल वाइजैक का कोई एक पार्टनर लिया, ऐसा करके वो किया। सो
आई एम थैंकफुल टू ONGC, क्योंकि उन्होंने ONGC में सोनारे साहब को बनाया शायद। जी जी, ONGC ने सोनारे साहब को बनाया, इसके लिए सोनारे साहब हमको गाइड कर पाए, और इसके लिए पहला प्रोग्राम हुआ और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। जी जी जी। तो आई एम थैंकफुल टू ONGC, सोनारे साहब एंड ऑल द ONGC के जितने भी अधिकारी यहाँ पे हैं, सबके लिए मेरा फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू। हमारे आरएलओ साहब ही स्टिल देयर इन ऑफिस। देखिए पूरा 11 कितना 10 बजे अभी हंसी रोकना बड़ा मुश्किल है। सिंस मॉर्निंग 9:30 अभी 6:30 ऑलमोस्ट हो रहे हैं और वी आर कंटिन्यूअसली मीटिंग वर्चुअली, नो ये इज रियली वंडर। वर्चुअली इतना लंबा 7-8 घंटे का मीटिंग अभी तक शायद किसी ने नहीं देखा होगा। गणेशन जी, आपका फाइनल एक बार रिमार्क, थोड़ा सा एक बार एक प्रोग्राम के बारे में। I think the program has achieved its aim, objectives. I could hear every now and then, and almost all the speakers I could hear. The program has achieved its target. It is good that you have taken initiatives. This is the second year in its row. Last year, we had some more than 600 participants in our auditorium. Yeah. This time, yes, it is around 245 something. I could see the number. So I think the authorities from other MSME institutions, and they have helped you a lot, and they have come to your help. It is a well coordinated effort, and thank you for organizing. थैंक यू गणेशन साहब। अभी हमको ESP सेवा ने जो EDP का जो रेसिडेंशियल कोर्स किया था, हमको करना है ONGC में। वो भी थोड़ा सा, जैसे मैंने गौड़ साहब से बात किया कि त्रिपाठी साहब से बात करेंगे, और डायरेक्टर T&FS ऑफिस से भी बात करेंगे, और हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा और लोगों को एनकरेजमेंट मिले। थैंक यू गणेशन साहब। Whatever possible we will do. No problem. Oh yes, thank you. Okay. Last but not the least, before we hand over this program to Mr. Raghunath Kargavkar for vote of thanks, NSSO के इंचार्ज मुंबई के जो हमारे अजीज मित्र है अभी कई सालों से, मिस्टर मालविया जी मालविया जी, आपका एक बार एक कमेंट हो जाए 1 मिनट का। थैंक यू सर जी, थैंक यू सोमवार जी। देखिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2-3 दिन पहले प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से पहले कि हमारा पर्पस क्या है, वो पर्पस सॉल्व होना सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी। हम यहाँ रात में 12 बजे तक भी बैठ सकते हैं, बट जो हमारे साथ में एसोसिएटेड हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो हमारा पर्पस है, वो हमारा गोल उसको अचीव करना चाहिए। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स जो हैं, एक बार उनको फिर बोलूंगा कि एक बार आप NSSHO के ऑफिस जरूर विजिट करिए। जो आपको हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रहे हैं, ONGC से आपको जो कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिल रहा है, आप उसका बेनिफिट लीजिए। इंग्लिश ही यहाँ पर मौजूद है, तो आपको सब तरफ से सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो आई रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज कम फॉरवर्ड। जो हम जितनी हमसे हेल्प हो सकेगी, जिस लेवल तक हम, जिस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे। एंड शंकर जी, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू। You have did a splendid job, sir. एक मॉर्निंग में हम लोग, मेरे हिसाब से मैं आई वाज दी 10:30 के आसपास 10:30 लोग ज्वाइन किए हैं। सो इट इज अ डे लॉन्ग, मेरे हिसाब से 8-9 घंटे हो गए हैं। सो और हम भी भी बैठ सकते हैं सर। हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू महेंद्र मालविया जी, इंचार्ज NSSO मुंबई, और उनका कोऑपरेशन के बिना लास्ट ईयर का प्रोग्राम और ये प्रोग्राम, क्योंकि सारे गेस्ट को वो सिलेक्ट करना है, उनसे कोऑर्डिनेशन है, ये सारा जो काम है, हम लोग कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में थे मिस्टर महेंद्र मालविया जी, और उनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। सो आवर थैंक्स टू मिस्टर मालविया फॉर दिस वंडरफुल जॉब। नाउ फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स हमारे सेक्रेटरी मिस्टर रघुनाथ कारगावकर जी, he is DGM and geology. Yeah, go ahead please, Mr. Kargavkar. Thank you Somkar ji, and thank you for your energy continuously hosting this program. This program is really success, and we have already run over 7 hours of marathon, and still energy is there with everybody. And I am thankful to the management of Oil and Natural Gas Corporation Limited, our Honorable Director Shri Om Prakash Singh ji, for sparing his valuable time, Shri Krupashankar Pandey ji,
Executive Director, Asset Manager, Mumbai Asset. Head of the Regional Office, Shri Sunil Singh ji. And ED Chief, Material Management, ONGC, New Delhi, Shri AP Tripathi ji. It's a big list, and there is not much time left, and I will also not take much time. But I must mention our eminent guests, Shri A.R. Gokhe, Director, MSME Development Institute, Shri P. Ravi Kumar ji, Zonal General Manager, NSSH, Shri Sunil Zode ji, Member High Power Committee, NSSH, Delhi, Mr. R.Y. Kadam, AGM, Canara Bank. Without their information and without their commitment, the entrepreneur would not have been benefited. And our panelists who have answered the questions and satisfied the queries, I would like to thank Mr. G.V.S.S. Rao, GGM Material Management Drilling Services, Shri Ved Prakash, GGM-MM Offshore Engineering Services, Shri S. Mayappan, CGM-MM MHSED, Shri V.B. Sharma, and Mr. Nikhil Gaur from Delhi. Special thanks to him. Most important is what we have listened from the successful entrepreneurs. They have really they have given meaning to our entire program. Half of the program was all theoretical or lot of procedural, a lot of practices and rules and regulations and government support. But the success of all those plans depends on the success of the entrepreneurs that we achieve. Government is very serious about the entrepreneurship, vendor development. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, और आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहली कड़ी है कि एंटरप्रेन्योर बनो, वो स्किल डेवलप करो, वो प्रोसीजर जान लो. और सही मायने में जो ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज बडिंग SC/ST एम्पावरमेंट. इनफैक्ट दिस प्रोग्राम इज फॉर जनरल, फॉर ऑल पीपल in general and SC/ST in particular, and we have really encouraged them. We have also been facilitating to grow them, how to support them, and we have tried all our best in that. So to that, very satisfying is the success stories of the entrepreneurs. I want to acknowledge them and address them for their successful stories, which have inspired us, make us bold. I would like to thank Captain Amol Shivaji Yadav, founder of the India's first ever made in India aircraft. The story which was very, very thrilling, encouraging, inspiring. So much so is Shri Prashant Godghateji from Japan, Shri Sanjay Khandal Gareji, Bahrain, UAE, Shri Sharad Sononeji, Dubai, UAE. They have given the meaning to that by telling their own stories. And most important, the women entrepreneurs. It is so inspiring for us that they have stood on their own, and organizations like ONGC, HPCL stood behind them, and it was a success. I won't take much time. The key contributors of these programs from National SC/ST Hub Office, Mr. Mahendra Malviya, branch head in charge. From ONGC side, Shri Ganeshan, RLO SC/ST, and from All India SC/ST side, Shri Jagesh Somkar, chairman. I, Raghunath Kargaonkar, on behalf of the association being secretary, thank you all of you. I won't take much time. This is already too late. So thank you very much, everybody. And that's all from my side. Bye-bye. Okay, Over to you, Jagesh.
थैंक यू कारगाकर जी। नाउ मैंने सबको अभी अनम्यूट कर दिया है, सबको अनम्यूट कर दिया है। हमारे विशाल ढोके जी का विशेष यहाँ उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारा यूके से लास्ट नाइट पे हमारी उनसे डायरेक्ट बात हुई, चैटिंग हुआ व्हाट्सएप पे, और उन्होंने हैज एग्रीड टू अटेंड दिस प्रोग्राम एंड वी आर रियली थैंकफुल टू ढोके साहब। Thank you very much. Thank you very much for giving me the opportunity. You know, ONGC and all dignitaries. We are really privileged to have galaxy of stars in our program today, right from our director to all the women entrepreneurs and all the speakers from ONGC, stalwarts, everybody. किस का करूँ, साहब ने तो नाम बता दिया, जेपी अंगड़े भाई है, सुनारे साहब है, मालविया जी है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। और हमारे डायरेक्टर साहब का अभी भी ऑफिस खुला है, अगर सर है तो एक बार ब्लेसिंग दे दे हमको तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्क्रीन में दिख रहे हैं, डायरेक्टर साहब का ऑफिस दिख रहा है, उनकी चेयर दिख रही है। बाकी लगता है साहब बहुत बिजी है, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं ना ओएनजीसी में, तो ही मस्ट बी बिजी, बट वी आर रियली ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज ही स्पेयर्ड दिस टाइम एंड ही एग्रीड टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और उनका किस शब्दों में हम लोग हमारा उनका स्वागत करें, किस शब्दों में उनका आभार व्यक्त करें, हमारे लिए असंभव है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबडी। गौर साहब प्लीज टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन। ओके, जय ओएनजीसी, ओएनजीसी जिंदाबाद, ONGC जिंदाबाद, ओएनजीसी जिंदाबाद। Congratulations to all of you, Team SEWA, ONGC Mumbai. Yeah. All the best. ONGC I जिंदाबाद। hope EDP very soon. Oh yes, All the yes, best. we'll do that. We are doing that. Okay, thank you everybody.